the two chief guests, and with their presence, tossing ceremony which is completed. Toss which is on by the captain of Taman Bajal, and they yet to decide. They elected to field first or bat first. I think they will going to decide a field first. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Please change Sports. in the. Please Subscribe note the to change in channel that and press the bell icon. the number of bowlers used for 6 hours match. 4 bowlers to be used. Please note that 4 hours, 6 hours game, and 4 bowlers to be used, and 2 bowlers will going to get a chance to bowl 2 overs. ಎರಡು ಬೌಲರ್ಗೆ 2 ಓವರ್ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶ. 4 ಬೌಲರ್ 6 ಓವರ್, 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. Hello, check.
So, good morning, everyone. Welcome back for the day number one of this prestigious cricket tournament, YFC Trophy 2023, which is proudly organized by YFC Bajal, Nanthoor, Mangalore. The season two of this cricket tournament, and after that inaugural ceremony, we were into the inaugural match. Winning the toss, I request umpire, please stop. Toss which is on by the captain of Tamanna Adhyar and elected to field first, so that the opening batsmen of Netravati, they are the opening batters out there in the middle. Opening bats left and right combination. I request the 12th man of both the teams, please report here immediately. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ extra players. So first ball, this time chip that one nicely down to long off region. First run of this tournament. YFC Trophy 2023. It's got a first run. The left-hand batsman has got a first single and a first run for the team. And one without loss of any wicket. Netravati, Shantinagar, the local team being the local, I think they know exactly the kind and condition of this cricket ground. So that even Taman Adhyar are looking very good teams, but still they have to bat well, field well against Netravati Shantinagar. And last 1 month back, Netravati organized one very good tournament in this particular cricket ground, Netravati Trophy 2023. This time driven nicely, upishly down to deep long arm region for a single. So both opening batters off the mark with a single, and scoreboard is 2 on the board without loss of any wickets. The power play is on. As for the rules and regulation of this particular cricket is concerned, we are talking about a number of overs which is 6, and a number of power play is going to be 2, where you can keep only 2 fielders outside the circle. Deeper, wideish long on and deep long off for the fielders outside the circle. First ball nicely, delicately played, plays it down to behind the wicket, down to short third man region for a single. With that single, scoreboard numbers on to 3 on the board. And opening batter Shahrukh is batting on 2. Then Rahid will go into be the striker now. Rahid is a right hand batsman, will going to take the strike here. The 2 umpires for this particular match, 2 very good umpires, and one dominated underarm cricket during 80s 90s until 2000, Iqbal of Gori Young Boys. And at square leg, one more fantastic performer. And in underarm cricket is concerned, during 2000 and 2010, it's none other than Arif Jokate at square leg, the very good striker of the ball. This time, bowler's back dry, opportunity of cotton ball in the negation, but mid-off fielder couldn't manage to reach that one. After that, Imran is got hand onto that, powerfully driven back. And Imran is got hand onto that, and after ball deflected from his hand, looks like he's going to carry to the fielder at mid-off, but mid-off fielder couldn't manage to reach there, and unfortunately ball is which has landed short off that fielder, and batsman Rahid has got a life. Scoreboard is now 4 on the board without loss of any wicket. Imran right arm down the wicket, drives that one up, easily chance of catch and dropped there by the long off fielder. Mid-off long off fielder might be looks like he's going to take the catch a little bit low down to him, under below the knee level. But it's definitely is in the catchable height. It's not that it's going to be a difficult one, but the fielder might be couldn't manage to hold the catch, and the batsman very lucky Rahid is got a life, 2 life for him. The scoreboard is 5 on the board without loss of any wicket. Imran changing his angle over the wicket to the right hand batsman RB. That is Rahid is played a dot delivery. It's a good over. Quite unfortunate for Imran that wicketless over. 2 chances in that over. One is for himself to take the cotton ball, and second one is down. Is been lucky that he is still there in the middle. So first over completed. It's 5 without loss of any wicket in the over number first completed. 6 overs game, and I request both the teams they need to complete their 6 overs within 25 minutes. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ 6 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, 7 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರ್ನ ಕೋಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Prakash brought it attack away from us. Right now over the wicket. This time lofted high up in there. Will go into your first sixer of this round. Yes, it does. Yes, it does, and it's not really getting that one from right from the middle of the bat. Little bit short pitch delivery, and the batsman just waiting for that one. And especially in the morning, you can get the distance. You can get some big shot in front of wicket, and the batsman Shah Rukh not missing the opportunity to freeze his arm, and he got a first sixer of this prestigious YFC Trophy 2023 season 2, and he's just registering his name, Shah Rukh, as a first the batter who got a first six of this tournament. This time, oh, that ball just not really carried to the fielder, a little bit outside the line of off stump, and batsman going for the drive, got a very healthy edge. The wicketkeeper behind the stump just spreading his hand, but not quite able to reach the catch. And luckily Shah Rukh survived from that one, and even he got a single for that. With that single, scored moves on to 12 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Prakash again bowling away from us. Right arm over the wicket, bounced Rahid. Rahid this time watching the ball till the last moment. Good judgment, seeing that ball is going away from him, and he just left the ball rightly so. Umpire not really left the chance here, Harif, to get a morning exercise to signal the wide towards our scorer, and scorer just completes the formalities of taking the runs. Again, nicely driven off stop there by the fielder. Very good stop, in fact, because powerfully driven there by the fielder, and fielder a short mid of just got a hand out to that, stopping the speed of that stroke, and before the long off fielder will go in to collect that one, return that one. Ample time for the batter to complete the single. With that single, scored moves on to 14 on the board without loss of any wicket. It's a very good foundation laid by the opening batters of team Netravati Shantinagar in this first match against Tamanna Adyar. Again, Prakash round the wicket. There he was. Shah Rukh going for the swing of the bat, but this time ball just looks like it's well within the reach of the batter. Might be a little bit shuffled across the line of the delivery. That's why he couldn't manage to take the advantage of that one. And but the bowler has got advantage of that shuffle from the batter. One more dotted delivery. Prakash again bounce. This time driven straight down the ground. One bounce. It's going to be a boundary here. Magnificent struck there from Shah Rukh. He's so strong in front of wicket. Again, this is a glorious straight drive, and you can't set a field for such a straight drive. One of the most delightful stroke to watch in cricket, and it just got over the top of the bowler. One bounce over the row for 4 runs. Very straight as an arrow. And he got a boundary in that over. Very expensive over is in progress. 1-6 and boundary already conceded, and scoreboard is 18 on the board without loss of any wicket. Again slashes that one very hard down to deep. Widest long off region. Again chase little bit work here for the long off fielder. Totally coming back. There's a second run by both the batters. They appeal for run out, but batsman is safe in the occasion. Absolutely fantastic over is progressing here for team Netravati. And 2 overs which is completed after completion of over number 2. It's a huge score on the board. 20 on the board for Netravati. They're getting the runs at the rate of exactly 10 runs per over. 15 runs which is came from that over. So very expensive over indeed. The second over of the power play. Netravati, the opening batter, especially the Shah Rukh, who is taking the full advantage of that the fielding restriction of the second over the power play. And one is a magnificent struck out over a wideish long on for a 6, and another one almost beautiful stroke. Delightful straight drive came from the bat of Shah Rukh. The 10 runs which is came from that over in the form of boundary and 6. Then altogether 15 runs, which is a very expensive over ball by Prakash. Now Imran coming to his second over. Mean to be, because understandable after that expensive over. Imran just wanted to restrict the flow of the runs of Netravati. After he bowled a very good first over, the over of just 5 runs. Now he's coming in the second over, bowling with a short run up away from us. Right arm over the wicket, bounce. This time very good ball indeed. It's absolutely flum in front of wicket. Ball is nipped back into the batsman Imran.
and the batter Rahid almost not really understand the turn of the delivery, looking for the expansive drive, misses the line completely, and ball definitely will going to hit the middle stump. Easy decision there for umpire Iqbal to raise his finger, and that ball definitely going to hit the mid end of stump. And first wicket is back at the pavilion, but I think both opening batters are laid the foundation. Scoreboard is exactly 20 for the loss of 1 wicket. The first wicket is back at the pavilion now. So next match, NM Mangalore versus Jaguar Kudroli. So that I request both the teams please complete the formalities of signatures as soon as possible. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂಥ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವುದರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಚಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗ್ವರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The second ball and slower one, and negotiated very well by the batter Mansoor in the negation, pushing the ball down to short mid of cover point region for a single. And Mansoor lead correction. Mansoor is one. He got his first run for his team, and for his account, scoreboard is 21 on the board for the loss of 1 wicket. Imran, very successful bowler for the side, got a big wicket of the Rahid. And straight to the hands of extra cover. The one more wicket is back at the pavilion as Imran strikes again. The two opening batters, danger man Shahrukh now walking towards pavilion. Fantastic comeback there by Imran in the occasion, being the very experienced campaigner for the side. You know exactly the both opening batters are doing very good in the first 2 overs, and he just came in the third over, picked up 2 valuable wickets. So both the opening batters are back into pavilion. Especially the wicket of Shahrukh has been a big one, huge one. After scoring a quick fired 16 runs in just 9 balls, he's not really able to keep it down. Which is offered by Imran, inviting the batsman to go for the drive, and the ball went straight to the hands of extra cover. He making no mistake at all in the negation, and wicket number 2, which is back into pavilion. So new batsman is one more very talented young cricketer. Sajjad is on strike now. Sajjad delicately plays it down to short third man region. Is a very strong behind the wicket, square of the wicket, and just allow the ball to coming into his bat. And Sajjad played it delicately down to third man region for a single. With that single, scoreboard is moving to 22 on the board for the loss of 2 wicket. What outstanding bowling performance here from Imran. 2 very big wickets in the second over. Right arm over the wicket again, reaching for the delivery outside the line of half time. Quick single taken by both the batters. Of course, a little bit hesitation first, but Sajjad managed to complete the quick run against back point fielder. So with that single, scoreboard moves on to 23 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. As the bowler Imran again back to his bowling mark with a shot on a pass umpire Iqbal. Right arm over the wicket, drives that one nicely down to deep extra cover region for a single. So with that single, scoreboard moves on to 24, and both the batters now batting as per the condition required. But it's a fantastic over is comes in there from Imran. It's a very good over indeed, and not only restrict the runs, but at the same time he got 2 valuable wickets of Netravati, the 2 opening batters of Netravati, Rahid as well as Shahrukh being the victims for his fantastic second over. So 3 overs completed, even though it's a good over, but still Netravati has got a good score in the board after completion of 3 overs. It's a 24 on the board. They're going exactly 8 runs per over. And before the next over going to start, a change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of this match in our national language Hindi. And good morning Gopi, and welcome for you as well. And YFC Bajal Nanthoor Mangalore organizing such a wonderful cricket tournament, YFC Trophy 2023, and it has been an excitement day of cricket because the top Mangalore teams are taking part in this cricket tournament. And first off, I think this which belongs to Team Netravati. They got a very good score, 24 in 3 overs, and most probably it's a good start for any team in a morning session.
एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वही एफसी ट्रॉफी 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है और इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद ऑफ स्टंप पर टकराई और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। बल्लेबाज ने गेंद को इस वक्त स्कूप करना चाहा था, धीमी गति के लेग कटर गेंद थी और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया, बीट हो गए, गेंद ऑफ स्टंप पर टकराती हुई गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला और अंडर दिस कंडीशन इन द मॉर्निंग 24 रन्स इज अ गुड स्कोर इन द फर्स्ट 3 ओवर्स स्कोर्ड बाय नेत्रावती क्रिकेटर्स। 8 रन प्रति ओवर के औसत से रन से बना चुका है, जैसा कि आपने फरमाया सतीश। और यहाँ पर 3 ओवर का खेल है जो कि बाकी है और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा नेत्रावती के बल्लेबाजों का, अगर एक चुनौती भरा स्कोर उन्हें खड़ा करना है तमन्ना अड्यार के खिलाफ। और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ इम्तियाज नए बल्लेबाज के रूप में, और गेंदबाज इस वक्त शुरू कर चुके हैं डेनियल और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और फिर से एक बार डेनियल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ कटर गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई बैकफुट पर गए, गेंद को खेला इस वक्त ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। विकेटों पर निशाना दागा था लेकिन अंतिम क्षण में गेंद स्टंप्स पर टकराने के बाद जब तक बैकअप हो स्लिप डाउन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 1 रन के साथ 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। It's 26 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress। कुल मिलाकर डेनियल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करते हुए मशहूर और अपनी ओवर की अगली गेंद का सामना करते हुए इस वक्त रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता है। क्वाइट मिडली गेट गेंद निशाना इस वक्त स्टंप्स पर टकरा चुका है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके हैं और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर। 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर। 2 रन पिछले गेंद पर मिले और स्कोर 28 रनों पर बढ़कर पहुंच चुका 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज डेनियल इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए मशहूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े जरूर, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। डेनियल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज हो चुका है इस वक्त फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन नहीं, गेंद दोनों फील्डरों के बीच इस वक्त टिप्पा खा चुकी है और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडली गेट द लास्ट मोमेंट। टॉप एज पर गेंद टकराई, काफी देर तक हवा में रही थी। एक्स्ट्रा कवर फील्डर दौड़ कर रहा है, कवर पॉइंट भी फील्डर अपने पीछे की ओर दौड़े, लेकिन आखिरकार गेंद उन दोनों फील्डरों के बीच टिप्पा खाते हुए और बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। वही एफसी बजाल नंतूर मंगलूर ने इस बेहतरीन श्रृंखला का यहां पर आयोजन किया है इन एसोसिएशन विद लिटिल किंगडम फोन्स बहरीन। वही एफसी ट्रॉफी 2023 के नाम पर
Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. So welcome back once again after some technical disturbance. और जहां तक सवाल है इस वक्त छठा और अंतिम ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और पहली गेंद पर रनआउट यहां पर होने के बाद बल्लेबाज पेविलियन वापस लौटते हुए और जहां तक सवाल है स्कोर का तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 33 रनों पर 33 for the loss of 5 wickets for नेत्रावती शांतिनगर at the start of the 6th over. In fact तमन्ना अड्यार के खिलाफ अंतिम गेंद अब उनके पारी में बाकी और इस बीच गेंदबाजी करेंगे. अब नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है तो तमन्ना अड्यार के खिलाफ नेत्रावती शांतिनगर की पारी का अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार जबकि मंसूर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त सामना करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना बाएं हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा. ये गेंद लेग से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा पैरों पर गेंद टकराई गेंद पहुंची शॉर्ट टचमैन पर रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच अंतिम गेंद पर रनआउट के रूप में यह विकेट यहां पर गिर चुका है. तो पारी के निर्धारित ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं और नेत्रावती शांतिनगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में बनाए 34 रन और उन्होंने इस वक्त लक्ष्य रखा है तमन्ना अड्यार के सामने 35 रनों का. नेत्रावती शांतिनगर managed to score 34 runs on the board in the stipulated 6 overs and now they set a victory target out for 35 for Tamanna Adyar and as far as the required run rate is concerned exactly 5.85 runs per over they have to score for victory. In fact it's a 5 overs completed
Still a last over left in their innings, and beg your pardon, 5 overs completed, and after 5 overs it's 34 for the loss of 6 wicket. Last over now remaining in their innings, और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त ಶುರು करते हुए गेंदबाज ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So I once again beg your pardon. It's 5 overs completed and the 6th over is now going to start in their innings. और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. रन आउट के रूप में विकेट गिर चुका है. जोखिम भरा रन चुराना चाहा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद थी. गेंद लगभग वहां पर फ्लेक्स पर टकराने के बाद जब तक फील्ड होकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, बल्लेबाज काफी दूर रह गए थे क्रीज से, और इसी के साथ एक विकेट गिर चुका है और एक रन भी उनके खाते में जुड़ चुका है. 35 for the loss of 7 wickets now, and still 6 balls remaining in their innings. Next match, once again call upon NM Mangalore, the players of NM Mangalore to please report to the stage immediately to pick a sign in the official chart. YFC ट्रॉफी सीजन 2 2023 2023 के अंतर्गत इस श्रृंखला का, इस मेगा श्रृंखला का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है. प्रथमार्ध इस वक्त प्रगति पर, और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ. तो छह गेंदें अब उनके पारी में बाकी है. स्टिल 6 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू कर चुके हैं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए टॉस की गई थी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, और उछालने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. डेनियल अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को ड्राइव करना चाहा, चूके गेंद एक्स्ट्रा क्विकर थी, और आखिरकार विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे, और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया. स्टंप आउट के रूप में विकेट गिर चुका है, और इस तेज गेंद के जरिए डेनियल यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं स्टंप के रूप में, और विकेट नंबर 8 गिर चुका है. बस स्कोर है 35 रन, 35 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट. सिर्फ दूसरे ओवर में 15 रन बने थे. अगर उस ओवर को एक्सक्लूड करके देखा जाए, अगर उस ओवर को निकाल कर देखा जाए, तो बाकी के ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन तमन्ना अड्यार के गेंदबाजों ने दिया है. और अब नंबर 10 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद अशफक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, नंबर 10 बल्लेबाज की हैसियत से, जबकि स्कोर है इस वक्त 35 रनों पर. 35 for the loss of 8 wickets in the over number 6 and last in progress in their innings. डेनियल गेंदबाजी करते हुए अशफक के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार अनसाइड पर गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची. एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर खतरा, लेकिन इस बीच बल्लेबाज पहुंच चुके हैं. थ्रो को ठीक तरह से रिसीव करने में सफल, और 2 रनों के साथ स्कोर कुल मिलाकर बढ़कर पहुंच चुका है अब 37 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर. 37 for the loss of 8 wickets in the over number 6 and the last in progress in their innings. 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, absolutely fantastic one this time, and he's got the rid of the batsman. Extra quicker one from Daniel, and this fantastic delivery cost him wicket. So अशफक की पारी समाप्त. इस वक्त 9वां विकेट यहां पर गिर चुका है. It's 37 for the loss of 9 wickets, and just 2 balls remaining in the innings, and number 11 and the last batsman is now comes out to the middle. तो नए बल्लेबाज, अंतिम बल्लेबाज, नंबर 11 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए चम्मी, और 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी हैं, और देखते हैं इन 2 गेंदों में ये अंतिम जोड़ी क्या करती है. तो डेनियल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए चम्मी के लिए, नंबर 11 और अंतिम गेंद बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार.
दाहिने हाथ के बल्लेबाज चम्मी के लिए ये गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद गिल्लियां बिल्स जरूर उड़ा दिए, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 37 रन पर। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद उनके पारी को लेकर डेनियल तैयार चम्मी के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर, विकेट कीपर चुके हैं, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, वहां पर बैकअप होता हुआ और एक रन के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर देम। द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड एंड नेत्रावती शांतिनगर मैनेज्ड टू स्कोर 38 runs on the board after their completion of 6 overs and they set a victory target of 39 for तमन्ना अड्यार। बेहतर ओवर रहा डेनियल का, जिसमें सिर्फ 3 रन अंतिम ओवर में उन्होंने प्रदान किए, 4 रन उन्होंने अंतिम ओवर में प्रदान किए डेनियल ने। और तमन्ना अड्यार के लिए इस वक्त 39 रनों का लक्ष्य, 39 द टारगेट फॉर तमन्ना अय्यर। रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स once again of NM Mangalore to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। और जहां तक सवाल है 39 रनों का लक्ष्य, रिक्वायर्ड रन रेट for them is exactly 6.5 runs per over. They have to score for victory. 6.50 runs per over they have to score for victory. 39 they have to score in the stipulated 36 still, that means in remaining in the stipulated 6 overs and their innings now going to start with just shot while उनके पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक थोड़े से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब तमन्ना अड्यार की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Welcome back once again, and target for team Tamanna Bajal is that Adyar, Tamanna Bajal need to get 40 runs in the stipulated 39, let me correction, not 40, it's a 39, 38 is the total score, 39 is going to be a target, and the required run rate in the beginning for team Tamanna Adyar is that 6.5 runs per over is the required run rate, and wait and see how well they will be going to get this 39 runs in their stipulated 6 overs. Good comeback by team Tamanna Adyar after they conceding 20 runs in 2 overs. Then in the remaining 4 overs they conceded only 18 runs and they got some wickets as well in between. But altogether it's a good score, and it's not a score we can't underestimate. Even it's going to be a very good match here for the spectators, those who are watching
with a big number in this particular cricket ground, and those who are watching a live telecast of this cricket tournament through King Sports, definitely they are going to enjoy this first game. First ball, it's a very good looking stroke, the chance of run out, it's going to be directed, an umpire the first time today is referring to the third umpire to give the decision, and Nasir Bajal, the third umpire, will going to get the best result of this appeal what is made for Netravati for the run out. It's a wicket, a little bit correction, the wicket keeper behind the stump hits the stumps, and wait and see well the strikers are safe or not. It's going to be very very interesting, because whenever there is a direct hit, almost we can see that the batters are looking under trouble, and that's what the result came here, that out is a signal from umpire, third umpire, run out in the form of run out. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೋನಕ್ಕ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. So warm welcome for ಎಮ್ಮೆ ಮೋನಕ್ಕ for this cricket tournament YFC Trophy 2023, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor in association with the Little Kingdom of Phones Bahrain in the name of YFC Trophy 2023 Season 2. And all we can see that's a fantastic tournament is in progress. First ball, it's a shackling start for Tamanna, has lost their first wicket in the form of run out. Batsman is back into pavilion. Is unfortunately Vilas, and now Alan is a striker, the new batter, number 3 batsman, and Riaz is in non-striker zone. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ will going to bowl the second ball of this over. Right arm over the wicket to Alan. Nice looking drive, copybook style of cover drive, and unfortunately that ball went straight to the hands of fielder, and instead of drawing the ball, he just copybook style of cover drive, plays it down to cover point region and suggests the fieldsman that the cover point region fields the ball and try to hit the stumps in the non-striker's end, but Alan is very safe in the other end. It's 1 on the board. The first run which just came for team Tamanna Adyar against Netravati Shantinagar, depending 39. Imtiaz, right arm over the wicket for Riaz this time going for the expansive drive, wicket keeper behind the stump, it's complete the job in a fraction, but is not getting the result for that. Outstanding wicket keeping there from Mashur behind the stump, but that ball is of course the batsman Riaz is safe in that occasion. Imtiaz again bowling away from us, right arm over the wicket. Riaz drives that one again, lack of placement, straight to the hands of short extra cover. Shahrukh, the man there at short extra cover, the fields the ball and no question of any run. So far it's a good going here from Imtiaz in the first over. The Riaz is trying hard to get some big shot in this power play over, but Imtiaz not providing the opportunity to get any big shot. This time he lofted and he's going to be a chance here for the fielder to take the catch, and the fielder down at deep wideish long on. Rahid, the man, is standing there in the right position in the wideish long on, and the Riaz innings comes to an end as just he wanted to clear the man down at wideish long on, but he's not got enough timing behind the stroke. Of course he got elevation, but he fails to get the distance what he's looking for, and ball just carried to the fielder at the wideish long on. The first wicket is back into pavilion, second wicket is back into pavilion, and now they're looking in a trouble now. Tamanna Adyar lost their 2 opening batters very cheaply. The one which is in the form of run out, and the second one is of danger man Riaz is looking for a big shot, but is out for duck, and 2 opening batters are out for duck. What a fantastic start given by the bowler Imtiaz, and 2 wickets in that over, 1 in the form of run out and 1 in the form of catch out. So very bright sunny morning, especially this weather condition probably in Shantinagar is very hot compared to other part of the Mangalore. When you are coming to this particular cricket ground,
It's very hot indeed. More than 31 degrees Celsius in the morning itself. It's a very hot condition. Again, appeal for leg before wicket. Umpire says the impact of the line is outside the line of off stump. The declared shot, leg by, called by umpire. One declared and one more run added to total. But to the score now moves on to 2 on the board. 2 for the loss of 2 wicket, and outstanding over is comes in India from Imtiaz. He's a very experienced campaigner. Imtiaz, one who is a fantastic bowler, got a very experience behind him, and man who is represented for Deadly Kankanadi for a long time, and now he's representing for Netravati Shantinagar, but he's been outstanding today in the first over of the power play. Picked up 1 wicket for just 2 runs. And, it's been a great start for Netravati, defending 38 and 39 to win the match. Umpire asking for another ball, the new ball, just 1 hour old, so that umpire Iqbal is asking for the ball, the new ball. So coming back to this match, this is day number 1 of this prestigious cricket tournament. We are just talking about the teams which is taking part in this particular tournament. We have 4 big teams in today, and one is NM Cricketers Mangalore, and another one is the Gori Young Boys. The next one is the Torpedoes Kana, and last but not least, it's STC Jappu. The 4 top teams will going to take part in this tournament. Unfortunately, we're not having some the big teams like KFC Kodikal and Sneha Malamar and young friends Rua Adi Maheshwari. But still, we have some good teams like Jaguar Kudroli and Brothers Jappu, Tamanna Adhyar, and of course Netravati Shantinagar. Another 4 teams will be have definitely wanted to put some fight against these top teams to get the place in the big final of this prestigious YFC Trophy 2023. Meanwhile, the second over going to start from the commentary box, and bowler will going to start here is Manish. And Alan is the batsman, nicely driven straight to the hands of Scarlett. Will a chance of a run out, but Alan once again taken a very quick single in the occasion. Little bit risky one, but it's a part of cricket, because after his flicks run off his legs down to mid-wicket region, that mid-wicket fielder is so quick in that occasion to react to that one, and not quick enough to stop the single from this batter. With that single score, but numbers on to 3 on the board without loss of any. Still 3 for the loss of 2 wicket. Manoj is a new batsman in, just came into middle as a number 4 batter for the side of team Tamanna Adhyar. Right arm over the wicket bounce, big wide, absolutely big wide. But I want to see that umpire's decision is the wide. Of course, the ball just pitching the first bounce inside the pitch, so that umpire rightly so Iqbal calling that rightly the wide ball. So with that wide, the scoreboard numbers on to 4 on the board. Little correction, 4 for the loss of 2 wickets in the over number second in progress. And last over of the power play is going on. Deep long on and deep long off, and wideish long on the 2 fielders in the outside the circle, and 4 men in the offside, 5 men in the onside region. Here is the next one. Ball them, clean him up, beautifully bowled. That was around the legs. Manoj shuffled across the line of the delivery too much, and bowler really did a great job as a bowler. Fantastic delivery around his legs. Manish bowled that beauty of the delivery. The 3rd wicket is back in the pavilion of team Tamanna Adhyar, now looking in more trouble. They're looking in more trouble after losing 3 big wickets. Now all up to this man. The man is walking towards the middle. Imran is walking towards the middle here for team Tamanna Adhyar, and wait and see how Imran will go into contribute from the bat. So warm welcome to one more star cricketer of NM Cricketers Mangalore, is most experienced campaigner, the backbone of NM Cricketers Mangalore. Khalid Bhai is one who takes NM Cricketers Mangalore to a highest level. So warm welcome on behalf of organizer, on behalf of cricket lovers, for Khalid of NM Cricketers Mangalore. Meanwhile, it's a declared shot. It's going to be the risky one, but Imran is so good in that particular shot. Even though not controlled the fidget, but ball has got a top edge and landed very safely behind the wicket.
And with that single scored moves on to 5 on the board. One more ball which is went outside the park, and the umpire asking for one more new ball. Now ball actually is landed by one of the volunteer of YFC. In the sense again, the ball is a little bit outside the run of and batsman tried to sweep the ball but not really able to get the bat onto that. And with that dotted delivery, the pressure is on here for team Tamanna Adyar against Netrawati's disciplined bowling performance so far. Manish again bowling with a short run up. Right arm over the wicket balls. Going for the reverse sweep. Nicely executed there by Imran in the negation. Slight misfield, but no question of second run. Just a single here for Imran. With that single score, moves on to 6 for the loss of 3 wicket. Slowly and steadily, this batsman, they need to get some partnership, isn't it? They need to get a partnership. Losing the wickets in frequent end to intervals, it's going to be very dangerous for team Tamanna to come back to this match. And so far, I think Netrawati dominating in these 2 overs. And here is again Manish bowling away from us. Right arm round the wicket balls. It's again that's well within the reach of the batsman, but I think it's going to be wide. And Iqbal takes his own time to signal that wide by watching the ball. It's going a little bit away from that line, so that rightly so called that wide. And 7 on the board for the loss of 3 wicket. Manish right arm over the wicket balls again, nicely bowled again. Nice looking single there from Allen. Allen so good in that particular shots. And just rotation of strike, which is more important in the situation like this. And 3 overs complete, 2 overs completed. After completion of 2 overs, chasing 39 to win this match. Still searching for the right track. The battle is on between these 2 teams for the victory. It's 8 on the board. That means 31 required in remaining 4 overs. That means equation 24 balls, 31 runs required for the victory. I request the captain of both the teams, please report here for the toss. ದಯಮಾಡಿ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So we have Razak as a computer scorer of King Sports, and Faisal as well as Jalil is a manual scorer. One is a scorer and one is a statisticians for this prestigious YFC Trophy 2023 live telecast. And of course the King Sports once again having a very good live telecast of this cricket tournament, YFC Trophy 2023 season 2. And his over number 3 will going to start. After that power play, the power play which is belongs to the fielding team. Just a 3.5 runs per over, and just a 3.5 runs per over. So Imtiaz will going to start a 3rd over. The first ball, right arm from the wicket he bowls. Exam shuffled and pays a penalty out. Flum in front of wicket, absolutely flum. You can't do that because the ball is in the line on the middle stump. Allen shuffled across the line after delivery. If he can go for action replay, the replay of this the delivery, and Allen can see that after he's going to pavilion, he can watch in his mobile what the thing is did wrong here is that. He shuffled across the line of the delivery. Ball which pitched in the middle stump. Tried to walk side and non-side region. He misses the ball completely. Then ball absolutely will go into miss. He hit the midland leg stump. And right decision there from umpire Arif Jokate. No hesitation to call that leg before wicket. Wicket number 4 is back into pavilion. Allen is gone. And the 4th wicket is back into pavilion. And they're in a deep trouble now. Team are looking in a tremendous pressure. 8 for the loss of 4 wicket. Tamanna Adyar against Netrawati Shantinagar. But an outstanding bowling performance continues here from Imtiaz. His all experience is working out in this particular match. He's bowled the first over as a power play, completed with the 2 runs and a wicket. Now he's came back to bowl in the 2nd over after the power play. The first ball itself is right on the money, right on the target, and he got a wicket for that.
And what a fantastic performer he has been, Imtiaz. Very cool customer, calm, and of course, the always it's required for the the good players. Not only the talent will going to matters, but characters always going to be a big matter to get some name and fame in cricket. And Imtiaz is a one. Is a very cool customer. So far, I am watching him from last 15 years. He's been a very cool customer, a very cool guy. And here is Imtiaz bowling away from us. Right arm over the wicket, balls to Imran. Imran going for the drive. Again, that ball is missing outside the line of leg stump. And even he missed the ball completely from the bat. Ali NM cricketers Mangalore ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. Meanwhile, by call by umpire, no contact with the bat. Wicket keeper behind the stump fails to collect the ball, so that opportunity for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 10 double figures. A very hard fought double figure for team. 10 on the board. Imtiaz going for the drive. Batter completely missed it completely from the bat. One more fantastic delivery indeed. And Safwan is a batsman. The opportunity for Safwan to complete the couple of runs. Look at the reaction there from Imtiaz. I already mentioned he's a very cool and calm person, but he's just lost his coolness because of the fielder's effort is not really 100%. At long off, fielder is not trying for the catch. But anyhow, the 3 overs which is completed, it's a difficult time continues here for team Tamanna Deer. Netravati Shantinagar are looking in a top, but you can't say anything in cricket. Cricket is a game of glorious uncertainty, and wait and see how when uncertainty will going to happen in the remaining 3 overs. 12 on the board. That means 27 more runs required for the victory in 3 overs. The asking run is 9 runs per over. And before the next next over will going to start here, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. In Hindi. And Gopi, the first 3 overs which is belongs to Netravati, rightly so, and now his asking run rate is 9 runs per over. But the most important thing here is that top order batsman are already back into the pavilion. Now asking run rate is now climbed into 9 runs per hour. Will it going to be possible here for team Tamanna to get back into this game? And if it is possible, what kind of batting will required in the remaining 3 overs? धन्यवाद सतीश. Exactly, it's a possible. If they batted bravely, it would have been a possible for them in the last 3 overs of their game. 27 runs they have to score. First ball, and this time he lost that one. It's clear defense. It's a biggie. So he just applied that one with a twisted bat and got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of a deep back with a third man for a huge one. और ये छक्का जैसा कि आपने सतीश फरमाया निस्संदेह कमबैक करने के लिए इस वक्त कुछ हद तक सहकारी हो सकता है तमन्ना डियर को. इमरान के बल्ले से ये छक्का लग चुका है. NM मंगलूರು ಹಾಗೂ ಜಾಗುವಾರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Absolutely perfect struck with a reverse shot. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, देखना यह है कि अगली गेंद पर गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर अपनाते हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर सेंसिबल तरीके से गेंद को मोड़ा. शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा. इट्स गोइंग टू बी मोर रन इन द फेस ऑफ ओवर थ्रो. तो 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. आई रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ जागुआर कुद्रोली टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली. द कैप्टन ऑफ NM Mangalore आर वेटिंग फॉर यू फॉर टॉस. तो पहले 2 गेंदों में 8 रन इस वक्त बन चुके. एक बेहतर ओवर साबित होता है यहां पर तमन्ना अड्यार के लिए. अगली गेंद के लिए तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को अंतिम क्षण में रिवर्स शॉट खेलना चाहता है, लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदलते हुए गेंद को खेल दिया अजीब और गरीब ढंग से शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में. और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 21 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मनीष दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराने के बाद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। इसको बैट ऑफ दैट एट द लास्ट मोमेंट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 17 more runs now they have to score for victory in remaining 14 deliveries। और मैच धीरे धीरे मैच में वापिस आता हुआ यहाँ पर तमन्ना अड्यार अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट मनीष इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे गेंद आती हुई। द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एट द लास्ट मोमेंट एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 22 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज मनीष कुछ हद तक महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं। दाहिना तो पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि इस बार गेंद बल्ले पर नहीं आई और सीधे टकराए मिड लेग स्टंप पर। और बल्लेबाज इमरान जो कि छक्का इस ओवर के पहली गेंद पर लगा चुके थे, अंतिम गेंद पर इस ओवर की उसी तरीके का स्ट्रोक उन्होंने दोहराना चाहा, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी। प्रीटी स्लो वन फ्रॉम द बॉलर एंड ही हैज गॉट द रेट ऑफ द बैट्समैन। और इस वक्त इमरान की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। इमरान स्कोर्ड 11 रन्स इनटू हिज क्रेडिट इंक्लूडिंग 1 6 and he is back into pavilion. In the next match, Mangalore after won the toss they elected to field first against Jaguar Kudroli and that match is now coming up live exclusively right after this match। और जहां तक इस मैच का सवाल है तो 22 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। 22 for the loss of 5 wicket in the over number 4 completed, in fact 4 overs completed, 22 runs at the board, 5 wickets down, 17 required in remaining 2 overs, that means in remaining last 12 deliveries। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला prestigious cricket tournament in the name of YFC Trophy Season 2 2023 is now progressing here, which proudly organized by YFC Bajal Nanthoor Mangalore in association with Little Kingdom Phones Bahrain। और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स पर इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का। और इस श्रृंखला टूर्नामेंट के अंतर्गत पहला मैच यहां पर खेला जाता है। नेत्रावती शांति नगर और तमन्ना अड्यार के बीच में बराबर का टक्कर यहां पर जारी है। इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। 17 runs still Tamanna Adyar have to score in the stipulated in the remaining 2 overs, that means in 12 deliveries with the required run rate of exactly 8.5 runs per over। और ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। और जहां तक सवाल है इस वक्त दाहिने हाथ के गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अजमान ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 17 रिक्वायर्ड ऑफ 12 डिलीवर्स। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, ओवर थ्रो इस वक्त हो चुका है लेकिन वहां पर बैकअप होता हुआ तो वाइड यहां पर 1+1 2 runs now added to the total and with that couple run the scoreboard moving up to 24 now for the loss of 5 wicket। 15 to get from 12 deliveries। The tide is now slowly turning। तमन्ना अड्यार इस मैच में इस वक्त धीरे धीरे वापिस आता हुआ तो इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद थी। तो 15 रन इस वक्त चाहिए 12 गेंदों में और गेंदबाज इस बीच अजमान वाइड के साथ इस ओवर की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं और इस वक्त फील्डर मैदान पर छाते हुए सुबह धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ सुबह के 11:25 बज चुके हैं और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर भी इस मैदान पर बढ़ता हुआ, गर्मी की तीव्रता, भीषण गर्मी की तीव्रता का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए YFC ट्रॉफी सीजन 2 2023 2023 के नाम पर सीजन 2। और गेंदबाज तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड। अब 14 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 12।
14 to get from 12 डिलीवरीज। और खासकर पिछले ओवर की बदौलत यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा इस मैच में वापस आ चुका है तमन्ना अड्यार। हालांकि 3 ओवर में 27 रन बनाने थे, लेकिन उसके बाद पिछले ओवर में 10 रन बने और इस ओवर में पिछले ओवर में 12 रन बने और इस ओवर में तो पिछले ओवर में 10 रन बने और कुल मिलाकर इस ओवर में 3 रन बन चुके हैं, जबकि कोई भी गेंद यहां पर फेंकी नहीं जा चुकी है। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು। तो इस वक्त कुछ बातचीत जारी है बल्लेबाज और अंपायर्स के बीच में, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और जहां तक सवाल है 8 प्रतिष्ठित टीमें इस पूल ए टॉप टीम्स इस श्रृंखला में हिस्सा ले रहे। नेत्रावती, शांतिनगर, तमन्ना अड्यार, एनएम मैंगलोर, जैगुआर कुद्रोली, गोरी यंग बॉयज, टॉर्पेडोज काना, एससीसी जप्पू और ब्रदर्स जप्पू। और कुल मिलाकर हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आज इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट का पहले दिन में एक रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस वक्त गेंदबाज को बदल दिया गया है। हालांकि 2 लगातार वाइड फेंकने के बाद उनको इस वक्त मोर्चे से हटा दिया गया है और गेंदबाज के रूप में अन्य गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। 12 गेंदें बाकी है, 14 रन चाहिए विजय के लिए। शाहरुख का नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन इस वक्त पीछे की ओर जाता हुआ। डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास। और ओवर की पहली गेंद लेकर शाहरुख इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शरीफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त शाहरुख का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए और इस बीच लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल चुकी है। वाइड का इशारा, तो वही किस्सा यहां पर दोहराते हुए जो अजमल ने किया था, वही गलती को यहां पर दोहराते हुए गेंदबाज शाहरुख वाइड के साथ शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। अब 12 गेंदें बाकी है और रन्स चाहिए सिर्फ 13। 13 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 बॉल्स। और लगभग 10:24 को यह मैच शुरू हुआ था यहां पर। अब 11:25 बच चुके हैं, यानी 1 घंटा इस मैच में बीत चुका है और अभी भी 12 गेंदें इस मैच में और भी फेंके जाने बाकी। तो यहां पर शाहरुख गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस बार प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। गेंद उनके बैकलेग पर टकराई थी, ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा था, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई। उन्हें प्लम्ब इन फ्रंट पगबाधा यानी लेग बिफोर विकेट LBW घोषित करने में। तो विकेट यहां पर गिर चुका है शरीफ का और पहली गेंद पर यहां पर शाहरुख विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अब 11 गेंदें बाकी है, 13 रन और बनाने। 13 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 11 डिलीवरीज। और नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है और नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त मैदान पर उतरते हुए निजाम नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतरते हुए और स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए शाहरुख की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। तो देखते हैं यहां पर निजाम नए बल्लेबाज शाहरुख की गेंदों का किस तरह सामना करते हैं और काफी जिम्मेदारियों के साथ क्रीज पर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र में यहां पर दिखाई देता। वाह, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और शाहरुख एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद निजाम के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड। तो वाइड विकेट और वाइड। अब कुल मिलाकर 11 गेंदें बाकी है, 12 रन बनाने हैं। 12 रन टू गेट फ्रॉम
11 डिलीवरीज। और फिर से एक बार शाहरुख की गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, दैट्स बेटर। और सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त अपनाते हुए बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया सिली मिड ऑफ पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर। 28 11 runs to get from 10 balls। गेंदबाज, ये गेंद रिवर्स शॉट, डेलिकेट, एब्सोल्युटली डेलिकेट। इस वक्त इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है इस वक्त, और वक्त की नजाकत को समझते हुए इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाते हुए हर गेंद पर सिंगल्स के रूप में रन इस वक्त बटोरते हुए 10 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 9। और शाहरुख का इस बार अब खूबसूरत स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पर फुल लेंथ गेंद पर गेंद को खेला इस वक्त, लेकिन ठीक तरह से खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल, लेकिन 1 रन ना उन्हें जरूर मिला। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों से गेंद इस वक्त छूटती हुई, और बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 30 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज इस वक्त तैयार, 9 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 8। और शाहरुख अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सफान इस वक्त सामना करते हुए स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में, और जब तक विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 31 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 31 for the loss of 6 wickets, 8 runs more required in remaining 7 balls। गेंदबाज शाहरुख अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, मिसफील्ड, एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, और इस बार फील्डर थोड़े से पीछे, बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता अशफक द्वारा, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। काफी जोरदार स्ट्रोक्स था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। अब 6 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए 6। 6 of 6, still they have to score for victory। और देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में कप्तान नेत्रावती शांतिनगर के गेंदबाजी का जिम्मा कौन से गेंदबाज को यहां पर सौंपते हैं। तो इस वक्त अगला मैच खेला जाएगा। इस मैच के बाद एनएम मैंगलोर और जैगवर कुतरोली के बीच में, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा गया है गेंदबाज जो कि 0-2 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए सज्जद, जो कि इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 6 रन चाहिए 6 गेंदों में। और इस वक्त दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए पानी ग्रहण करने के बाद अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज सफान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सज्जद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। तो सज्जद गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए सफान। सज्जद की गेंद 6 of 6 रिक्वायर्ड फॉर तमन्ना अड्यार। पहली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया, डेलिकेटली प्लेड स्क्वायर लेग की दिशा में, और 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 5 गेंदें बाकी है, 5 रन चाहिए। 5 of 5। इफ द मैच एंडेड इन अ टाई, विनर्स विल डिसाइडेड बाय टॉस। और इस बीच गेंदबाज सज्जद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं निजाम, और एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत यहां पर करते हुए। रनों की सख्त जरूरत इस वक्त तमन्ना अड्यार को, डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त नेत्रावती शांतिनगर के गेंदबाजों को। और सज्जद ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, ठीक तरह से गेंद को पुश नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। और शॉर्ट कवर फील्डर थोड़े से पीछे की ओर मौजूद, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर। 35 now for the loss of 6 wickets। 35 for the loss of 6 wickets, और 4 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 4। मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को स्टीयर किया, इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड पैर की दिशा में, 1 रन फिर से मिलेगा। 3 गेंदें बाकी है, 3 रन चाहिए विजय के लिए। 3 of 3 still they have to score for victory। और तो 3 गेंदों में 3 रन चाहिए। अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित किया जाएगा। और फील्ड से एक बार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त सज्जद गेंदबाजी
आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा। सज्जद अगर मैच जिताते हैं तो यहाँ पर दूसरा रन मिल चुका है। अब यहाँ पर सज्जद को मैच तो वो जिता नहीं सकेंगे। अगर मैच बराबरी पर समाप्त करना है तो लगातार 2 डॉट गेंदे यहाँ पर फेंकने होंगे। तो रन माफ कीजिए 1 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 2। तो ओवर थ्रो की बदौलत दूसरा रन पिछले गेंद पर बल्लेबाज दोनों प्राप्त कर चुके हैं। और इस बीच सज्जद इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर रन आउट का खतरा और इसी के साथ ही विकेट गिर चुका है। विकेट यहां पर गिर चुका है। अब अंतिम गेंद पर अंतिम रन यहां पर बनाना है तमन्ना अड्यार को। 1 ball remaining now, 1 run required. If the match ended in a tie, winners will decided by toss. और अंतिम गेंद अंतिम रन बनाना है और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर क्या बल्लेबाज रन बटोर पाते हैं या फिर क्या गेंदबाज सज्जद डॉट गेंद फेंकते हैं। तो एक जबरदस्त मैच यहां पर खेला जाता हुआ इस वाईएफसी ट्रॉफी सीजन 2 2023 2023 के अंतर्गत सीजन 2 और इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में अभी भी बराबर का संघर्ष जारी है जबकि सिर्फ 1 गेंद बाकी बची हुई है इस मैच को संपन्न होने के लिए। तो अंतिम गेंद लेकर सज्जद इस वक्त सराउंडिंग फील्डिंग लगभग 5 से 6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी 20 गज के 8 खिलाड़ी कहना पड़ेगा 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और केवल एकमात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात अशफक जो कि एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद और अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप 1 रिक्वायर्ड ऑफ 1 बॉल और यहां पर गेंदबाज सज्जद इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए Here we go. Right arm over the wicket. ये गेंद स्वीप किया शॉट स्क्वायर लगा कैच का मौका हो सकता था लेकिन यहां पर कैच छोड़ चुके हैं और मैच को खो चुके हैं। मुश्किल सा मौका शॉर्ट स्क्वायर लेग फील्डर को लेकिन अंतिम क्षण में वो गेंद को लपकने में सफल और यहां पर मैच की अंतिम गेंद पर तमन्ना अड्यार इस मैच को जीत चुका है 4 विकेटों से नेत्रावती शांतिनगर के खिलाफ और इस विजय के साथ इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। तो एक बेहतरीन मैच यहां पर समाप्त हो चुका है और जिसमें तमन्ना अड्यार ने नेत्रावती शांतिनगर को 4 विकेटों से हराया मैच की अंतिम गेंद में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच इमरान को इस वक्त घोषित किया गया। तमन्ना अड्यार के इमरान 11 रन उन्होंने बनाए थे एक छक्के की मदद से इमरान ने और 2 विकेटें अपने गेंदबाजी पर उन्होंने चटकाए। तो इस सव्यसाची निर्वहन यानी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस की बदौलत इमरान जो कि तमन्ना अड्यार के उन्हें मैन ऑफ द मैच एडजर्ज किया गया है। आई रिक्वेस्ट द player Imran of Tamanna India, please come on to the dais and receive the man of the match prize right from the hands of the organizers. Imran of Tamanna India to please report to the stage to receiving the man of the match prize. Next match, one more good match is now coming up. NM Mangalore will take over Jaguar Kudrole. NM Mangalore after won the toss they elected to field first and that match starts and the match starts with a just short while. Till then वेट की छोट ब्रेक और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने अंग्रेजी में उपस्थित हो गए सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಯಾಕೂಬ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಯಾಕೂಬ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So match number 2 of this day number 1 of this prestigious cricket tournament, YFC Trophy 2023, and Jaguar Kudroli versus NM Cricketers Mangalore. NM Cricketers Mangalore, they came into this tournament one of the favorite of coming to the finals and being the winners in the Netravati Trophy, which is played earlier in this particular cricket ground, and they are the winners of the last year as well. YFC Trophy 2023 is a season 1 defending champion NM Cricketers Mangalore. They are starting the more cricket tournament, and of course the very busy season for the cricket. And one more announcement, brothers Shakti Nagar will going to organize cricket tournament, the name of Brothers Trophy 2023 in the coming 26th and 26th February and 5th March, and in the memory of late Shekhar Pujari and Leeladhar. And that tournament will going to commence at Shakti Nagar school ground, and the winners will going to get 55,555, and runners up will going to get 33,333 with some attractive Brothers Trophy 2023 that will go into organize on 26th February and 5th of March in Shakti Nagar school ground. Please don't miss that date, and all are invited on behalf of organizers. And the entry fees will be of 5,000 plus 100 rupees for the ball. So coming back this tournament, YFC Trophy, which is organized under the leadership of Nazir Bajal and Ashraf Bajal as well as Jabbar. This tournament is running very successfully. The day number 1, the big match, and after winning the toss, captain of NM Cricketers Mangalore, Atif, won the toss, elected to field first, so that opening batters for Jaguar Kudroli are in the middle. Asif and Muzamil. Asif is in strikers end, Muzamil. Ramiz is in strikers end, and Muzamil is in non-strikers end, and a bowler for NM Cricketers Mangalore, the jersey number 32, will going to start the proceedings. Riaz is a very talented bowler for the side. Right arm over the wicket, first ball. This time reverse sweep. Oh, Khalid is just looks like he's just walking, and of course he's just moving towards the front, but the ball went over his head in that occasion, so that the ball landed safely over the head of Khalid, and first run came here for team Jaguar Kudroli in their first ball, as Rami is so lucky, tried to play the reverse stroke, not quite getting hold of that one properly, but managed to get the single, and he's off the mark, one without loss of any wicket. NM Cricketers Mangalore, the season of course 2023, it's going to be a very important for each and every big teams. This time straight to the Khalid Bhai drops the catch, a straightforward catch in the occasion. The Khalid little bit taking that one lightly. Of course they can't question his ability in the fielding department. He's one of the fantastic fielder, no doubt at all, but sometimes it's happening, isn't it? The players like Khalid is very good knowing for the fielding, but sometimes happening when it's taken a little bit lightly. That was a straightforward catch, ball just slipping out of his hand. Down to square leg division, so going for the sun. This time the fielder, of course, trying for the run out. They're going for the second run. Again they completed a couple of runs. Excellent running between the wicket. Looks like the square leg fielder trying for the run out. He returns the ball. Atif tried to collect the throw from the fielder, but it was in the half volley. When it's a half volley, it's very difficult for
for any fielder to collect the throw, and ball just missing the hands of Atif, and again both the batters has got opportunity to complete another extra run. So scoreboard now is a 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Riaz back to his bowling mark. Of course, NM cricketers not having full strength. They're missing the service of Mansoor behind the stump. Of course, then Azhar, one more big name. They're missing this match, and Rilwan is one more. Mujib, little correction, is the bowler is missing this match. This time again the opportunity of Nanthoor. That fantastic stop there from Atif. Very good backup, diving to his left and stopping the throw from the fielder down at back point, cover point region. And both the batters are completed at single 4 without loss of any wicket in the over number first in progress. Riaz again bowling away from us. Right over the wicket. Bowls this time. Nice 31. The square leg fielder got a hand onto that, but again the opportunity for the both the batters to complete that couple of runs. The runs are coming in the first over for Jaguar Kudroli. Is a 6 on the board without loss of any wicket in the over number the first in progress. This time I think the batsman played little bit close bat and tried to hit the ball down to square leg region, and the fielder down at the short square leg region in front of square tried to take the catch, but ball just kissing his hands. Ball went towards the deep backward square leg region for a couple of runs. Again Diaz bowls. This time Plum, absolutely Plum in front of wicket. Ball nip back into the batsman, and the batsman no answer in the negation. Rami is finding himself right in front of middle stump, and at the last delivery of the over, Riaz strikes for NM Cricketers Mangalore, and the first wicket is back into pavilion of Jaguar Kudrol. It's a 6 for the loss of 1 wicket. So first wicket is back into pavilion. Coming back to NM Mangalore, the playing 11. We are talking about the three players missing here is Azhar, Mansoor and Mujib, but nothing worried about that three players, and as they're replaced by some experienced camper like Sadiq of NM Cricketers Mangalore, and they got Abu after a long time, Samir Abu back into his playing 11. Here is announcement from the supporter of team Jaguar Kudroli. If any batsman out of these two going to hit the 6, they will going to get a 500 rupees for Mansoor of Jaguar Kudroli, because the two brothers are in the middle, and wait and see how two brothers will going to contribute, Muzammil as well as Aviz. So bowler Atif will going to start his little correction, not Atif. Atif is in the mid-on region. Dhanush brought into attack. The young talented bowler starts with the warm-up delivery of the morning, and warm-up for umpire Nasir Bajal as well, and signal it's a wide. One more extra, scoreboard numbers on to 7 without 7 for the loss of 1 wicket. Dhanush bowling with a short run up. Right arm over the wicket bowls. So this time Muzammil swept that one. This time a little lazy fielding there by the square leg region fielder. They're going for the second chance of run out. Umpire asking for the third umpire. Will it go into a wicket here? Looks like the body language of Muzammil is a little bit struggling. It looks like he's struggling to get his home, and he's walking. You know exactly he's a short of his crease, but still umpire asking for the third umpire, but seeing the body language of Muzammil is just walking towards the pavilion, and without waiting for the third umpire decision, but now he's waiting, but just look at his body language. It looks like he's short of his crease, and the body language of the fielding team NM Cricketers Mangalore, they're so confident that they got the wicket number 2, and but need to see the third umpire whether the batsman will be going to be safe or not. But it's going to be disaster if the wickets are fallen. So,
Not out, which is a call from umpire. That's what happening in cricket sometime, Gopi. It looks like the batsman is 100% sure that I'm out, but now he's surprised why I am safe. But he definitely after this match will go into examine the replay how he becomes a safe. But sometimes happening, isn't it? He thought it might be wide, absence of mind might be, and result which is going in favor of fielding team. This time so if it comes into play, chance of run out. Khalid is trying for the shy at this time, but not quite enough. Not quite enough there from Khalid Bhai to hit the stumps and misses the stumps, and scoreboard now is a 10 on the board. It's not so easy, isn't it? Quite understandable because Khalid Bhai is not playing regularly in the present cricket. He is not a regular player for NM Cricketers Mangalore. When you're out of the tournament for a long time, coming to the tournament and performing is not so easy, and that's what really happening. The lack of practices is definitely going to see the results. Again, Sadiq is running very quickly towards the ball, but more than the speed of the wicketkeeper, the speed of the batters between the wicket is so good, so that they manage to complete the single. So with that single, scoreboard now moves on to 11 on the board in the over number second in progress. Danush. The replacing for Mujib is missing this tournament, and Dhanush is a really upcoming emerging young cricketer for the side as Dhanush bowls. There's some lovely shot, but lack of placement. Straight lines of field, a chance of run out. Mansoor reaching the stamp. This time, I think Muzamil will not going to wait for the even for the main umpire decision. Of course, it's not a third umpire decision. The main umpire decision is raise the finger, but he's walking towards the pavilion. This time not lucky. This time is not lucky. The ball is hits the stumps. The Mansoor done a fantastic job at square leg vision. Picks the ball, returns the ball, hits the stump. He's well short of his case, and Muzamil is out of course, he's walking towards the middle, is a shot of his crease, and it's 11 for the loss of 3 wickets. 2 wicket correction as Mansoor has been outstanding. One more experienced campaigner for the team and MKS Mangalore. There is 3 very good experienced campaigner in this team. One is Khalid Bhai, is the most experienced. The second one is Mansoor, who is standing at square leg, is responsible for the run out. And another one is the behind the wicket, Sadiq of NM Cricketers Mangalore. 4 balls completed. Sadiq, of course, is just came into his joining his team in this particular season. This time, Khalid misses it completely from this hand. He's just charging to the ball to collect that one, but misses it completely. One more single taken in the negation. Scoreboard numbers on to 12 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Second in progress, because second over is in progress. Dhanush. Good score on the board for Jaguar Kudroli. Again, sub that one down to fine leg region. They running hard. Chance of run out in the no cycle side. Again, the direct hit. Again, the umpire's finger is raising here. And one more wicket is back into pavilion. It's not a good running bit of the wicket. I think is a ban is out of crease. Is Nauseem is not really run quickly. Of course, there is a single, but he's responded very slowly. He's responded very slowly because Ayaz is the man is running towards the danger end. But Nauseem is the man is responded very slowly to that run, and he's back into pavilion. 12 for the loss of 3 wickets in the over number 2 completed. The third match of the day, number 1, will be played between Goriang Boys versus Tarbados Khana. Meantime, I request both the teams players please get ready and complete the signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 6 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು. 25 minutes, you need to complete your 6 overs. 2 overs which is completed, and its score is 12 on the board. Jaguar Kudroli 12 for the loss of 2 wickets, 3 wickets in fact.
Riaz to continue from the commentary box and right arm over the wicket outside line of off stamp. Again they're going for the quick single. Ayaz is back into pavilion. What Ayaz is doing here? Already in front of him, 2 wickets fallen in the form of run out. Now he's himself is walking towards the pavilion because of a little bit carelessness and urgency shown for the run. You can't do that, isn't it, against some very good fielding team like NM Cricketers Mangalore. They need to be very careful, and the NM Cricketers Mangalore again grabbing the opportunity to sending the batsmen of Jaguar Kudrali in the form of run out. Unfortunately, it's a disaster to see that the 3 wickets out of 4, it's a run out. It's 12 for the loss of 4 wickets. A new batsman in. Jersey number 5. Azim. In non-strikers and Munna will going to take the strike. Riaz again. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Bowls. Beautifully bowled. Perfect one. One of the dangerous ball. What Riaz doing in the present cricket. Sharp incoming delivery, extra deviation, extra turn for Riaz, but ball just misses the stumps. Riaz again, right arm over the wicket balls. This time again outside the non-back stump. Look at that wicket keeping there from Sadiq. Absolutely, ये तो फेविकॉल की जोड़ है. ये तो absolutely fantastic one, isn't it? Sadiq has absolutely managed to collect that one beautifully. It's not so easy when you are standing very close to stumps and the ball is outside the non-back stump. It's not so easy for wicket keeper. Again, lovely delivery, and what a fantastic face in the bowling. Even Sadiq has got a little bit uncomfortable. Ball might be hitting a finger of Sadiq is feeling a little bit pain because of the pace generated by Riaz. Again, nicely one down to deep cover point region for a single. Nice looking drive there from Munna with that single score, but Namuzan to 13 now for the loss of 4 wickets back into pavilion. So here is again right arm Riaz around the wicket for the left-hand batsman. Swept that one very nicely down to square leg region for a single. So in this season, of course, every team's the managed to perform very well, especially the Goryang boys and Sneha Malamar. Sneha Malamar, of course, they won their first tournament of the season, which is played at Shaktinagar, and Adimaheshwar Cricketers becomes a champion, and NM Cricketers Mangalore also becomes one time the champion, and of course, now we are only talking about what about the young friends Surua. They are not taking part regularly in this particular tournament after dominating more than 15 to 20 seasons. And in this particular tournament also, the young friends Surua is not taking part in this tournament. So altogether, what we are talking about, the equal battle is on from top teams getting some big titles. But meanwhile, here is the change in commentary box. The 3 overs completed, and before the next over going to start. And I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. And more than anything else, Gopi is winning the titles in this particular season, but we are not having that much of huge tournament so far in this season, isn't it? We are missing some big tournaments like KPL and some other tournaments missing this season, and that's why we are not really very difficult to analyze the performance of the top teams. But in this particular ground, I think NM Cricketers Mangalore, being the defending champion, being the champion in the last season Netravati Trophy, once again NM Cricketers Mangalore came into this tournament as one of the favorite of winning this trophy. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस श्रृंखला में समान इस वक्त मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है. टॉप टीम्स लगभग एक एक खिताब हर जगह प्राप्त कर चुके हैं, जैसा कि आपने फरमाया. स्नेहा मालेमार, आदि महेश्वरी, एनएम मैंगलोर और गोरियंग बॉयज जो कि एक एक जगह चैंपियन रही है. और इस श्रृंखला का जहां तक सवाल है तो एनएम मैंगलोर जो कि डिफेंडिंग चैंपियन वाईएफसी ट्रॉफी 2023 सीजन 1 जो पिछले साल खेला गया था वहां पर यहाँ पर तो उस श्रृंखला में एनएम मैंगलोर चैंपियन रहे थे. और कुछ दिनों पहले नेत्रावती ट्रॉफी जो यहाँ पर श्रृंखला हुई थी उस श्रृंखला में भी एनएम मैंगलोर चैंपियन रही थी. तो उनके लिए ये मैदान काफ़ी फेवरेट साबित हो चुका है. और यहाँ पर भी इस श्रृंखला में वो अपनी छाप जमाने की पूरी कोशिश में, अगर यहाँ पर भी वो खिताब अर्जित करते हैं तो लगातार तीसरी बार हैट्रिक विजय, यहाँ पर हैट्रिक बार खिताब दर्ज करने का श्रेय
उनको जाएगा, तो यहाँ पर उसके लिए कोशिश जारी है इस वक्त मैंगलोर में, खासकर इस पहले मैच में जैगुआर खुदरोली के खिलाफ। और इस वक्त गेंदबाज आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एंड आई थिंक द बॉल मिसिंग जस्ट outside the off stump at the last moment and it went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और फिर से एक बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर तो नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर आतिफ एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद इस वक्त, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की और कुछ हद तक निकलते हुए अपील को सही तरीके से अंपायर ने नकार दिया और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ओवर कंप्लीटेड, 4 ओवर्स कंप्लीटेड। 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्टिल द बैट्समैन, ऐसा कहना पड़ेगा, स्टिल द बैट्समैन ऑफ जैगुआर खुदरोली आर नाउ सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए एनएम मैंगलोर के गेंदबाज। अगला मैच गोरी यंग बॉयज विल टेक्स ओवर टॉर्पेडोज काना। वन मोर बिग मैच इज नाउ कमिंग अप राइट आफ्टर दिस मैच and because of that I request all the players of these two teams, all the players of Gori Young Boys and Torpedoes Kana to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। और जहां तक इस श्रृंखला का, इस मैच का सवाल है, तो इस वक्त एनएम मैंगलोर के गेंदबाज अपना प्राबल्य इस वक्त स्थापित करते हुए, बंधनों को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए इस वक्त बल्लेबाज जैगुआर खुदरोली के। जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 40 का आंकड़ा पार करना होगा यहाँ पर जैगुआर खुदरोली को, अगर उन्हें एनएम मैंगलोर के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर अंकुश डालना है, तो दबाव डालना है, तो देखते हैं बचे हुए 2 ओवर में वो और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। गेंदबाज फैजल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, एनएम मैंगलोर आज अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में यहाँ पर खेल रहे हैं। मंसूर, अजहर और मुजीब, समीर, अब्बू की अनुपस्थिति यहाँ पर, उनकी अनुपस्थिति में इस वक्त एनएम मैंगलोर इस मैच में खेल रही है और इस वक्त जैगुआर खुदरोली को उनकी अनुपस्थिति का यहाँ पर लाभ उठाना है, लेकिन यहाँ पर पहले 4 ओवर में उनके गेंदबाज एनएम मैंगलोर के यहाँ पर पूरी तरह बांध कर रखने में सफल हो चुके हैं जैगुआर खुदरोली के बल्लेबाज को। और इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर 5वें ओवर की पहली गेंद थी, इस वक्त रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर सादिक के हाथों में और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। दाइनात ओवर द विकेट, इस वक्त गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाइनात ओवर द विकेट, ये गेंद आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 बेहतर गेंद है, फैसल इस ओवर में फेंक चुके अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। ना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलती, एक बार फिर से सही गेंद घोषित था और रन बल्लेबाज को नहीं मिला, जो कि अंपायर इस वक्त कुछ कहते हुए अंपायर से कि गेंद काफी हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल चुकी है, आपने वाइड क्यों नहीं घोषित किया, लेकिन अंपायर सतर्क है इस वक्त, सही गेंद घोषित करते हुए अंपायर इकबाल और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त फैसल तैयार था। ना तो ओवर द विकेट, यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, अगेन अ डॉट डिलीवरी, the ball came along the carpet at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman। और निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज एनएम मैंगलोर के एक बार फिर से फैसल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ताइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में क्या छूट चुका है, मुश्किल सा मौका, लेकिन यहाँ पर रन गंवाते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज इस गेंद पर जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर रुक चुका है 16 रन, 5 लगातार डॉट गेंदे यहाँ पर फैसल फेंक चुके हैं। क्या वो ये ओवर मेडन न कर पाएंगे, क्या अंतिम गेंद वो डॉट फेंकेंगे, देखना पड़ेगा इस अंतिम गेंद पर। और अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, दाइनात के बल्लेबाज सामना करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, क्विक कलेक्शन बिहाइंड द स्टंप्स, मेडन ओवर इस वक्त फैसल का समाप्त हो चुका है। निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ पर शायद विकेट भी गिर चुका है। अंतिम क्षण में बेहतरीन तरीके की स्टंपिंग इस वक्त विकेट कीपर सादिक ने की और इसके बदौलत यहाँ पर यह विकेट गिर चुका। मेडन विकेट, इस श्रृंखला का पहला मेडन विकेट यहाँ पर फेंक चुके हैं
फैजल और 5 ओवर के समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा जैगवर कुद्रोली के बल्लेबाज अपनी सही राह को तराशते हुए स्टिल द बैट्समैन ऑफ जैगवर कुद्रोली आर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। अंतिम ओवर का खेल बाकी, द लास्ट ओवर इज नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए आतिफ, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज माफ कीजिए, और इस वक्त अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। धूप का प्रकोप काफी हद तक बढ़ चुका है, दोपहर के लगभग 12 इस वक्त बज चुके हैं, 12:05, और सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद वाइड, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। आतिफ एक बार फिर से तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा लेग पाई के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 5 गेंदें अब उनकी पारी में शेष, और आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को फेंकी थी। गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूंकि सीधे बिहाइंड द विकेट गेंद को कलेक्ट कर लिया विकेट कीपर सादिक ने, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाज आतिफ, ये गेंद इस बार स्वीप किया, गेंद को नॉट क्वाइट मिडली गेट, लास्ट मोमेंट स्क्वायर लेग फील्डर काफी पीछे, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। आगे की ओर दौड़कर आकर गेंद को उन्होंने फील्ड किया, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, बाएं हाथ के बल्लेबाज आतिफ की गेंद का सामना करते हुए इस वक्त तैयार, लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, और 1+1 2 रन नाउ एडेड टू देयर टोटल। तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहाँ पर रन प्रदान कर चुके हैं इस गेंद पर आतिफ, 2 रन, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। फिर से एक बार आतिफ गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, सफल होते हुए लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड, तो स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। तो अपनी इस बार गेंद को खेला शॉर्ट पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा। अले सीमा ರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಜುನೈದ್, टू बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर, रन आउट हो चुका है यहाँ पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, एंड स्टिल कपल ऑफ बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। नए बल्लेबाज का इंतजार है, तो 3 दुक्कियों की जर्सी इस वक्त पहने हुए बल्लेबाज, वेयरिंग 222 जर्सी, इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और 2 गेंदें अब बाकी है उनकी पारी में। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, और आतिफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट, नॉट क्वाइट मिडली गेट, गेंद पहुंच एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन मिलेगा। आतिफ गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, एंड द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, बेहतर फील्डिंग, वहां पर थ्रो पहुंचा, और यहां पर थ्रो मेरे ख्याल से थ्रो पहुंचने से पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 2 रन मिले, और इन 2 रनों के साथ इनिंग्स इज अप फॉर जैगुआर कुद्रोली। They finished with 26 for the loss of 6 wickets in this stipulated 6 overs, and now the target for NM Mangalore is 27, and 27 they have to score in the stipulated 6 overs with a required run rate of exactly 4.50 runs per over. With the help of 10 wickets they have to score, they have to make the present equation shows for them. 27 the target for them, and their innings now going to start. Meantime, I request all the players of Gori Young Boys and Torpedoes Khana to be pleased to be reported here
to sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾನಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. So 27 टारगेट फॉर एनएम मैंगलोर. देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब एनएम मैंगलोर की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ಪಿಡೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ 7 ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ NM Cricketers Mangalore is 27 and 27 in stipulated 6 overs, and 2 opening batters are already made their way to the middle of the pitch, Azim as well as Riaz. Azim, the first ball this time lofted but straight to the hands of fielder. The first wicket is back into pavilion of NM Cricketers Mangalore. It's a dream start produced by the bowler Munna. The first ball itself, the batsman is in a little bit aggressive frame of mind. Azim, nothing much wrong with that stroke. Just look at it one in a replay. Nothing much wrong with the stroke. He played the strokes as per the merit of the delivery, but something wrong with the placement which is looking for. Is just choosing the one of the feeder out of 2. It's always going to be disappointment for the batter when it's a power play is on. Power play is on, and only fielders, 2 fielders outside the circle, and you're choosing one of the fielder out of that. It's going to be disappointment. And the first wicket is back into pavilion. The right time for Jaguar Kudroli to tighten up the screws, because whenever you're getting a wicket in the first ball, I think it's always the benefits the fielding team to get some good deliveries, get some wickets, get some dotted deliveries. But against NM Cricketers Bangalore, always is going to be the question raising, will it going to be enough for them to get a 1 wicket? But I don't think so. Another 2 wickets in a quick session, definitely the Jaguar Kudroli has got opportunity to open the gate for them to win this match against one of the top team of South Kent District, NM Cricketers Mangalore. Asif is one more fantastic performer from the bat. Asif Adur is popularly known as Asif Adur.
will going to face his first delivery and second delivery of the innings. Munna bows. Just a lovely shot, beautiful stroke. That was a glorious shot. Down to deep cow point region. Fielder play on the ball, and just inside the boundary line, the fielder managed to cut it off. But here is the batsman running very hardly for the third run, and they managed to complete that 3 valuable runs. Fantastic cricketing stroke there from Asif. Technically, if you see that stroke in a replay, the front foot almost coming to the line of the delivery, and look at the timing, is exquisite, isn't it? Just getting the placement is so good, and between backward point and cow point, he's sending that one down to deep. Between deep backward point and cow point region for 3 valuable runs. Asif, one of the delightful batsmen to watch when he was get going, and he got a start from his bat. 3 valuable runs for his team. Here is Munna. Right arm over the wicket, bounce. Riaz, beautifully bowled, perfect one. Look at that incoming, some excellent pace in the ball. Just bitten by the pace as Riaz just wanted to play inside out cricketing stroke, making room to play the shot. But the ball is coming into the batsman, and there is no chance at all for any run. Again, nicely getting that horizontal bat down to third man region. Riaz so good in that shot, in that particular shot. Safe strokes to play, especially in this particular ground, and not that much of runs behind the wicket. You can get one single, but all runs are very important. 4 for the loss of 1 wicket. NM Cricketers Mangalore against team Jaguar Kudroli. Munna bowling away from us. Alright, I'm over the wicket, bounce. Asif, one-handed shot. He wanted to hit that one. Appeal for leg before wicket, but more than confident, just an excitement. Of course, Riaz played it one little bit dangerously across the line, but line of the delivery is a little bit outside the line of leg stump, so that no question of getting out. Again, Munna. Alright, I'm over the wicket, bounce. Just that swings it hard down to square leg region. The ball won't go to the boundary, but the fielder from square leg very quickly runs towards his back and fields the ball, and ample time for the batter to complete the single. Good recovery. After that, the first wicket is back in the first delivery of the over. Then these two batters has really played as per the condition required. They managed to get 5 runs and in the first over by losing 1 wicket. 22 more runs required for the victory in the remaining 5 overs. 30 ball, 22 required. 1 more good over which is required here for Jaguar Kudroli. They can back in this game if ball 1 or 2 good overs after this, because power play is always going to be key for Jaguar Kudroli to restrict the runs, to pick the wickets. Afrin brought into attack to bowl the second over of the power play. Riaz is non-strike again. Asif, one of the big A in playing 11 of NM Cricketers Mangalore, will going to be the striker. Afrin balls, lovely deliveries to start with, fantastic one, and the batsman completely miscues that delivery, and really not understand the kind of delivery. Fantastic start here for the bowler Afrim, and of course one who can produce some good deliveries, some extra pace, the quicker deliveries. And here is again the bowler bowling right arm. Round the wicket delivers. Full toss, miss, timed stroke, chance here for the, oh, drops the catch, my goodness. Oh, can you believe this? The youngster, I don't know the name of that fielder, but he's a very young, just in number 5. Azim, I think so. He's a very young star for the side of Kudroli. He's a little bit misjudging that straightforward catch. Of course, he runs back very quickly, taken a very good position, no doubt at all. He's got a very good position, but he couldn't manage to judge the catch. He just removes his eyes on the ball, and Asif has got a life. 6 for the loss of 1 wicket. Afri balls, beautifully bowled. Appeal for leg before wicket, but umpire might be a little bit doubt in a mind that ball just going to miss the leg off stump. The way that bowler is around the wicket, he bowls, maybe the ball is pitching outside the line of leg stump, but a deviation, probably that going to miss the off stump. That's what Nasir Bajal is just seeing that line of the ball, and is not interested to
give the leg before wicket. But a fantastic stuff there from Afrim. So far, it's been outstanding. Again, this time the perfect technique to implement to play that such kind of deliveries, as already mentioned. Riaz, one who can very useful by playing such kind of cricketing stroke behind the wicket and square of the wicket by playing the horizontal bat. One more single. Scoreboard now moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Afrim again bowling with a short run up. Right arm round the wicket bounce. This time again across the line. Asif wanted to swing that one down to square leg region. No protection in the deep in the square leg region. And the misfield there by the fielder. The fielding is not really up to the mark of course for Jaguar Kudroli. The fielding is one of the unique part of cricket. You can't do that mistakes against playing when you're playing against teams like NM Cricketers Mangalore. What could be a certain single run which is conceded in the form of extra couple of runs, and with that couple of runs scoreboard numbers on to 9 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. But you need to appreciate that the Jaguar Kudroli, the brave and gutsy, they knows that they're playing against a big team, but they're fighting hard. They're fighting hard. The good over there from Afrim. Very unfortunate that it's what could be a wicket taking over that was converted into wicket-less over, but it's a very economical over, in fact, from Afrim. After completion of 2 overs, chasing 27 to win this match, NM Cricketers Mangalore, 9 on the board, and another 9 in the sense, 18 more runs required for the victory. In remaining 4 overs, 24 deliveries, and 18 more runs required for the victory. After this match, after this tournament, the one more big tournament is coming off, and Fortune presents one more big tournament in the name of Yuvaratna Trophy 2023 Season 2 in UCG Cricket Ground, Urva Cricket Ground. The big tournament, the 1 lakh cash prize for that tournament, 3 days of cricket tournament, 10th, 11th and 12th, coming this month only, the next week, the Friday, Saturday and Sunday. And local teams as well as Mangalore teams will going to take a part in this magnificent tournament. That tournament is organized in the memory of late Punit Rajkumar. Meanwhile, Muzamil brought into attack. No, Munna. This time lofted it straight to the answer fielder. Big fish in the net. It's a big fish in the net here for Jaguar Kudroli, as Riaz tried to hit the ball over the top of the fielder, but longer fielder making no mistake at all. The wicket number 2, which is back into pavilion. So what a fantastic performance here for Munna, and he picked up a wicket here. The 2 wickets altogether for him, and if Munna able to get another 2 wickets in this over, he will going to get 500 rupees from Mansoor of Jaguar Kudroli. And of course another 2 wickets in this over, definitely going to be Jaguar Kudroli back. Maybe they can back into this match, but the 1 wicket, of course, probably the opportunity which is opened for the team Jaguar Kudroli. Another announcement for the hat-trick wicket, 500 rupees from Ashik of Jaguar Kudroli for Munna. A lot of announcement, a lot of encouragement for Jaguar Kudroli. Quite understandable because they're playing one of the top team. I request fielding team, don't waste the time. 25 minutes ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 5 ಓವರನ್ನು 6 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. Ayaz is a new batsman in for NM Cricketers Mangalore. Munna, right arm over the wicket to Ayaz. Ayaz this time delicately plays it down to short third man region by playing a switch it. And with that single, Ayaz is up the mark and total score now moves on to double figure 10 for the loss of 2 wickets are back into pavilion. What a fantastic cricket tournament is in progress. YFC Bajal Nanthoor Mangalore organizing this cricket tournament in association with the Little Kingdom of Phones Bahrain. The name of YFC Trophy 2023 Season 2. The Season 1, NM Cricketers Mangalore are the champion, the defending champion.
And even they are the champion with the last month which is played the tournament is in the same ground, the Netravati Trophy 2023, and they defeated Jolly Friends in the finals. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ತಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. One more high voltage match will go into coming up after this. This time lofted down to deep backward square leg, and the fielder does the deep backward square leg, and before the throw coming from the deep, and ample time for the fielder to come back for the second. So with that, couple of runs scored, Namuzan to 12 on the board for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Nice looking drive, third in progress. Correction, Munna is bowling his second over and third over of the innings of the NM Cricketers Mangalore. Asif is a very good striker of the ball, especially coming to the onside region. A very strong player on the onside region. And here is again Munna. Right arm over the wicket bowls. Beautiful ball. Oh my goodness, it's gone. What a fantastic effort there for Munna. Look at the reaction there from Munna. I really love that. The reaction there for Munna. You know exactly the kind of work he's did. It is unbelievable. The bowler's back drive, fantastic delivery there from him, and batsman really forced to play the shot back to bowler, and look at the reaction there from Munna. It's outstanding thinking, isn't it? Most of the field, the bowlers only looking to field the ball, but here is a bowler not only fields the ball, he just sees the opportunity. That's very important in cricket. There's seeing the opportunity and grabbing that opportunity and converting that opportunity into the successful one after he's picking a ball and seeing the opportunity of hitting the stumps, hits the stumps and got a big wicket. It's a 12 on the board for the loss of 3 wickets back into pavilion of NM Cricketers Mangalore. 12. Munna, great effort there from Munna. He's not really given up. This is one of the best slogan, not to give up. Not to give up. If you once you implement that word, not to give up, then you can give any kind of fight for any big teams. What Jaguar Kudral is doing here is that they've got 3 valuable wickets of NM Cricketers Mangalore. They're fighting hard, not giving this match very cheaply. Munna, right arm over the wicket bounce. This is the one outside the run of flag stamp, going to be punishable from umpire Iqbal. After getting a wicket, if can't do that mistake because it's going to release the pressure from the batter. And with that extra run scored, numbers on to 13 for the loss of 3 wicket. This time single-handed stroke down to find a and they're going for a big single in the negation. Oh, wicket keeper behind this time having a hand onto that. There is a chance of run out there. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬೀಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So wonderful spectators today. We are having very good spectators, very decent and enjoying the game of cricket. Munna to ball. Full toss delivery. Again straight to the hands of fielder. Fumble there from the fielder. Then the fielder, as a young man, is Azim, is looking like is a little bit under pressure. So 3 overs completed. Outstanding performance continues here from Jaguar Kudroli. They're fighting hard. And after completion of 3 overs, NM Cricketers Mangalore chasing 27 to win this match. They're 15 on the board. Now 12 runs required for the victory and remaining 18 deliveries. The scoreboard is 15. 12 required. 15 is the total score. 12 required from 3 overs. Required 104 runs per over. Now before the next over going to start, it's a time for change in committee box. It's over to Gopi for the further explanation of the match. And Gopi, and even 27 looks like it's going to be easy one for NM Cricketers Mangalore. But I think Jaguar Kudroli did a great job
Their three bowlers done a great job, but the job which is not completed, they need to work hard if they want to win the match. But still, I think Gopi and NM Cricketers Mangalore, they are favorite of winning this match. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಜಾಂಬಿಲ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ₹500 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊಜಾಂಬಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. धन्यवाद सतीश. तो निस्संदेह जैसा कि आपने फरमाया 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1,000 नगद ಬಹುಮಾನ मुजम्मिल ಅವರಿಗೆ 3 विकेट कबಳಿಸಿದಲ್ಲಿ. तो बिल्कुल सही बात, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी करते हैं और एनएम क्रिकेटर्स को कुछ हद तक इस वक्त समस्याएं पैदा हो चुकी है, लेकिन इस वक्त मौका जरूर है वापसी करने का. 12 रन सिर्फ चाहिए 18 गेंदों में और मैं समझता हूँ सतीश इस वक्त जागवर कुदरोली को अपने काबिलियत से भी ज्यादा इस वक्त बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी अगर बचे हुए 3 ओवर में एनएम मैंगलोर के ऊपर उन्हें अंकुश डालना है. तो फिलहाल इस वक्त उन्हें भी मौका है यहाँ पर इस मैच में अपना तख्ता मजबूत करने का. यह गेंद आतिफ ने गेंद को हल्के से खेल दिया, शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रन का इजाफा ओवर थ्रो के रूप में. दूसरा रन बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है, 16 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए 10. 10 रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 16 डिलीवरीज. तो जहां तक अगले मैच का सवाल है, एक बेहतर मैच इस मैच के बाद होगा गोरी यंग बॉयज और टॉर्पेडोज काना के बीच में. तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे. प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच. तो यहाँ पर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद. दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल एट दिस सिचुएशन. प्रीटी स्लो वन एट द लास्ट मोमेंट और गेंद थोड़ी सी टर्न घुमाव लेती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 17 रनों पर. फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ शॉर्ट थर्ड पैन की दिशा में. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 9 रन चाहिए इस वक्त विजय के लिए. 14 गेंदें बाकी. 9 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 14 डिलीवरी से. डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त जागवर कुदरोली के गेंदबाजों को इस मैच में वापसी करने के लिए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, मिड विकेट पर मौका और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. आसिफ जो कि इस वक्त दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा था, उस दबाव को उन्होंने हटाना चाहा एक करारा प्रहार करने के बाद, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गेंद को खेल तो जरूर दिया लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं और प्लेसमेंट भी बिल्कुल गलत. और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने यहाँ पर इस कैच को लपक लिया. तो आसिफ का बेशकीमती विकेट यहाँ पर गिर चुका है. 10 रन आसिफ ने बनाई. स्कोर 10 runs into his credit in 11 balls and after being playing a good knock for their side he is backing to pavilion and NM Mangalore are now lose their 4th wicket. So it's 18 for the loss of 4 wicket, 9 to get now. और एक और प्रमुख बल्लेबाज सादिक का इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एनएम मैंगलोर के. जहाँ तक सादिक का सवाल है, कुछ एक लंबे समय से वो एनएम मैंगलोर का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं और खासकर पिछले चंद दिन पहले उनका भारत को आगमन हुआ है. यहाँ पर करीबन 2 या 3 श्रृंखलाएं अब तक खेल चुके हैं और यहाँ पर उनकी ज़रूरत है इस वक्त एनएम मैंगलोर को इस मैच में. अगर जहाँ तक विजय दर्ज करने का सवाल है उनके लिए अभी भी 9 रन एनएम मैंगलोर को अभी भी चाहिए और गेंदें बाकी हैं इस वक्त 13. तो देखना यह है कि सादिक आतिफ के साथ मिलकर जो कि दूसरे छोर पर मौजूद हैं अपने टीम को सही मंजिल तक पहुँचा पाते हैं या नहीं. और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार सादिक के लिए एंड दिस टाइम he hit that one over deep mid wicket for a huge one. जो दबाव इस वक्त बढ़ रहा था उस दबाव को लगभग इस वक्त समाप्त कर चुके हैं सादिक के छक्के की बदौलत. गेंद उछाल लेकर आई थी, बल्लेबाज सादिक के पास वक्त था कि गेंद को डिस्पैच करे और उन्होंने किया भी. डीप मिड विकेट सीमा रेखा के फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकल गई छक्के के लिए और इस छक्के के साथ 24 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है. 24 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स. सिर्फ 3 रन चाहिए अब 2 ओवर में यानी 12 गेंदों में और लक्ष्य इस वक्त बिल्कुल आसान इस वक्त दिखाई देता हुआ एनएम मैंगलोर के लिए. तो 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ
ಟೋರ್ಪೋಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Request all the players of Torpedoes Khana to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो 12 गेंदें इस वक्त बाकी, सिर्फ 3 रन चाहिए विजय के लिए. अब ऐसा कहना पड़ेगा जागवर कुदरोली कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अफरीम स्टार्ट द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और पहली गेंद लेकर तैयार. ऑफ द टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. इन फैक्ट द बॉल केम इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर फ्रॉम द डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर एंड द बैट्समैन आर फाइनली सेटल्ड विद अ सिंगल. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर. इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट. और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट, यह गेंद सादिक के लिए बैकफुट पर गए. खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हैं. जस्ट वेटिंग टू द कम ऑन टू वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट. प्लेड दैट वन परफेक्टली डाउन टू लॉन्ग ऑफ एरिया फॉर अ सिंगल. एंड विद दिस सिंगल द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. रनों की बराबरी हो चुकी है. सिर्फ एकमात्र रन एनएम मैंगलोर को चाहिए अब विजय के लिए. लगभग सारे खिलाड़ियों को 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त तैनात किया गया है. और गेंदबाज अफरीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आतिफ के लिए फुल टॉस उछालना चाहा, चूंकि गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 26 for the loss of 4 wicket. Just a single required for NM Mangalore for victory. और अगली गेंद again chip kiya, square of the wicket. That's it. Inside out cricket played by Atif and he's got a boundary for that. और इस चौके के साथ NM Mangalore registered a victory by 6 wickets against Jaguar Kudroli with more than overs to spare. And with more than over to spare, and with that victory they are through to the next round of this tournament. जहाँ तक सवाल है तो मैन ऑफ द मैच इस मैच के मैन ऑफ द मैच होकर एनएम मैंगलोर के फैसल को चुना गया, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी किया था. मेडन विकेट ओवर उन्होंने फेंका था. कोई भी रन उन्होंने प्रदान नहीं किए थे बल्लेबाज को, और एक मेडन विकेट ओवर फेंका, और इसकी बदौलत वो मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त कर चुके हैं. और जहां तक अगले मैच का सवाल है, गोरी यंग बॉयज विल टेक्स ओवर टॉर्पेडोज खाना. वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप. And we'll be taking a short break, and we'll be back right after the short break with Satish in English. So when the next match we're going to begin with in just a short while. Thank you. I request the Faisal of NM Mangalore to please report to the stage immediately to receive the man of the match prize. Faisal of NM Mangalore.
So news here is the captain of Torpedoes Kana won the toss, selected to field first. So coming back to this tournament, and before that, one more announcement. Team Fortune will go into organize the big tournament in the name of Yuratna Trophy 2023 Season 2 in the memory of late Punit Rajkumar, and that tournament will go into commence in the coming 10th, 11th, and 12th of this month. That means next week at lots of Andhra cricket UCG Urva Cricket Ground, and one more big tournament. And once again, I request the team which would like to take a part in this tournament, they can enroll their name by contacting the contact person of this tournament, Naveen, as well as Kishore. And I request the teams and even the spectators and the cricket lovers, please support that tournament that will going to commence in the coming 10th, 11th, and 12th, and Yuratna Trophy 2023, the season 2, which is organized by Team Fortune. And season 2, one more big tournament will go into coming up live and exclusively in front of you. चुका है वहां पर रन का कोई मौका नहीं था। गेंद पहले टिप्पे के बाद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया और आखिरकार स्ट्राइक पर पहुंचे, लेकिन वहां पर स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज वहीं पर खड़े रहे और आखिरकार ये विकेट नंबर 8 यहां पर गिर चुका है। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। 20 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और विकेट हालांकि ताश के पत्तों की तरह यहां पर गिरते हैं वेगोर यंग बॉयज के लिए। नए बल्लेबाज साहिल का आगमन यहां पर होता हुआ और गेंदबाजी यज्ञेश इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त साहिल नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। इस बीच ये गेंद स्वीप करना चाहा, नहीं कनेक्ट नहीं कर पाए, रन्स नहीं मिलेंगे और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, 20 for the loss of 8 wickets. Still the batsmen of Gori Young Boys are now searching for the right track. Last over remaining in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज बचे हुए 2 विकेटों की मदद से और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। अगला मैच एसटीसी जप्पू और ब्रदर्स जप्पू के बीच में खेला जाएगा, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही न दर्ज करने के लिए। और अंतिम ओवर का खेल यहां पर बाकी है और वो अंतिम ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। Sinan, the bowler, is now brought into the deck, starts the fresh proceedings from the commentator box end और अंतिम ओवर गोरी यंग बॉयज की पारी में यहां पर शुरू होता हुआ। साहिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद तैनात राउंड द विकेट। बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर उखाड़े, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें सिर्फ बाकी अब गोरी यंग बॉयज की पारी में। जस्ट 5 balls now remaining in their innings.
तो अंपायर विकेटों को यहाँ पर सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। वीएफसी ट्रॉफी सीजन 2 2023 के अंतर्गत इस मेगा श्रृंखला का मेगा टूर्नामेंट का तीसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर और संकटमय परिस्थितियों का सामना इस वक्त करता हुआ गोरियंग बॉयज और अपनी अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए इस बार नॉन स्ट्राइक रेट पर खतरा हो सकता था, लेकिन इस वक्त खतरा हो चुका है स्ट्राइकर एंड पर। तो इस वक्त एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, वाइड का भी इशारा हो चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। फिर से एक बार रनआउट के रूप में यह विकेट गिर चुका है, 9वां विकेट गिर चुका है 21 रनों के योग पर साहिल के रूप में। 5 विकेट रनआउट के रूप में गिर चुके हैं और यह बात यह दर्शाता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाजों के बीच में कितनी खराब है। 5 batsmen are back into the pavilion in the face of run out and that shows the misunderstanding between the batsmen of Goryang boys. और 5 balls now remaining, last pair at the crease, अंतिम जोड़ी मैदान पर। और देखते हैं इस ये अंतिम जोड़ी मिलकर और कितने रन बचे हुए 5 गेंदों में बटोर पाती है। तो इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंचती हुई डीप कवर पॉइंट पर। अश्विन जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 9 wickets with just 4 balls to go in their innings. 4 गेंदे बाकी उनकी पारी में। गेंदबाज अगली गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग अंपायर की दाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त और स्क्वायर लेग अंपायर ने तुरंत अपने शरीर को गेंद की लाइन से अलग किया, गेंद को जाने दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज आखिरकार संतुष्ट हो चुके हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स with just 3 balls to go in their innings. गेंदबाज की गेंद स्वीप किया टॉप एज और गेंद इस वक्त बाहर हो चुकी है। 1 रन घोषित 24 स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। 2 गेंदे बाकी उनकी पारी में और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 24 for the loss of 9 wickets. Still the problems are continuing for the batsmen of Goryang boys. Last pair at the crease. Just a couple of balls left in their innings. गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप किया टॉप एज, एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 1 रन के लिए। 25 the last ball in their innings is now remaining. तो गेंद के लिए इस वक्त तलाश जारी है और गेंद तलाश कर इस वक्त दिया गया है गेंदबाज के हाथ में अंतिम गेंद। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गेंदबाज इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, चूंकि रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना लग चुका है लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से बिल्स नहीं इस वक्त डिस्टर्ब हुए, तो यहां पर बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं और तीसरे रन के लिए यहां पर दौड़ पड़े और यहां पर तो स्टंप्स को इस वक्त उठा लिया था गेंद के साथ, तो 2 रन जुड़ेंगे अंतिम गेंद पर और ठीक 6 ओवर में गोरियंग बॉयज की पारी सिमट गई 27 रन पर। दे वर बोल्ड आउट फॉर 27 रन्स इन देयर एग्जैक्टली 6 ओवर्स कोटा, स्टिपुलेटेड कोटा in fact of 6 overs. They were bowled out for just 27 runs and now the target for Torpedoes Khana is 28. They have to score for victory. And as far as the required run rate is concerned, exactly 4.66 runs per over they have to score for victory. And they stipulated 6 overs. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them 28 they have to score and they stipulated 36 runs. That means in 6 overs. And their innings starts now with just short while और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ अंग्रेजी में जब उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, Gopi. And for a little bit disappointment performance from Gori Young Boys from the bat has not really performed as for the reputation. But 28, I don't think it's going to be a big score. And but it's a competitive total. You cannot underestimate this total. Just saying that Jaguar Kudroli they fought hard for that 27 runs against NM Cricketers Mangalore. Just imagine the Gori Young Boys. They got some good bowling department, and if the bowlers bowls well, they can give some kind of fight back in this match against Torpedoes Khana. And wait to see how well the Gori Young Boys will going to depend this small total. Umpire Arif Jokate is signaling towards our scorer. Everything is ready here. And Fayaz, of course, everyone is ready here at square leg. Umpire Nasir Bajal at square leg. And umpire, third umpire Iqbal. Everyone is ready here. And the first ball of the innings of Torpedoes Khana. 28 to win this match to qualify for the next round of this prestigious cricket tournament. And here is the bowler Fayaz, always one who got a very good start for Gori Young Boys in many years, especially many years since our last 2 years for Gori Young Boys. He's been outstanding from the opening over. Here he bowls right arm over the wicket. First ball, oh, right on the money, right on the target. That ball, sharp incoming delivery. Chance of run out, directed, and umpire says he's out. And is the first ball itself a dream start for Gori Young Boys. It's the Manjunath is short of his crease. Looks like what Manjunath is doing here is a little bit lazy. He looks like he's a little bit lazy to react to that one run because he's a tall man. Not it's difficult for the tall players to cross over. Because of their having a long legs, they can reach home pretty easily. And Nandan Gulshekar, left of our commentary box, is just saying yes, it can be safe for the tall players to running between the wicket because he's also very tall, Nandan Kulshekar. That's why he's justifying. Yes, you are right, Satish. And but the running between the quickness is not that much of enough for Manjunath to get away from that run out. But more than anything else in this particular run out, I think direct it. The quick work by the fielder. Whenever there's a direct it is going to be a opportunity for the fielding team to get the wicket. So that will give some kind of confidence, some sort of confidence for a team Gori Young Boys after getting a wicket in the first over, first ball, and wait and see how well they're going to galvanize their level of confidence after that wicket. And meanwhile, Fayaz will go into bowl the second ball from the commentary box, and for the new batsman Zunaid, there is a short third man, there is a backward point, there's short cover point, there's short extra cover, that's a field set in the offside region, one at deep, wide-ish long off. There is a long on, one fielder, short mid wicket there, mid on, and short square leg. This time tries nicely. Oh, good piece of fielding there by Karna in that occasion because the batsman Zunaid tried to clear that infield. The placement is so good, but the Gori Young Boys captain Karna so good by moving to his left, stopping the speed of that stroke. And first run coming up here for team Torpedoes Khana. One without loss of any wicket in the over number first in progress. Zunaid is off the mark, and even Gori Young Boy, even Torpedoes Khana off the mark with that single. Fayaz will go into bowl the second ball, and bowling to the right-handed batsman. I request please don't waste the time. We are just talking about a number of matches which is played so far. Only 2 matches which is completed. Please note that this is the 3rd match. After this we need to complete another 4 matches. So the batsman and even the fielding team, please make it fast. And Sinan is on strike. Fayaz is on attack. Right, a over the wicket bounce. Oh, this is a really disaster, isn't it? When you are depending a total score of 27 and 28 to win the match for the opposition, they need to restrict all these extras, isn't it? It's a key for the success. As much as you are
as much as you are considering extras, the winning chance is always going to be difficult. Again, that's wide. Wide +1. Absolutely disaster. Absolutely disaster. Can you believe this? Torpedoes Khan are under pressure when they lost the first wicket of Manjunath. Then this man Pawaz is releasing the pressure himself from the opposition by bowling 2 consecutive wide deliveries and considered 3 valuable runs in the form of wides. So with the 3 wides, Torpedoes Khan are looking in the best position for the loss of 1 wicket. Fayaz. Right, a over wicket bounce to Sinan. Again Sinan Zunaid this time now walks that one in the onside division. There is no signal from umpire. That means it's from the bat of Zunaid getting a single. 5 without loss of any wicket. 28 is the target. 23 more runs required for the victory. And Fayaz again bowling with a short run up. Right, over the wicket bounce to Sinan. Sinan drives that one. Good piece of fielding there by Naufal. It's a very good piece of fielding. Quick work there for Naufal. Immediately when he fields the ball, returns the ball very well. And over number first in progress, 2 balls remaining in this over, 2 deliveries remaining, as again bowler bowls Zunaid to Zunaid. This time again a chance of run out, but not quick enough there from the fielder, so that batsman have completed a single. Then with that single scored Namuzan to 6 on the board. The runs which is required from the first over, and Torpedoes Khan has got a run with the help of some extras. They got 6. 22 runs required for the victory. This time again wide outside and off stamp. Again the one more wide. Fayaz is just I mentioned about is the man so far in the last 2 seasons. He gave a very good start for Goryang boys, but in this season, of course, in this particular match, he's been a little bit out of the form. This time bowlers back, drive, direct it, but again the extra runs. But here is umpire asking for the third umpire. He is asking for the third umpire. If the Zunaid is out of the crease, it's going to be a Goryang boys will going to get the wicket. If it is not safe, I think Fayaz is done one more stupidity. And looks like it's going to be a batsman. The body language is safe, but we need to wait for the umpire signal. But 7 valuable runs which is conceded in that particular over. 21 required from 5 overs. Just above 4 runs per over is the required run rate. And just wait for the umpire signal. Third umpire Iqbal will going to get the result after getting some help from the technicians of King Sports about this run out. Sometimes it's when it's directed, umpire always asking for the third umpire, and look at that, Goryang boys. Just very funny thing is happening in the field. They are clapping himself. They got a wicket here. Especially the Karna is not only the very good cricketer, but he's a very good actor. And his acting is so good in that occasion by clapping. But he was looks like it's a little bit of comedy of error in the middle. Anyhow, the batsman is safe, and one run is added to total. Because of that, scoreboard is 8 on the board. 8. For the loss of 1 wicket. The first over belongs to Torpedoes Khan. Even Goryang boys got a first wicket in the first ball in the form of run out. But because of Fayaz has bowled so many wide deliveries in this over, they are a little bit out of the track. So next match, the last match of the first round, STC Jaipur versus Brothers Jaipur. So that I request all the players of both the teams, please report here immediately to sign the official chart. ದಯಮಾಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Here is again now full balls, right arm round the wicket ball. Again that wide, again going for the extra run, 1+1, 2. Absolutely disappointment performance here from Goryang boys. After that disappointment performance in the batting, then here disappointment performance from the ball, from the fielding. The runs are they conceding very cheaply for the opposition. 10 on the board for the loss of 1 wicket. Now full balls, right arm over the wicket, going for the drive. Again that's misfield there, but the fielder at short extra cover. And one more single is added to with the addition of that single score. But Namuzan to 11 on the board. Torpedoes Khan
They're cruising towards a victory. They're not chasing a big total. But there is a lot of hard work required from Gori Young Boys to win this match. Beautiful shot. Nicely driven down to deep cover point region. I don't think Fielder will going to get there. That ball is just racing towards the fence, towards the deep cover point boundary for 4 runs. So Zunaid played a beautiful and exquisite extra cover drive. Just a making room to play the shot. You know exactly. There is no protection in the cover point. There is a fielder in the deep long out. He will not going to get there. The placement is so good in irrigation there from Zunaid, and score jumps into 15. Jumps into 16, 15 on the board. Correction, 15 for the loss. This time, one more shot, but this time, oh, fielder is not trying for the catch, but he's after one bounce he collected. But I think the catch has win the matches. Of course, you need to try for the catch, isn't it? Already the match is out of your hand. They need to try for the catch so that they can bounce back to this match. But the fielder is trying for the safe is safe and safely collected after one bounce. But here's the batsman went for another run. Scoreboard is 17 on the board. Straight to the hands of short mid off. Torpedoes Khana are looking in right position. They're in a strong position here now against the Gori Young Boys. Now fall again, bowling away from us. Right arm with wicket balls. This time again going for the drive, but not quite getting hold of that one properly. Rihas the fieldsman there in the short mid wicket region to field the ball. Ample time for the batter to complete the single each and every run. The Gori Young Boys just going away from the chance of the victory against Torpedoes Khana. But 18, which is the total score. 10 more runs required for the victory. This time lofted handsomely, but not that one handsome to get clear that fielder at deep long off fielder. This time Zunaid trying for the big shot. Got that one right from the middle of the bat. It's not the Zunaid, it's the Sinan is a batsman. He's trying for the big shot. And a long off fielder making no mistake at all. Wicket number 2 is back into pavilion. It's 18 for the loss of 2 wickets. So you can't say anything in cricket. The one wicket will going to change the complexion of this match. But I think it's a little bit difficult one, but not impossible for Gori Young Boys. So new batsman, new bowler. Imtiaz is a new batsman, and new bowler will going to be Sahil, is a youngster for the side of Gori Young Boys, who did a great job for Gori Young Boys in the tournament which is played in Mudabidri. And straight away the Sinan has been outstanding. Zunaid is good looking outstanding. Placing the ball very well, especially in the offside region. He got some runs. A nice looking drive. It's not so easy day. It's not as easy day. It's not an easy afternoon for the players and for the umpires. It's a very hot. It's absolutely very hot. It's no doubt at all. It's not so easy in this particular cricket ground to come and perform. And they need to deal with some the brightness of the sun. Again, one more delivery, which is a dotted delivery. Again, that with that dotted delivery score remains on 20 on the board. 8 more runs required for the victory. Again, Sinan bowls to Zunaid. Zunaid this time outside the line of off time by going for the drive, but misses it completely. Now Imtiaz is coming down the track, having some word with Zunaid. Maybe he's talking about Zunaid, take your own time. Already we are in the match. Don't throw the wicket. It's 8 runs which is required for the victory. So that might be that was the suggestion which is came from captain of the side, Torpedoes Khana, Sinan. Right arm over the wicket balls. Full toss. This time nicely plays it down to mid wicket region. Long chase here for the fielder. They will going to get there. But before that, I think the batsman is coming for the third run as well. Mix up. Absolutely mix up.
They're turning out for the third, but that time Zunaidis looks like he's so tired in the middle. So he's running very slowly. Imtiaz is a fresh comer. But you need to understand the problem was his partner, isn't it? He is a man who has run between the wicket the before in the last 2-3 overs. It's not so easy for him to get the third run, and scoreboard numbers on to 24 on the board. One more single, and takes a team to total into 23 on the board. That means 23 means in the sense of 5 more runs required for the victory. The match is slowly inching towards the Torpedoes corner. The one-sided match. The Goryang boys has not really performed very well in this particular match. This time, Imtiaz so good in that stroke, reverse sweeping the ball very nicely down to deep third man region for a single. With that single, one more over completed. After completion of over number 3, chasing 28 to win this match. Torpedoes corner looking in a commanding position. They are 24. That means 4 more runs required for the victory. So next match, one more good match. STC Jaipur versus Brothers Jaipur. They will go into play the next match. Hot sunny afternoon. Hot and sunny afternoon, and Naufal will go to continue. Right arm over the wicket. Top scope, absolutely top scope. It's a 360-degree cricketer, and just like Surya Kumar Yadav is the one who is in the present cricket has been outstanding. Unorthodox cricketing stroke. He's a very strong behind the wicket. Again, looking for the big swing of the bat, misses it completely, and there is no chance of any run at all. Now fall back to his bowling mark. Right arm over the wicket, bows to Imtiaz. Imtiaz once again looking for the top scope, but I don't really understand. For that top scope, he'll going to get only single for that. But in international cricket, it's most of the batsmen getting boundary at least 6 runs. But I think it's a little bit of batting practice to getting some experiment in the cricketing stroke when you are very close to the victory runs. Again brought a delivery. Naufal defeating the bat of Imtiaz several times. It's a 3 runs required for the victory. It's over number 4 in progress. 2 deliveries left in this over. Again Naufal. Right arm over the wicket bounce. Imtiaz going for the mighty stroke. Again the dotted delivery. After that top scoop from him, we can see that some good comeback bowling from Naufal. The 5 deliveries he conceded, won a single run. Right arm over the wicket bounce. This time top scope. It's not a top scope, it's a reverse stroke, but it's a single. Just like I mentioned, behind the wicket, opportunity is less. 1 more over completed. 2 runs required for the victory. Just 2 runs required for the victory. So Imtiaz and Naufal played for same team, Torpedoes Khana, in that 30-over format of a games. So 2 runs required for the victory. Tyagaraja brought into attack. Just coming back to the Tyagaraja, he is a man who is responsible for the victory in Mudabidri tournament. It's from the batting department. Ball been outstanding. He's batted very well. And this time bowler's back drive. Opportunity of caught and ball. But even the opportunity of run out. But Naufal misses the ball completely. Then both the batsmen crossed over for a single. Scores are level. Just 1 run required for the victory. 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Here is a Tyagaraja. Now for this time Imtiaz finishes the match in a style by hitting the boundary towards the mid-wicket region. And the comprehensive victory in the end here for Torpedoes Khana, defeating Goryang boys by 7 wickets. And it's been a great performance here from Torpedoes Khana against Goryang boys. Goryang boys need to see that what really happened wrong here. And I want to say that run out, which is going to be a big factor. The 5 run outs taken place at the same time.
After getting a very good start, there's not a good performance from the middle order batter, and disappointment performance from Gori Young Boys. And the winning and the losing is a part of cricket, but after lose, you need to go and check out and see where the things are went wrong, and you need to come back strongly when you're going to the next tournament. That's what Gori Young Boys have to do. But here is Torpedo Toscana is definitely is a very good start for them in this particular tournament, winning against one of the top team of South Canada district, Gori Young Boys. So now time for the announcement of the man of the match, which is goes to the man who has performed very well. It goes to the man who's responsible for the dismantling the batting department of Gori Young Boys. It's a Yajnesh, one who bowled a maiden over and picked up 2 wickets. And Yajnesh was judged as the man of the match for his outstanding bowling performance. So my request Yajnesh to go and collect your the man of the match award from our chief guest. Because in this hot condition, you need to have some very cold soft drinks, 7 Up, which is definitely preferable from this kind of condition, hot condition. So I think organizer did a great job having that 7 of 2 liters of soft drinks for the man of the match winner. So Vignesh will going to get that man of the match award. Congratulations for Vignesh. And we are into the next match, SCC Jaipur versus Brothers Jaipur. And for that match, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
I request all the players of Tamanna Adyar and NM Mangalore to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. NM Mangalore ಹಾಗೂ ತಮನ್ನಾ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
I request all the players of NM Mangalore as well as Tamanna Adya to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. NM Mangalore ಹಾಗೂ ತಮನ್ನ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
I request all the players of NM Mangalore and Tamanna Adya to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. I once again call all the players of these two teams. Tamanna Adya ಹಾಗೂ NM Mangalore ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. NM Mangalore ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ NM Mangalore ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಅಲ್ಲಿ ತಮನ್ನ ಅಡಿಯಾರ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ತಮನ್ನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್. Right, the match starts. Match number 5 of this tournament is now going to start. The first match of the second round, NM Mangalore will take over Tavanna Adyar. And news is here from the centre that the captain of NM Mangalore, after won the toss, he elected to field first, and because of that, all the fielders of NM Mangalore are spread out on the field, and the openers of Tavanna Adyar at the crease, and we are just waiting for the first ball of the match. Match number 5 of YFC Trophy Season 2 2023. 2023 is now about to begin between NM Mangalore versus Tamanna Adyar, the first quarterfinal of this tournament. And after this match, the second quarterfinal match will be played between STC Jaipur versus Torpedoes Khan, and that match is now coming up live and exclusively right after this match. So back to this game, and the sporting action is now going to begin. We are just waiting for the first ball of the match. So Vilas and Manoj, the openers for Tamanna Adyar Mint, and the ball is taken by Riaz, who is now starts the fresh proceedings. The first over of the match from the commentator box, and he'll be bowling to right-handed batsman Vilas. 6 overs per side to be played, 2 overs of power play. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 6 ओवर का, तो 2 ओवर का पावर प्ले यहाँ पर खेला जाएगा, और पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता है. The first ball of the first over of the match is now coming up, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए रियाज. तो विलास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, सब कुछ तैयार, और अंपायर्स भी तैयार, खिलाड़ी भी तैयार, और दर्शक भी तैयार. और यहाँ पर पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह, गेंद पैरों पर टकराई. इस बार अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं, नहीं देखना पड़ेगा. अंपायर ने इशारा किया है कि तृतीय अंपायर की मदद यहां पर ली जाए, और देखना यह है कि तृतीय अंपायर, तीसरे अंपायर क्या निर्धार यहां पर देते हैं. काफी करीबी मामला था, रन के लिए दौड़ पड़े थे गेंद को बिना देखे, लेकिन गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, विकेटों पर फेंका गया. वह थ्रो को विकेट कीपर ने कलेक्ट करने के बाद विकेट यहाँ पर चटका दिया, लेकिन बल्लेबाज, देखने वाली बात है कि वो अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके या नहीं जब विकेट यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा उखाड़े गए थे.
not out. The decision came from the third umpire, and everything remains the same for the right-handed batsman. Once again, he is now going to face, और एक बार फिर से वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज इस वक्त रियाज गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद। Oh, terrific! This is an absolutely terrific extra quicker at the last moment, और गेंद पर कुछ कहने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराए और इस तरह से कोई क्षति नहीं। नो डैमेज डन फाइनली फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहे एक बार फिर से बेहतर गेंद अलोंग द कार्पेट। गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे आती हुई, गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। अब नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज स्ट्राइकर की ओर कुछ बढ़े, उन्होंने कुछ कहा कि स्ट्राइकर के बल्लेबाज को कि किस तरह की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी। केवल दो मात्र फील्डर क्षेत्ररक्षक इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनाती है। गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 0 पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए कहना पड़ेगा। और काफ़ी तेज़ हवा मैदान पर गुजर रही है। जिस तरीके से मैदान से धूल इस वक्त उड़ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवे का रुख मैदान की दाई से बाईं और लेग स्टंप से बाहर। सर्टेनली परफेक्ट डिसीजन केम फ्रॉम द अंपायर। सही निर्णय अंपायर इकबाल द्वारा। लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकल रहे थे इस बीच, और सही तरीके से अंपायर ने इकबाल ने इस अपील को नकार दिया। 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ लेग बाई रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस वक्त तमन्ना अडियार के लिए 1 रन बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए बल्लेबाज, और जैसे गेंद ऑफ कटर गेंद थी, बल्ले पर आए गेंद को बल्ले पर हल्के से लेते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया। ये देखते हुए कि शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर जो तैनात है कुछ हद तक पीछे है और 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूर्ण कर चुके। एक बेहतर ओवर रियाज का समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किया। और पहले ओवर के बाद टॉस हारने के बाद एनएम मैंगलोर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतराता हुआ तमन्ना अडियार एक धीमी शुरुआत यहां पर कर चुका है। 2 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। It's 2 without loss after the completion of first over for Tamanna Adyar after being losing the toss and put it to bat by NM Mangalore in the match number 5 of YFC Trophy Season 2 2023, which proudly organized by YFC Bajal Nanthoor Mangalore in association with Little Kingdom Force Bahrain. और जहाँ तक सवाल है ओवर की अगले ओवर का, तो इस वक्त आतिफ के हाथों में गेंद है और शायद वो इस वक्त गेंदबाजी को शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज मनोज। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई दूसरा और अंतिम पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और आतिफ इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, लेकिन ऑफ सबसे काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड नहीं हो सकता है क्योंकि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, सही निर्णय। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान एक खिलाड़ी, बल्कि डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीच एक खिलाड़ी मौजूद थी। सीमा रेखा के पास लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में पावर प्ले के अंतर्गत। और इस बीच गेंदबाज आतिफ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहा, इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और इस बार गेंद को ऑन साइड पर शफल होते हुए उछालना चाहता, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हुई, उन्हें आउट घोषित करे। तो इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका। फर्स्ट विकेट गॉन फॉर देम एंड नाउ दे आर 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर तमन्ना अडियार इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। तो दूसरा
और अंतिम पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी, अपना पहला विकेट यहाँ पर खो चुका है तमन्ना अड्यार। And just talking about the next match, SGC Jaipur will take over Torpedoes Kana. One more good match is now coming up live, right after this match, live exclusively in front of you. और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। दोपहर के 3 बज चुके हैं, धूप का कहर अभी भी मैदान पर जारी और भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक इस वक्त करते हैं। बिल्कुल साफ शुभ्र नीला आकाश, बादलों का नामो निशान नहीं और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है और इस पर्याप्त वातावरण तले एक बेहतरीन प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला यूएफसी ट्रॉफी सीजन 2 2023 की प्रगति शानदार तरीके से होती है। विलक्षण जबार इनको मोड़ दिया स्क्वायर लेग के दिशा में, लॉट मोड़ देना सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, तमन्ना अड्यार के लिए कम से कम 40 का आंकड़ा उन्हें यहां पर पार करना होगा निर्धारित 6 ओवर में। यह गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव करना चाहा ऑफ साइड पर, गेंद गई ऑन साइड पर सीढ़ी में डाउन पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक सवाल है करारे स्ट्रोक्स का लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। लेग स्टंप पर आते हुए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकला है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित इससे पहले कि स्क्वायर लेग फीडर का थ्रू पहुंचे गेंदबाज के हाथों में, बल्लेबाज के पास समय था कि वो अपने क्रीज पर वापस लौट सके और फिर से एक बार आतिफ गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड अप गोज द फिंगर फ्रॉम स्क्वायर लेग अंपायर। इस बार मेरे ख्याल से क्रीज से अपना बैकफुट कुछ हद तक लिफ्ट किया था अंतिम क्षण में स्ट्रोक्स खेलते वक्त, लेकिन स्ट्रोक्स खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर सादिक ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया और इसी के साथ दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है तमन्ना अड्यार का 5 रनों के ऊपर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर तमन्ना अड्यार। They are looking in trouble now. And still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 over का खेल बाकी इस ओवर के बाद। It's 5 for the loss of 2 wicket. And second over has been completed. So 4 overs remaining in their innings in overall calculation और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए रियाज जो कि अपना दूसरा ओवर यहां पर शुरू करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ तमन्ना अड्यार की पारी में। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर रियाज से इस वक्त तैयार। डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइड इज लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर रियाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, विकेट कीपर इस वक्त जस्ट बनाते हैं। आई थिंक इज गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। टॉप पिच पर शायद गेंद टकराई थी और हवा में उछली और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया, विकेटों से आगे आते हुए आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका। हर विकेट के पतन के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ तमन्ना अड्यार के ऊपर और जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर 40 के आंकड़े तक उन्हें पहुंचना होगा या फिर 40 का आंकड़ा पार करना होगा अगर एनएम बेंगलुरु के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर उन्हें दबाव डालना है जब वो गेंदबाजी पर उतरेंगे। तो इस वक्त एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज एनएम बेंगलुरु के बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं कि वो खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर तमन्ना अड्यार और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के गेंदबाज रियाज की गेंदों का, तो रियाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, फ्लेक्स पर टकराने के बाद जब तक गेंद को फील्ड किया जाए बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ
स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और इस बीच गेंदबाज रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, रिवर्स शॉट गेंद को खेला, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना दागा था नॉन स्ट्राइकर से सीधे स्टंप्सों पर, लेकिन निशाना चूकता हुआ मंसूर का थ्रो, जो कि मंसूर का थ्रो चूक चुका है। इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। रन आर हार्ड टू कम बाय, ऐसा कहना पड़ेगा। रनों के लिए संघर्ष इस वक्त करते हुए बल्लेबाज तमन्ना अड्यार के। और फिर से एक बार रियाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर, द बॉल मिसिंग जस्ट ऑफ द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। विद एक्स्ट्रा पेस गेंद निकली थी इस वक्त बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आतिफ, यह गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 3 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके। तीसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा और इस बीच ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की और नहीं निकल रही थी। वाइड की मांग इस वक्त बल्लेबाज ने की, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। तो इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के बाद द प्रॉब्लम्स आर स्टिल continuing for Tamanna Adyar. They managed to score only 8 runs on the board with a run rate of exactly 2.66, 2.67 in fact. The present run rate is now progressing here for them. 3 ओवर का खेल बाकी है और देखते हैं इन 3 ओवर में तमन्ना अड्यार के बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के लिए कौन सी रणनीति बल्लेबाजी पर अपनाते हैं। तो चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं अब मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को बुलाना चाहूंगा माइक्रोफोन पर। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi, and good afternoon, cricket lovers. Very slow start here, progress here for the team Tamanna Adyar. Quite understandable because they're playing against NM Cricketers Mangalore, one of the top bowling department. And so far they are dominating first 3 overs. And here is a 4th over. Starts with the wide as because that one actually is a good delivery for the right-hander batter, but not for the left-hand batter. It's a big problem sometime for the bowlers when it's a left-handed combination. You need to change the line and length straight away, and that's what really happened here for Faisal. He's the man of the match in the previous match because for his outstanding bowling spell. Straight to the answer field and going for the blind run, and this looks like the chance of run out in the non-seconds end, and the ball just missing the stumps in the relegation, so that the batsman survive. Otherwise going to be one more disaster for the team Tamanna Adyar if the wicket number most probably it's the wicket number 5, if wicket number 4 if the run out taken place. And outside line of off stump, batsman going for the drive, extra bounce here from Faisal again. And when the batsman Imran is going for the drive, but after he's just wanted to drive the ball, that ball has got a little bit extra bounce, defeats his bat, and the wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Faisal bows, this time punishable from umpire. This is second time in this over as Faisal a little bit lost his concentration over the line and length, and a white signal by umpire. With that, extra scoreboard now moves on to 11 on the board, 11 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. So very bright and sunny afternoon. It's absolutely hot temperatures recorded, and again went for the reverse sweep, defeats infield. They're looking for the second. Imran is so quick behind the wicket, between the wicket, that's gone. Imran suddenly is going to be a huge wicket. They lost. NM Cricketers Mangalore has got a very big wicket. The Imran is definitely known as one of the danger man. Is trying to steal the second run in relegation. By doing that, I think he couldn't manage to complete that second run. Of course, both the batsmen are looking for the second run. It never looks like it's going to be the problem of his partner. And Alan certainly, after seeing that Imran is coming back for the second, then he is just
started to run, and it's not a problem of the partner, but it's a problem of the judgment of the runs. It's not a good judgment of the run as far as against some excellent fielding department, excellent throwing hands of Mansoor, and it's a very good throw coming from Mansoor straight into the hands of wicketkeeper, and very difficult for Imran to survive from that throw. So it's a huge wicket what the team Tamanna Adyar has lost. The very experienced campaigner Imran is back into pavilion. Safwan, again that ball is missing the trying hands of Firoz. One is follow through, and straight away the batsman Safwan is off the mark with the single. With the single, scoreboard numbers on to 13. 13 for the loss of 4 wicket. So now Faisal bowling round the wicket. Lovely inside out cricketing stroke and lofted down to deep cow point region. Protection has been given. Atif has got a very good arm straight over the bills. The wicketkeeper behind the Sam Sadiq did the rest back to bowler. The slow cricket is going on here. The 14 is a lazy afternoon after that lunch, looks like, and spectators just enjoying the game of cricket here. It's a slow cricket. Ball name, clean him up. This time Faisal got a beauty of the delivery. Absolutely beauty of the delivery for Safwan, and again the one more wicket is back into pavilion of Tamanna Adyar. Really it's a good one there from Faisal in the outstanding career what Faisal has got for NM Cricketers Bangalore, one of the most senior most cricketer, a very decent disciplined cricketer. And if you pick some of the players in underarm cricket, if you see the history of 15-20 years, you will pick only few field players, those who are very disciplined and in the field. And I think the Faisal is a very disciplined cricketer. So far for NM Cricketers Mangalore is only the man who just completes the job and will go into his place, never talk in between, the very silent person. So standing at backward point region, left of our commentary box, left of square leg umpire. Atif, the bowler, starts with the delivery which is a little bit outside the line of off stump, and one more dotted delivery. The scoreboard remains on 14 on the board for the loss of 5 wickets. Atif, right arm round the wicket to Allen. Again, this time one more wicket, stumped out. Sadiq is just waiting for the opportunity to batsman to left the crease, and after he left the crease, Sadiq completes his job. Excellent wicket keeping there from Sadiq. He's looking so good today in this particular tournament. Behind the stumps, he's been excellent. In the previous match also against Gori Young Boys, he's done a great job behind the stumps. Even he's contributed from the bat as well. Played on an important stroke for his team when they played against Jaguar Kudroli. Little correction against Jaguar Kudroli. Of course, Gori Young Boys defeated by Torpedoes Khana. After this match is a big match, and the STC Jaipur versus winner of this game. This time, excellent catch. This is Azhar for you. Is an outstanding fielder, and the judgment is so good in the occasion there from Azhar. Is a fantastic fielder in the outfield. Looks like once it's going to be a maximum when the ball is left the bat off the batter Sharif. Nothing wrong with the stroke, isn't it? Nicely driven, but unfortunately didn't got that much of help from the wind. The wind is not really flowing that much of use in the afternoon, and Azhar is standing in the widest long on. A fantastic catch has been taken in the deep long on. The judgment of the catch is a perfection of that dismissal. So one more wicket is back into pavilion, and the wickets are tumbling here of team Tamanna Adyar against NM Cricketers Mangalore. It's a 14 on the board.
Oh, look at the collection. Absolutely brilliant behind the stump, Sadiq. Of course, he's never left any doubt in the mind in the absence of Mansoor. It never looks again. Mansoor absolutely is one of the top wicket keeper behind the stump. But Sadiq is grabbing that opportunity very well. He's standing behind the stump. Nevertheless, it looks like the Mansoor is keeping behind the stumps. The way that is keeping the wicket is been outstanding. Again, one more single. Again, these are too smart, extra smart there for Atif. And that smartness given opportunity for the batter to get the single in the form of overthrow. And the scoreboard is Muzanto 16 on the board. Of course, Atif's one run out which has gone viral in social media. Maybe that's a tournament of the Moda Bidra, or I don't know, really remember when he was made a run out by catching the throw from the deep fielder. That underarm throw, just like what Mahendra Singh Dhoni is doing, that kind of similar runouts without seeing the stumps, back and throw, hitting the stumps. That's what Atif is trying in this time, and he just missed the opportunity. So one more over completed after completion of over number 5. Struggling here, 17 for the loss of 7 wickets. Team Tamanna Adia, the winner of this match, and will go into play. STC versus Torpedoes Khana will be the next match. Starts with a big wide and chance of run out, and this time Sadiq misses the stumps. The batsman safe. Wide signal umpire. 1+1, 2 more to the total, and with that couple of runs, scoreboard numbers on to 19. These are all bonus run for the team Tamanna Adia. Imran bowling right arm round the wicket. So again coming down to track, chance of run out, and this time Asif Adur too clever, saying that not to hit the stump, but himself coming to the stumps and removes the bails and makes the run out. That completes the formalities of run out. One more wicket is back into pavilion of team Tamanna Adyar, looking in a deep trouble. It's 18 on the board for the loss of wicket number 9. The Prakash is a new batsman in. This time lofted, but the ball will going to land very safely. They're coming back for a second. In comes a throw. Chance of run out. One more wicket is gone. So 9th wicket is back into pavilion of team Tamanna Adyar. Just like the scenario of the match between Gori Young Boys versus Torpedoes Khana, the similar thing is happening here for Tamanna Adyar against team NM Cricketers Mangalore. Nizam is the new batsman in, number 11 batter for team Tamanna Adyar. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ STC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ STC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Imran bowling to the left hand batter. This time went for the reverse sweep. They will going to get a single for that in the form of leg bye. With that leg bye, scoreboard numbers on to 20. 22. And last 2 deliveries left in their innings. Imran right arm over the wicket, balls going for the drive. Looks like it's going to be one more opportunity for Arif to lift his leg by called. 23, last delivery of their innings is coming up. Last
delivery of the innings of Tamanna Adya. They defeated Netravati Shantinagar in their first match. Now playing against NM Cricketers Mangalore. Just a single. So that's it. 6 overs completed, and Tamanna Adya managed to complete their 6 overs quota, but they lost 9 wickets and they scored a 24 runs at the rate of exactly 4 runs per over, and they set a target of 25 to win this match. Exactly the quarter century, 25 required for NM Cricketers Mangalore to qualify for the semi-final of this prestigious cricket tournament, and the name of YFC Trophy Season 2, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor Mangalore in association with the Little Kingdom Phones Bahrain. So we are now into the innings of NM Cricketers Mangalore. We will take a short break here. After a short break, Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 25 the target in 6 overs. They have to score for victory with the required run rate of exactly 4.17 runs per over. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. Meantime, their innings starts now. Within just their innings are going to start. In fact, the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार इमरान, जबकि आरंभिक बल्लेबाज अजीम और रियाज आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर इस वक्त मैदान पर मौजूद, और उनकी पारी की पहली गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज अजीम, और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ 25 रन 25 द टारगेट इन 6 ओवर्स फॉर एनएम मैंगलोर सेट बाय तमन्ना अड्यार, और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, एंड द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, और इस बीच राइट फर्स्ट बॉल पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल, एंड इट्स गॉन no, brilliantly, absolutely brilliant stop made by the deep extra cover fielder. जैसे ही गेंद, और इस बार this could be a chance. Oh, he misses. The throw came too higher, और इस गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज, तो वहां पर बेहतरीन फील्डिंग डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने की। जैसे ही गेंद सीमा रेखा को एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट पॉइंट क्रॉस करे, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए अपनी बाएं हाथ से विद हिज लेफ्ट हैंड गेंद को ढकेला सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 3 रन प्राप्त करने का, 1 रन अपनी टीम को बचाते हुए बेहतरीन फील्डिंग इस लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा, और फिर से एक बार ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, 4 रन बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक घातक गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत है तमन्ना अड्यार के गेंदबाजों को, अगर उन्हें 24 रनों के अंदर एनएम मैंगलोर के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप को अगर रोक कर रखना है। और पहला ओवर
उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर गेंदबाज इस बीच इमरान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली बेटर वन मच स्लोअर लाइन मच स्वीटर डिलीवरी and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. It's 4 without loss in the over number first in progress. गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करते हुए अजीम ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और गेंद कुछ ज़्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित और इसी के साथ पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर अगली गेंद की ओर बढ़ते हुए इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद इस बार चिप किया एंड फील्ड क्लियर करते हुए इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस एंड इट हिटिंग टू द बोर्ड ऑफ एप्पल प्लाई फॉर अ बाउंड्री. तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को इस वक्त कहलाता है लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान. लॉन्ग ऑफ पर थोड़ा सा वाइडर फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन जीतोड़ दौड़ लगाने के बाद गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद सीधे एप्पल प्लाई के बोर्ड पर टकराती हुई सीमा रेखा के एप्पल प्लाई बोर्ड पर टकराती हुई 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक ये गेंद इस बार चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट. एक बार फिर से बल्लेबाज को रन मिलेंगे कम से कम एक. दूसरा रन भी मिल सकता है. दूसरा रन मिल चुका है यहाँ पर और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के. ओवर की समाप्ति. पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतरीन शुरुआत एज फार एज द रिक्वायर्ड रन रेट इज कंसर्न्ड 4.17 रन्स पर ओवर. The required run rate for them when they started their innings and now they scored 10 runs after first over and this is an absolutely perfect start for them chasing the victory target of 25 in 6 overs और 15 रन सिर्फ चाहिए बचे हुए 5 ओवर में और रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त उतर कर आ चुका है ठीक 3 रन प्रति ओवर. meantime I call all the players of STC Jaipur and Topaz Khana to please report to the stage immediately to make a sign in the ऑफिशियल चार्ट फॉर द नेक्स्ट मैच. और जहां तक इस मैच का सवाल है तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ एनएम मैंगलोर का. गेंदबाज प्रकाश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. तो रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. रियाज का जहां तक सवाल है एक परिपूर्ण ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं एनएम मैंगलोर की ओर से और गेंदबाजी वो प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर बल्लेबाजी में भी वो बल्लेबाजी की शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं. ये गेंद नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. इट्स 11 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इनफैक्ट. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त. गेंद को स्वीप करना चाहा रनआउट का खतरा और यहाँ पर अपना आस बिल्कुल छोड़ चुके थे इस वक्त बल्लेबाज रियाज लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स पर नहीं टकराई और बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज अब तक फेंक चुके हैं. एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रकाश गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. तो इस वक्त उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का. 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और इस बीच प्रकाश अपनी अगली गेंद लेकर तैयार रियाज के लिए. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ तो नहीं लेकिन गेंद इस वक्त बढ़ती हुई सीमा रेखा की तरफ गेंद को जब तक रोका जाता पीछे की ओर दौड़ लगाते हुए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. ऐसा कहना पड़ेगा just not get that one right from the middle of the bat at the last moment but he finds the gap as well between just wide of the point field and because of that he gets a couple run for that stroke और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर. दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर अगली गेंद ये गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फ्लश गेंद थी. गेंद को इस वक्त स्वीप करने के प्रयास में झुके और बल्लेबाज ने इतनी निरीक्षा नहीं की थी कि गेंद उनके बल्ले पर आएगी इतनी धीमी गति से. फलस्वरूप गेंद पर कोई स्ट्रोक्स ठीक तरह से खेल नहीं पाए. अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में और लेग बाई का इशारा अंपायर का. लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर. इट्स 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ एनएम मैंगलोर
और प्रकाश अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद धीमी गेंद, हल्के से गेंद को फ्लिक कर दिया ऑफ द टोस, गेंद पहुंचे डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। क्लीन कलेक्शन फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ कुल रन संख्या अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। 17 विदाउट लॉस, 2 ओवर्स कंप्लीटेड। 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन बिना किसी नुकसान के, सिर्फ और सिर्फ 8 रनों की दरकार। बचे हुए 4 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट उतर कर आ चुका है अब 2 रन प्रति ओवर। The required run rate is now comes down to exactly 2 runs per over. 8 required in remaining last 4 overs. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त देखते हैं कौन से गेंदबाज अगला ओवर यहां पर प्रारंभ कर सकते हैं। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही तमन्ना अड्यार को इस मैच में वापस ला सकती है। फिलहाल इस वक्त पलड़ा काफी हद तक भारी लगता हुआ बैंगलोर का। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। और जहाँ तक सवाल है तीसरे ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त तीसरा ओवर शुरू करते हुए इमरान और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बिल्कुल जमीन के सहारे ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, गेंद को छोड़ दिया ये पूर्वानुमान लगाते हुए कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, सही निर्णय। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद इस बार जमीन के सहारे, बेहतर स्ट्रोक, बेहतर फील्डिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, निशाना टकरा चुका है एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। इस बार बेहतर फील्डिंग वहां पर की थी, सिली मिड ऑफ के फील्डर ने एक हाथ से गेंद को फील्ड किया अपने दाईं हाथ से और उसी एक्शन में गेंद को थ्रो किया, गेंद शमशों को बिखेर कर ले जाता हुआ और अंपायर इकबाल ने इशारा किया कि तृतीय अंपायर की इस वक्त मदद ली जाए। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. सो थर्ड अंपायर जस्ट एग्जामिन नाउ और देखते हैं इस वक्त क्या निर्धार वो देते हैं। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दोपहर का वक्त लगभग 3:30 बज चुके हैं, 3:35 यहाँ पर बज चुके हैं। धूप का प्रकोप कुछ हद तक जरूर कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ तक सवाल है गर्मी का, तो गर्मी की तीव्रता जरूर कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर गर्मी का एहसास खिलाड़ी और दर्शक अभी भी करते हुए और कुल मिलाकर इस गर्मी भरे माहौल में ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए YFC ट्रॉफी सीजन 2 2023 के नाम पर। और यहाँ पर तृतीय अंपायर इस वक्त उस रनआउट का परिशीलन यहाँ पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो नॉट आउट, द डिसीजन केम फ्रॉम अंपायर, इट्स अ नॉट आउट एंड द स्कोर बोर्ड स्टेज एट मूविंग अप टू, इन फैक्ट इट्स मूविंग अप टू 18. So in fact no run added to the total and the scoreboard says at 17 for the loss of 1 wicket. Next one, अगली गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त खेल लिया, स्टीयर कर दिया, इस बार रनआउट का खतरा लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त वापिस रन से इस बीच बल्लेबाज नहीं मिलेगा, बल्लेबाज को रन नहीं मिलेगा। और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को चेप किया इनटू द गैप एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ ह्यूज वन, इट्स अ बिगी एंड दैट 6 ब्रिंग्स द इक्वालिटी, स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। सिर्फ और सिर्फ 1 रन की दरकार इस वक्त विजय के लिए एनएम मैंगलोर को। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आजीम के बल्ले से लगता हुआ और इस छक्के के साथ रनों की बराबरी, इक्वालिटी यहां पर हो चुकी है और सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गया। फुल टॉस, टॉप एज, मौका हो सकता है, फील्डर कोई वहां पर नहीं, लंग ऑन से फील्डर दौड़ कर रहा है, कैच छूट चुका है और इस कैच के छूटने के साथ एनएम क्रिकेटर्स इस मैच को जीत चुका है 10 विकेटों से। दे वॉन द मैच हैंडसमली बाय 10 विकेट्स डिफीटिंग तमन्ना अड्यार and with that 10 wickets comprehensive victory, they are through to the next round of this tournament. In fact they are moving to the semi final of this competition. जहां तक सवाल है अगले मैच का, तो द्वितीय क्वार्टर फाइनल मैच, the second quarter final match of this tournament is now going to play between STC जप्पू, श्रीदेवी जप्पू वर्सेस टोरपेडोस खाना। और वो मैच शुरू हो गया यहाँ पर
एक छोटे से अंतराल के बाद, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच अवार्ड गोज टू द bowler who bowled brilliantly in this match, took 4 wickets in this match. Atif adjudged the man of the match, and I request Atif of NM Mangalore, please come on to the dais and receive the man of the match prize from the organizers of his best bowling performance in this match. So next match, the second quarterfinal match is now coming up, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब मैच की शुरुआत होगी. धन्यवाद. थैंक यू. STC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ. I request the captain of STC to please report to the stage immediately for toss. STC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ.
A request to umpires, please enter the ground. Here is everything is ready for the big match, and the quarter-final match will be played between STC Jaipur versus Torpedoes Kana. And coming back to these two teams, absolutely fantastic, and especially Sridevi cricketers after they are getting their first match as a walkover from Brothers Jaipur, and they're without playing a single match there into the quarter-final. And coming back to the Torpedoes Kana and Gori Young Boys, and the one team which is one of the top team in this particular day number one. Unfortunately, they are lost against the Torpedoes Kana's performance, which has been outstanding from the ball and bat and even in the field. And unfortunately, they are back into their out of this tournament. But Torpedoes Kana and Gopi coming back to these two teams, and we are rightly seeing these two teams. Torpedoes Kana, of course, the team which is in a present season, they came into the main folds because of some good players. They came into their playing 11, especially players like Imtiaz, the players like Sharan and even Ashwin Taman, and all the players came into this Torpedoes Kana so that they are started to compete, take a part in the main polls, the Mangalore polls. And that's what the big problem here is, that Torpedoes Kana is not looks like the same Torpedoes Kana what we are watching in the since last 15-20 years. This season they came in with the big players in their side, so that we can't underestimate Torpedoes Kana as well. Even the Sridevi cricketers, just in the naked eye, if you see that their team, they're well balanced team, isn't it? Their teams, they got players like Santosh Senior and Santosh Bantwal, two very good experienced campaigner. Along with that two players, we have one more great player like left-hand batsman Rajesh Ubar, and Prasad Shetty Karkala is the one more, and Sajid is the one more player who is a player need to look for, and even Rizwan came into the playing 11, and even Ashu. So if you pick, you can't see that any player looks like is not having any potential. All we can see the all potential player. We have a Santosh, one more good player in that squad division. So altogether, Gopi, the naked eye, it looks like Sridevi cricketers are the top, the playing 11s they got. But even talking about their performance in this particular tournament, little bit drawback for them is that they're playing their first match in this tournament, and then they're playing against a big team. At the same time, Torpedoes Kana, they're total different. Looks like they're total different after defeating Gori Young Boys. This is a plus point for Gori Young Boys. They're playing their second match, and they almost looks like they're in a almost in a great touch in this particular season as well as in this tournament. So altogether, Gopi, looks like so both the teams and will go into play the good game of cricket in this big quarter final to get the place in the semi-final, and wait and see which team will go into get the place in the semi-final. The opening batters came into middle. Ashraf is in striker's end and Manjunath is in non-striker's end. The first ball, batsman looking for the big drive, and so again, right arm over the wicket balls. Drives, good piece of fielding there by the midfielder. Chance of run out in the strikers, and that is gone. Oh, just like Manjunath is in the previous match also, is without facing a single delivery, Gopi. It looks like I am in a dream or not, Gopi. Is it right? It's not a dream, isn't it? So Manjunath is the same kind of dismissal in the first matches also. The action replay of the previous dismissal of Manjunath is back into pavilion without playing a single delivery. Is back into pavilion, and of course today I think today is a day which is not belongs to Manjunath. Exactly, सतीश. यहाँ पर पिछले मैच में भी मंजुनाथ बिना किसी गेंद का सामना किए हुए रनआउट के रूप में दुर्भाग्यवशात पवेलियन वापस लौट चुके थे, और इस मैच में भी ऐसा ही हुआ. तो दो मैचेस में एक भी गेंद का उन्होंने सामना नहीं किया, और दोनों मैचेस में ऐसा कहना पड़ेगा एक गेंद का सामना करने का भाग्य भी उन्हें नसीब नहीं हुआ. तो यहां पर बिना किसी गेंद का सामना किए हुए लगातार दूसरी बार उनका विकेट गिर चुका है, और लगातार दूसरी बार उनके पारी की पहली गेंद पर टॉर्पेडोज का अपना पहला विकेट खो चुका है. 0 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर. लेकिन गोरी यंगबॉयज के खिलाफ पहली पारी की पहली गेंद पर विकेट गिरने के बाद एक अच्छा कमबैक किया था बल्लेबाजों ने,
टॉर्पेडोज काना के लक्ष्य तक पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि जब वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहला विकेट उनके पारी के पहली गेंद पर गिर जाने के बाद वो किस तरीके का कमबैक यहाँ पर करते हैं. Absolutely, comeback is so important for team. The comeback like this, Gopi. You are talking about the comeback. Here you go. The comeback from the new batsman. The first ball he facing Sinan is played at a tremendous, absolutely tremendous track. What a comeback! What the brave batting performance here from Sinan, facing his first delivery. No problem whatsoever to dispatching the ball into the fence, straight down the ground, over the top of the bowler, and he got a 6 for that. They can drive on straight to the hands of fielder. Oh, what really going on here? Once it looks like Torpedoes Kana is bounce back, but immediately very next ball, Sridevi cricketers came back strongly, and wicket number 2, which is back into pavilion, and Sinan Gopi need to be a little bit sensible, isn't it? Sensible in the sense after hitting the 6, you can't hit every ball for 6 every time. And after getting a 6, some sensible batting is required in that occasion. That is a lacking the stroke of Sinan. After hitting the 6, he wanted to hit one more big shot, but he's not choosing a right delivery, and he's not choosing a right the placement is straight to the hands of the fielder out there in the backward shot cover point region, takes a fielder. And I think it's a little bit of absence of mind and a little bit carelessness stroke there from the batter. बिल्कुल सतीश, छक्का लगाने के बाद सेंसिबल क्रिकेट अपनाना चाहिए था, और यहाँ पर उन्होंने अगली गेंद पर और एक करारा प्रहार करना चाहा, कुछ हद तक जल्दबाजी कर बैठे और इसका भुगतान उन्हें यहाँ पर करना पड़ा अपना विकेट खोने के बाद. तो विकेट पहली गेंद पर गिरा, दूसरी गेंद पर छक्का लगा, तीसरी गेंद पर विकेट गिर चुका. अब देखते हैं चौथी गेंद पर यहाँ पर क्या होता है. Absolutely, the fourth game of wait and see what will going to happen. But he is a sensible batting actually, because he's a sensible batsman. Everybody knows that Imtiaz is caliber, is the man who can handle the pressure at any situation. Being the captain of the side, you know exactly the condition of the game, and you know exactly what kind of batting which is required in this situation. So one more single. Sustan, right arm over the wicket bounce to Ashraf, inside out, getting soaked, but fielder is there in the deep long of Rizwan. There at deep long of fields the ball. So equal result in this first over. The runs which is got Torpedoes Kana, at the same time Sridevi cricketers, they got a wicket what they really wanted. After completion of first over and searching for the right track, it's 8 on the board for the loss of 2 wicket. Just like the start what good young boys has got, Gopi, in the previous match against Torpedoes Kana. They got 8 runs, and after that I think Shivaraj came in, and the maiden over, the bowled by the bowler. So that I think now Torpedoes Kana need to see that you can't do the mistake after getting 8 runs in the first over. At the same time, Sridevi cricketers need to see that after the 8 runs in the first over, they need to get one more good over, and wait and see how well they will go and get that good over. And of course, it's always, every team knows that the importance of the power play, and 2 overs of power play is going to be key for both the teams. For fielding team, they need to restrict the runs, and for the batting team, they need to get some runs in the power play overs. Right arm around the wicket, first ball between the legs, that ball passes of Ashraf. Rizwan is a bowler, is operated from the commentary box end with the jersey number 27, and Ashraf is a man who will going to take the strike. Square leg in front of square and behind the square, one at short mid wicket, mid on, deep long on, the fielder in the onside region. Again the similar kind, identical mirror display of previous delivery. The same line, same length, the same that ball is passing between the legs of Ashraf, and now Captain Imtiaz coming down the track, having some word with his partner Ashraf to what kind of batting required, the kind of line and length, because it's a difficult one whenever the bowler is bowling round the wicket, and round the wicket is always going to be difficult for the right-hander batsman. Again lack of placement, straight to the answer field, a chance of run out, but throw is not enough. Throw is which is not good enough to get the result actually. If it's a direct hit, I think it's gone. Ashraf is struggling to get his home, and the fielder at short mid-wicket region, of course, made his attempt to make the run out, but it's not quite enough there from Prasad to hit the stumps. Ashraf survives. Scoreboard is moving to 9 for the loss of 2 wicket. Again Rizwan, right arm round the wicket. Oh, what a shot! Oh my goodness, it's a 2 squarer,
and that's why he will going to get a single for that. But any cricketing ground, Gopi, it's going to be a maximum. The kind of stroke what Imtiaz has played been outstanding. But sometime the ground in South Canada district we're having, there's not that much of opportunity to score the run behind the wicket and wide of the square of the wicket. Now Santosh coming down the track, having word with the Rizwan, and just saying that why man he bowling that line, because Imtiaz is so good on his legs. He never miss the opportunity when you balls that line. Don't ball that line. Ball a little bit in, almost a ball midland off stump. What maybe the suggestion, but again he's not learning from these mistakes. Rizwan balled outside the line of leg stump, too far, wide call by umpire. And maybe that thinking that Rizwan is trying to get some extra pace in his bowling. He wanted to generate extra pace in his bowling by doing that. The one more wide delivery which is conceded, and 11 on the board. Imtiaz straight away coming to us umpire, having some word with the umpire. I don't know what kind of the words which is exchanged. Again the wide. Oh my goodness, he's struggling after getting a good start. After getting a good start by Rizwan, he's a little bit struggling now. Get his line and length. Maybe something has sometime happened, Gopi, when batsman hitting that much of big shots. Of course, he got a one single for that, but it is will going to kill the confidence of the bowler. And what happening here after that stroke, the bowler really struggling to get his line and length. Rizwan. Balls, better line, straight to the hands of Santosha. Now Santosh is thinking about why not I tried for that direct hit. If he try the hits, he can get the wicket of Imtiaz. And a little bit absence of mind to costing but that's missing the opportunity to get the big wicket in the form of run out. But nothing has happened here as this one again. Balls beautifully balled. Fantastic. Oh, ball is in there. Looks like it's going to be a bat and bad or anything. No bat involved. It's a bad involved. But of course, bowler looks like after operating around the wicket, might be the ball is just missing the leg stump. And ball is in there for a while, but not from the bat. Over completed, umpire. Please note. Over completed. 8 balls bowled. 2 wides in this over. So 13 on the board. After completion of over number 2, it's a 13 on the board. And Gopi, it's not a bad one under this condition. 13 runs in 2 overs. They lost 2 wickets. But might be thinking about that power play over, Gopi. When that power play might be, I think, is more maybe the less of 3 to 4 runs. The 15 to 60 runs are going to be, it's a good one. But 13 means I think the equal battle is on between these two teams. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 2 ओवर में कुछ खास पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाया। हालांकि एक छक्का जरूर लगाया था पहले ओवर में बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद 2 विकेटें गिरे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हुआ और 2 ओवर के बाद सिर्फ 13 रन जोड़ चुका है। लेकिन न कमबैक करने का मौका अभी भी है। 4 ओवर का खेल बाकी है और 4 ओवर में कम से कम 30 से 35 रन अगर बटोरते हैं तो 40 का आंकड़ा वो पार कर जाएंगे। और 40 का आंकड़ा मैं समझता हूँ अंडर दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि बचे हुए 4 ओवर में उन्हें ज्यादा रन बटोरने और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने तो यहाँ पर इम्तियाज की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है। Exactly, Gopi, and Imtiaz is definitely going to be a key man in this match. And Ashu is brought into attack, starts with the delivery, which is going to be a wide +1. That means 2 bonus run for team Torpedoes Khana. It's always we are neglecting this department, that is extras, and definitely the extras will going to play a big role in any matches. And that 2 extras for Torpedoes Khana is bonus. This time driven that one. Ashraf not getting that much of timing behind the stroke. Of course, they're putting a lot of force in that power in that stroke, but not really getting the timing behind the stroke. Only 1 run with that single scored Namozanto. 16 on the board. This time again, Imtiaz rise that one towards the mid-wicket region. Little bit fumble from the fielder and the batsman grabbing the opportunity. The rare misfielding there from Rajesh. Is always a very, very quick fielder, and now it's really looking for some extra quickness in that mid-wicket region, charging to the ball but missing the ball completely from the hands, and a couple of runs here for Imtiaz. Again this time loose delivery, hits at one but placement is not right.
Oh my goodness! This is a really a delivery which is not a wicket-taking delivery, but I think sometimes in cricket is happening. The short pitch delivery all the time in the world for Imtiaz to hit the ball, but he's just choosing a fielder at deep backward square leg. The might be that isn't this look like Gopi? It's an idea that to pick the wickets off Imtiaz bowling a short pitch delivery to invite the batsman to go for the big shot and keeping the batsman in the square leg region. And at the same time, Gopi, maybe that stroke is went against the direction of the wind. Otherwise, that will go into a maximum because the previous stroke when Imtiaz played the behind the wicket, that bad ball went too far across, and now he's picked that one right from the middle of the bat. A lot of power behind the stroke, but still ball is not traveling, and ball is traveling into the hands of the fielder. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अगेंस्ट द विंड इस वक्त खेला था इम्तियाज ने, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रोक पर इस गेंद पर खुलकर स्ट्रोक्स वो खेल सकते हैं, थोड़ा इत्मीनान तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। तो यहाँ पर पहले जल्दबाजी उन्होंने की, जैसे ही गेंद घुमाव ली, गेंद पर पहुंचे, गेंद पर उन्होंने प्रहार तो जरूर किया, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और प्लेसमेंट भी बिल्कुल गलत था, और आखिरकार इम्तियाज का विकेट यहाँ पर गिर चुका। तो निस्संदेह सतीश, इम्तियाज का विकेट गिरना इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Absolutely, Gopi, at one of the big drawback and big fish in the net here for team Sridevi cricketers as first ball. Beautiful. What a delivery that one. Absolutely peach of the delivery. This is a delivery of the tournament, Gopi. If we are not having here that much of a view of any monitor here to see that what kind of delivery it is, but I must tell you, Gopi, this is a wonderful delivery. One of the big weapon what Ashu is loves to ball in his career. The big off cutters is very difficult for any batsman. Technical sound, every technical sound players are miss that ball because of the extra turn, extra deviation of the ball. And the fresh leg, Gopi, Ranjit is quite understandable. He just came in, and it's quite enough for the new fresh legs. Whenever the new batsman coming into the middle, need to eye in for that. He need to play 2-3 deliveries, but without playing that 2-3 deliveries, if you're getting that kind of deliveries, Gopi, it's they're very, very difficult to survive. And one of the fantastic deliveries is bowled by Ashu, and that means he's on hat trick. He's on hat trick. And Torpedoes Khan are looking in trouble now. Yajnesh, one more, not Yajnesh, it is Ashwin Kumar. And Ashwin Kumar is known as one of the good player for Mangalore cricketers. Even playing for HFC Waike Bazaar, playing his first ball. Right arm over the wicket, going for the drive, and ball hitting his leg. Looks like it's going to be leg by SCD. Is leg by call by umpire. One more addition with the addition of their singles covered Namozan to 19. So, after that shackling start, the first ball Ashu bowled wide delivery, but after that he came back very strongly, picking up 2 wickets in this particular over. The wicket of Imtiaz as well as Ranjit is now standing. One is a delivery which is a short pitch one, he got a wicket of Imtiaz, but next one is a beauty from Ashu. Ashu again, this time lofted high and handsome. It's got a huge 6. One of the biggest sixer of the day. Oh, what a magnificent strike there from Ashraf. It's nothing looks like is that much of bad delivery, Gopi. If you compare the wicket of Imtiaz, he got a short pitch delivery. Still, he couldn't manage to get the distance. But this time, fantastic delivery, Gopi. This is the beauty of cricket sometimes, isn't it? Sometimes you won't get the wicket for the good deliveries. Sometimes you will get the punishment for the good deliveries. This is almost outside the line of off time. Big incoming delivery. But Ashraf has played a magnificent stroke. Across the line of delivery, shuffled across and swinging that one. Because of that, the bat speed, Gopi, that ball went that much off. It's absolutely huge 6. Maybe the 55 to 60 meter 6 here. एग्जैक्टली सतीश, निस्संदेह बेहतर स्ट्रोक, और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। कभी कभी खराब गेंद पर विकेट गिर जाता है, तो कभी कभी अच्छी गेंद पर छक्का लग जाता है। तो यहाँ पर खेला था, he just picked that one right from the spot and lofted that one in a style over deep mid wicket, और स्ट्रोक में काफी दम था, तो इस वजह से गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी। और इम्तियाज का जो स्ट्रोक था सतीश, कंप्लीटली मिसक्यूडेड, और वहां पर वो फील्डर को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। गॉन मेनी माइल्स फ्रॉम द फेंस फॉर अ ह्यूज वन। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर में कुछ हद तक बढ़ोतरी आ चुकी है उस छक्के के बदल। चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार स्टीयर किया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची इस वक्त शॉट थर्ड मैन की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। तो जहां तक सवाल है इस वक्त, ये दोनों बल्लेबाज
इस वक्त एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए और लंबे कद के गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर नॉट क्वाइट मिड लेकिन ही गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल एंड दिस टाइम ही लॉस्ट हिज विकेट। तो इस वक्त अंडराम थ्रो फेंका था लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि गेंद स्टंप्सों पर टकराएगी, तो यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। हालांकि पांचवा विकेट जरूर गिर चुका है लेकिन रन की गति जो कि अच्छी खासी यहाँ पर हो चुकी है, 26 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा ये विकेट गिर चुका है जरूर लेकिन यहाँ पर इस गेंद पर विकेट गिरना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ भी हो विकेट यहाँ पर गिर चुका है और एक विकेट इस वक्त खो चुका है टॉर्पेडोज का ना। तो जैसा कि हमने फरमाया था 40 रनों के आंकड़े को कम से कम यहाँ पर पार करना होगा टॉर्पेडोज को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो अब तक के हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार कर जाएगा। लेकिन अगर द्वितीयार्ध में श्रीदेवी जप्पू के गेंदबाज बाउंस बैक करते हैं, कम बैक करते हैं गेंदबाजी में, तो टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाजों को कम से कम स्कोर पर रोक कर रख सकते हैं। देखते हैं इस द्वितीयार्ध में क्या होता है। और इस बीच काफी लंबी बातचीत यहाँ पर जारी, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है अकरम, एक और अच्छे स्ट्राइकर अच्छे आक्रामक बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। काफी अनुभवी बल्लेबाज है टॉर्पेडोज काना की ओर से इस वक्त मौजूद नॉन स्ट्राइकर इन पर। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए अश्विन कुमार जो कि सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी रिजवान इस वक्त शुरू कर चुके हैं अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए 6 से 7 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को बोलना चाहा इस वक्त वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह बल्ले और गेंद के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार ताइना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को खेला शॉट थर्ड मैन पर मिसफील्ड इस वक्त शॉट गली पर कहना पड़ेगा लेकिन रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स फॉर 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अश्विन कुमार सामना करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ कटर, लगभग जमीन के सहारे आए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। तो धीरे धीरे अपना सही रिदम लय इस वक्त प्राप्त करते हुए गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अश्विन के लिए स्वीप करना शेयर किया इस वक्त गेंद को अंतिम क्षण में गेंद की गति को पहचानते हुए गेंद की लाइन को पहचानते हुए गली पर डीप गली पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एक गेंद अभी भी
सो वेलकम बैक वंस अगेन। और 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 29 रन बन चुके हैं। 5वां ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ और 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट हाशु की गेंद, ये गेंद टिप गया। दिस इज एन ह्यूज वन, इट्स गॉन मेनी माइल्स, इट्स अ बिगी। He just picked that one right from the spot and lofted that one in a style of a deep mid wicket fence. Effortlessly played. और ये छक्का जो अक्रम के बल्ले से लग चुका है, और खासकर अक्रम का जहां तक सवाल है, ऐसे करारे स्ट्रोक्स के लिए वो जाने जाते हैं। और यहां पर गेंद को राइट फ्रॉम द स्पॉट पिक करते हुए उछाल दिया लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक। फुल टॉस अगेन, जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं है और 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिला। तो स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। इस बार ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया अश्विन ने डेलिकेट चतुरता के साथ। और चतुर क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए अश्विन, वो जानते हैं जितना ज्यादा स्ट्राइक अकरम को मिलेगा उतने ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर अकरम को वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन गेंद को मोड़ने के बाद 10 शॉट्स को लेकर दिशा में अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। अशु की गेंद, ये गेंद अकरम के लिए। एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहा, इस बार गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो अकरम एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं और कुल रन संख्या बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर। इट्स 39 नाउ for the loss of 5 wickets in the over number 4 in progress। इस बीच आशु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंद को उछालना चाहा। अकरम ने इस बार फिर से चूके और लेग बाई के रूप में 1 रन उनके खाते में जुट चुका। 40 रन बन चुके हैं। कुल मिलाकर 5वां ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। तो पहली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक कर चुके हैं आशु। इस वक्त लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा। इट्स 41 now for the loss of 5 विकेट एंड दिस इज द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर प्रगति करता हुआ, हालांकि 5 विकेट वो जरूर खो चुका है लेकिन रन की गति काफी बेहतर। टॉर्पेडोज का 41 रन वो जोड़ चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार आशु। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और आशु की गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा। परिवर्तन के दौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। रन दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और कुल मिलाकर 5वां ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका। 5 ओवर्स कंप्लीटेड, इट्स 42 और 37 रन की गति बेहतर। 5 विकेट हालांकि जल्दी खो चुका था लेकिन उसके बाद कुछ छक्के गिरे तो इस वक्त रन की गति बेहतर है। अंतिम ओवर में 10 से 12 रन भी बटोर लेता है टॉर्पेडोज का ना, तो निस्संदेह यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव स्कोर कहलाएगा इन हालातों में। Exactly, Gopi. It's going to be a competitive. Already it's a competitive total. 42 in 5 overs is a good score for Torpedoes Ghana. It's really happening when you are having a very good batting department. They're not really bothered about how many wickets are falling, but they only thinking about how to accelerate the run rate. Each and every batsman came into middle. Especially this man is changing the complexion of this match. Completion of this match is none other than Akram. The 2 sixes which is came from the over of Ashu, and it's got costly, Gopi. In this particular situation condition, hitting a 6 is so difficult, and batting 2 sixes in this innings means it's a lot for Torpedoes Ghana. बिल्कुल सतीश, इन हालातों में 2 छक्के प्रदान करना निश्चय उनके टीम के लिए काफी भारी पड़ सकता है इस वक्त श्रीदेवी जप्पू के लिए जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। देखते हैं क्या होता है। ये गेंद इस बार अकरम के लिए बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विक कर रहा है और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। प्लम इन फ्रंट घोषित और एक्स्ट्रा क्विकर गेंद काफी तेजी के साथ अंदर की ओर। अकरम थोड़े से स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को उछालना चाहते थे ऑफ साइड पर, चूके गेंद उनके पैर पर टकराया, उनका पैर बिल्कुल मिड स्टंप के सामने रहा और इसी के साथ ये विकेट नंबर 6 यहाँ पर गिर चुका है। तो यहाँ पर 43 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स विद जस्ट 4 balls टू गो इन द रेस। 4 गेंदें इस वक्त बाकी है, 4 विकेटें सुरक्षित। अकरम की छोटी पारी पर, छोटी मगर बेहतर पारी पर यहाँ पर पर्दा गिर चुका है। जुनैद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अपनी पहली गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज रिजवान गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
ये गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर. इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 in progress, 16 the last in progress in their innings. Early गेंद ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्विप कर दिया खूबसूरती के साथ. Intelligently played. In fact, they come back for the second and this time they made it comfortably. डिलिकेटली प्लेड. हल्के से गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था खूबसूरती के साथ. ये भापते हुए कि डीप स्क्वायर लेग फील्डर काफी पीछे है और जब तक तेजी के साथ फील्डर दौड़ कर आया गेंद पर लप के गेंद को थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तेजी के साथ दूसरा रन यशस्वी तम्मा पूरा कर चुके थे. बेहतरीन चतुर क्रिकेट अपनाते हुए इस गेंद पर अश्विन अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. रिजवान एक बार फिर से ये गेंद नेक्स्ट पर आती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का. 1+1 2 रन वंस अगेन एडेड टू द टोटल. तो अभी भी अपने सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए गेंदबाज रिजवान और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर. इट्स 49 ना फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था इन हाथों पर था विकेट. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट की दिशा में 1 रन मिलेगा. फिर से दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े वहां पर कुछ हद तक मिसफील्ड और 2 रन इस वक्त मिल चुका है और इन 2 रनों के साथ द 50 कम्स अप फॉर टॉर्पेडोज. 51 now for the loss of 6 wicket in the over number 6th and the last in progress in their innings. 2 balls remaining in their innings और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए रिजवान ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट. इनफैक्ट ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट. इट माइट बीन कंसिडर्ड ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस एंड डीप बैक ऑन थर्ड बैन. काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को वहां पर फील्ड करे फील्डर सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास 2 रन प्राप्त करने के बाद कह सकते हैं जस्ट रॉक्ड ऑन द बैक फुट एंड पंच्ड इट अवे थ्रू द ऑफसाइड स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड ही गेट्स अ कपल फॉर दैट स्ट्रोक. 53 नाउ. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अंतिम गेंद लेकर रिजवान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा और गेंद सीधे पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में और आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ. सो द इनिंग्स इज अप एंड दे आर स्टिपुलेटेड 6 overs आर कंप्लीटेड एंड दे मैनेज टू स्कोर 54 runs for losing 7 wickets in the stipulated 6 overs and they set a huge target in front of 55 now for Sridevi Jappu. So Sridevi Jappu have to score 55 runs in the stipulated 30-60 overs. That means in their stipulated 6 overs they have to score with a required run rate of exactly 9.17 runs per over. They have to score 55 in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते या नहीं. तो एक बेहतर बल्लेबाज यहाँ पर की और देखना यह है कि अब उनके गेंदबाज क्या श्रीदेवी जप्पू के बल्लेबाजों को 55 रन बनाने से रोक पाते हैं ये या नहीं और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब श्रीदेवी जप्पू की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. Welcome back. And 54 is the total score of Torpedoes Ghana. 55 to win this match. 9 runs per over they scored, and just above 9 runs per over is the required run rate for the team
Sridevi cricketers Japo. And coming back to this match, Gopi, huge total. The first time it's in this particular tournament is the highest total score, which is scored by Torpedoes Khan against Sridevi cricketers Japo. And if team Sridevi STC Japo wanted to win the match, Gopi, of course they got some good batting department, no doubt at all. Just we are talking about Santosh and of course Sajid is a man. He came into middle to very good, fantastic batter as far as chasing this total is concerned. And beyond that, Gopi, another two three good big names like Deepak, one more very good left-hand batter, and they got some batters like Rizwan, and at the same time they got some tremendous strikers in their team like Rajesh Ubar. And all that we can see that's a big names, but converting that big names into performance is so important here for Sridevi to win this match. And Sharan will going to start the first ball, right on the money, right on the target. This time Santosh wants a single. Sajid is also wants a run there, but behind the wicket always it's a very risky factor. If you're going for the run, they need to handle the risk, and that's why both the batsmen are not looking for that risk run. And the first ball, which is dotted one, there's no chance at all for any run. Very interesting to see that in a present cricket, Gopi, the players that are playing for the same team in the last season, few seasons, now in this particular season they're playing each other and against each other. And the first ball, next ball, and Santosh looking for the big swing of the bat. He got contact with the bat, not a big part of the bat. It's a little bit small part of the bat is involved, so that Santosh managed to pick the single. So with that single, they started their journey. The journey in the sense for Sridevi cricketers, it's a huge journey. They need to travel the huge one. The 55 is not a big, easy total, especially when you're coming to this cricket ground, when there is no opportunity to score the run behind the wicket and just in front of the wickets. They need to get the runs. That's a big problem here for chasing team. 55 always going to big total, but not impossible, as Sajid will going to face his first delivery. This time, what we're talking about in this particular ground, it's not so easy. What a great shot that one there from Sajid, but what a great field set here by the captain. It's very important, isn't it? If you see that, Gopi, the two fielders outside the circle, only on the onside region. There is no fielder in the offside region. They left the gap. They let the gap. Their not protection has been given in the deep. That's why Sajid is misjudging. He thought it might be a deep long on and deep long off. It might be the safe stroke to play in the square leg region. But unfortunately, he got the fielder for the fantastic cricketing stroke. This is what about cricket, Gopi. That the game plan is so important. The strategy, the very important. You need to see the strength of the batsman. As per the strength of the batsman, you need to set the field. At the same time, you need to bowl as per your field. And he bowled a very good delivery, which is he bowled as per field. I got a big fish in the net. एग्जैक्टली सतीश, जिस तरीके का फील्डिंग सेटिंग किया था इस वक्त कप्तान ने, उसी तरीके की गेंदबाजी भी की है. दोनों फील्डर को ऑन साइड पर तैनात किया था. वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप इन विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके आना पड़ेगा. और यहाँ पर शरण ने भी उसी तरीके की गेंदबाजी की. मिडल लेग स्टंप पर गेंदबाजी की. बल्लेबाज को उकसाया कि वो ऑन साइड पर करारे प्रहार करें, और यहाँ पर उस लालच में आ गए. हालांकि थोड़ी सी टॉस अप की थी गेंद को, तो अंतिम क्षण में गेंद इस लालच में इस गेंद पर आ गए बल्लेबाज साजिद, और उन्होंने करारा प्रहार तो किया, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर लपक ले गए. साजिद का विकेट गिर चुका है और निस्संदेह इस विकेट के गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव अब श्रीदेवी जप्पू के ऊपर दिखाई देता हुआ. Absolutely, Gopi. Losing Sajid too early, it's definitely going to be put Sridevi cricketers into back foot again. Outside run off time, going to be a bonus run here for Sridevi cricketers. And one more thing, Gopi, about that dismissal is that stroke which is played in a flatter version. And that's why the ball is traveled into the hands of fielder. If he floated one a little bit in the air, just like what Akram is there, the 2 sixers is high stroking, high big strokes, and that will help helping that stroke to get the distance. Because of Sajid, they played it in a flatter version. He managed to get the fielder. He didn't manage to get distance what he's looking for. First run came here for Deepak after the run of off time. Not convincing cricketing stroke, but he managed to get a single down to backward point region, and he's off the mark with a single. Deepak is also a very good striker of the ball, and especially the very good striker in the onside region. And I think now after losing Sajid, is all up to these two batsmen.
these two batsmen to handle the pressure to get some score in this power play over. So far, Sharan is dominating. Right now, over the wicket. This time, Santosh lofted and lofted into the vacant area ball, running down to deep mid wicket region. One of the fielder will go in to cut it off, but one of the fielder will go in to cut it off, but three of the fielders fails to cut it off. It's a total misjudgment. What could be a certain couple of runs, Gopi, and Santosh has got a boundary for that. I think it's a total misjudgment. The three fielders behind the ball, and at last, of course, three of them always almost they reached to that ball, but 1-3-1 was misunderstanding that one of the fielder will going to take the ball, but every three fielders also miss the ball. That's all happening. It's a little bit comedy of error. Last one ball remaining in this over, 7 runs, which is total score, and that will going to give a little bit confidence for Santosh. But he's knowingly hit that one. Not a safe shot, but a safe shot because there is no fielder in the square leg. Just like after Sajid is got out in the square leg, after this dismissal of Sajid, that same fielder went towards a deep long off region. So that Santosh thought it might be a safe stroke to play in the mid wicket. There is no fielder. Sharan again, bowling with a short run up. Alright, now over the wicket bounced. Again, beautifully bowled. Perfect one. Ashraf behind the wicket is so quick. First over completed, and after completion of first over, chasing 55 to win this match, and 7 on the board. And Gopi, coming back to this match, 5 overs remaining. That means 30 balls remaining. 7 deducted from 54 means 48 more runs required for the victory. And 5 overs remaining. What do you will think? What you will going to do here? Whether this over, the power play, the last over of the power play, I think the 15 to 20 runs in this over will going to open the gate for Sridevi cricketers. If it is not, it will going to close the gate for Sridevi cricketers. बिल्कुल सतीश, इस वक्त डोमिनेट करना है गेंदबाजों के ऊपर, और खासकर संतोष जैसे बल्लेबाज जब क्रीज पर मौजूद हो तो डोमिनेशन करना आसान हो जाता है. अगर संतोष एक बार अपना सही रिदम लय प्राप्त कर लेते हैं तो निस्संदेह गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं. तो यहाँ पर इस ओवर में जैसा कि आपने फरमाया कम से कम 15 रन इस ओवर में बनते हैं, तो यहाँ पर श्रीदेवी जप्पू पावर प्ले में एक बेहतर स्कोर खड़ा कर सकता है. और यहाँ पर 7 रन बन चुके, एक बेहतर ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है शरण का, और 48 रन रिक्वायर्ड रन रेट है 9.60 रन पर ओवर. 48 दे हैव टू स्कोर इन रिमेनिंग 30 डिलीवरीज, दैट मींस इन रिमेनिंग 5 ओवर्स. और जहाँ तक कम बैक करना है तो सबसे पहले इस बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच के 18 को फासले को मिटाना होगा अगले चंद ओवर में. और देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी की रणनीति यहाँ पर अपनाते हैं आने वाले ओवर्स में, इस ओवर में और आने वाले ओवर्स में श्रीदेवी जप्पू के बल्लेबाज. Exactly, Gopi. They reduce the difference between the run and ball, the 18 difference between the run and ball. That's going to be a huge difference, and each and every dot ball, that difference going larger and larger. That's why it's going to be a big problem, and that's why it's a big problem for Sridevi cricketers Japu, that they need not to play the dotted delivery. At least one run in and one for ball, and middle of that they need to get some big shot. But again, the second dotted delivery of this over, wasting your deliveries in the power play over means you're out of the track. You're putting yourself into trouble. So Vednesh been outstanding in this tournament. In the previous match also, he bowled brilliantly, and he becomes the man of the match for his outstanding bowling spell of 2 overs of 4 runs and 3 wickets. Again, Ednesha left arm over the wicket. Balls a wide ball called by umpire. It's going to be a bonus run, first run in this over, and scoreboard numbers on to 8 on the board. 8 means another 47 more runs required for the victory in remaining 28 deliveries. Again, Ednesh bowling with a short run off. Left arm over the wicket balls. This time Deepak drives that one. Lack of placement. Little bit misfield there by Ranjit, charging into the ball, missing the ball completely from his hand, but no problem whatsoever as far as protection has been given in the deep wideish long on region. Batsman managed to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 9 on the board for the loss of a wicket. Wicket of Sajid is back into pebble in the first over. When Sajid swings that one, everyone thought it might go into be a mighty stroke, but unfortunately he finds the fielder in the deep backward square leg region. After that, only one boundary which is scored, that is came from the bat of Santosh. Now wait and see how Santosh will go into contribute. He's a danger man as far as Torpedoes Khana is concerned. This man can change the complexion of this match. Again, balls outside, none of off time driven, lack of placement, straight to the hands of Ranjit. So good in that region now. Again, because of that, there is no question of any run. Score remains on 8 on the board. So far I think Yadnesh is doing a very good job
And so far he's bowled a very tidy line and length. Santosh is trying his level best to get some good big score in this over. This time he lofted, top edge. Ranjit is the man will going to take the catch. Huge wicket here for Tapadoskana. And because of the wicket of Santosh, I think the half of the opportunity which is really going back along with Santosh. And hope of winning this match really now going along with the Santosh of Sridevi Cricketers because Sridevi Cricketers Jaipur because Santosh is really not getting that one from the middle of the batter. Intention is to get that one down to deep long of region, but he didn't got enough bat onto that. Unfortunately, he's back into pavilion. And will it going to be any opportunity, Gopi? Do you think that it's going to be any opportunity now for Sridevi Cricketers after losing Santosh? I think Santosh, everybody knows this capability, can clear any ground. But losing him in this situation, Gopi, Sridevi Cricketers are looking in a deep trouble. Deep trouble. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इस वक्त। अगर दिलेर भरी बल्लेबाजी, ब्रेव बैटिंग इस वक्त दिखाते हैं तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम 10 से 12 रन प्रति ओवर के औसत से रन्स बनाने अगले ओवर में। और जहाँ तक सवाल है चौके और छक्कों का, तो चंद चौके और छक्के इस वक्त लगाने होंगे श्रीदेवी जयपुर के बल्लेबाजों को कमबैक करने के लिए इस मैच में। और राजेश उबर का यहाँ पर आगमन हो चुका है। राजेश एक और बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं श्रीदेवी जयपुर की ओर से। देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। Absolutely, Gopi. Wait and see how well they're going to come back. But a fantastic over. What a tournament is having Agnesh. He's a really man with the golden hand. The previous match also is performed beautifully. Now it's not so easy, Gopi, to come and bowl in the power play over against a batter like Deepak, the batter like Santosh and batter like Rajesh is in front of him. I think Agnesh definitely going to be the future bowler. And why not? He's handled the pressure very well to bowling in the power play overs. And restricting the runs of Sridevi Cricketers. Now they are in more trouble. 2 overs completed, only 9 on the board. That means a long way to go. Another 46 runs required for the victory, and 46 required in 4 overs. And it's going to be a huge one. 11.50 runs per over is the required run rate now. When you are passing that 10 overs, over 10 runs per over, then you are in a tremendous pressure. If you wanted to release the pressure, then needed 1 or 2 big shots in quick times. And otherwise, it's very difficult for Sridevi Cricketers to win this match. Sharan brought into attack. He's been outstanding in his first over. Of course, considered on boundary, but still he managed to pull the things back by picking a wicket off Sajid. This is definitely a huge wicket for Sharan. Now he's bowling second over and third over of the innings of Sridevi Cricketers. Again, Deepak steering it down to third man region. Sharan knows that what is the potential of Deepak. He need not bowl to that line which is the mid-line leg stump. That's why he's bowling outside the line of off stump. He's not really bowling to the slot. You know exactly if he bowls in the slot, Deepak will go into deliver into the fence, and that's why he's not bowling that line again. Agnesh bowls. Deepak drives that one down to deep long off region, but protection has been given in the deep long off region. Akrams, the fieldsman there in the deep long off, will go into fields the ball neatly, and just a single for Deepak. With the single score numbers on to 11 on the board for the loss of 1 wicket, the wicket of 2 wickets in fact, the wicket of Santosh as well as Sajid. 2 big yes are back into pavilion of Sridevi Cricketers Jaipur. Sharan. Balls this time. Oh, he's lost his bat, but he will go to get a runs for that. Good piece of fielding there by the fielder Manjunath. And oh my goodness, the broken handle. It's a broken handle. And is definitely one of the big entertainer as far as cricket is concerned, Gopi. Not only in cricket field, after finishing cricket, watching him dancing in the presentation stages, enjoying his game. This is really good to see, isn't it, Gopi? The cricket is not all about the serious game. Of course, it's a serious game, but after that, winning is enjoyment is so important. Enjoying the game is so important. But he is the rare fellows in cricket who enjoy within the field, even outside the field. And now he's just after changing his bat, and wait and see the handle of the bat will going to give any opportunity for the team Sridevi Cricketers to get back into this game. Again, nicely bowled. Again, he's not really bowling to the strength of the batsman. Sharan bowls outside line of off time. Deepak wanted to drag that one outside the line of off time, but not really getting that one from the middle of the bat. And there is no chance for any run
for team Sridevi Cricketers Jaipur. Sharan bowls. Bowler's back drive and powerfully driven that one. Thus that off stop by Sharan on his follow throw. The opportunity of caught and ball. The fact that Deepak hits that one very firmly back to bowler and he drops the catch and they got a single for that. With their single score, moves on to 13 on the board for the loss of 2 wickets. Sharan again. Bowls this time. Rajesh drives that one. And Ashwin Taman, the fieldsman there, the deep long on will go in to collect that one. Returns the ball into the hands of wicketkeeper. 14 on the board. Over number 3 completed. After completion of over number 3, searching for the right track. It's a 14 on the board. And 3 overs completed. Gopi, 3 overs remaining. Looks like now in a 3 overs, 18 balls. They need to travel along. 41 runs required for the victory in a 3 overs. And I think, Gopi, almost all over. But one chance here for the Sridevi Cricketers Jaipur is that they need to come back immediately, isn't it? Very next over, they need to get over of 20 plus runs, then only the opportunity for the team to come back to this match. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त कम बैक करना है तो सिर्फ चौके या छक्के ही उन्हें लगाने होंगे और ऐसा कहना पड़ेगा ये एक अंतिम अवकाश उनके सामने. द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ श्रीदेवी जयपुर. तो इस बीच नया ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ और पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद राजेश के लिए. गेंद को उछालना चाहा लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका. रन इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक सवाल है हर गेंद के साथ आस्किंग रन रेट यहां पर बढ़ता हुआ 15 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर. एक्जैक्टली 40 रन मोर रिक्वायर्ड. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला. गेंद पहुंची लॉन पर. फील्डर वहां पर मौजूद. नॉट मोर देन अ सिंगल. जब तक अश्विन गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर. 16 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. स्लोअर प्रोग्रेसिंग नाउ फॉर श्रीदेवी जयपुर और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट. गॉन टू फॉर अ क्विक सिंगल. दिस कुड बी इन ट्रबल. दिस कुड बी इन ट्रबल एंड अप गोस द फिंगर फ्रॉम स्क्वायर लेग अंपायर. Deepak the man dismissed it, just gone through for an unnecessary single and because of that he lost his wicket. तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ साथ ऐसा कहना पड़ेगा श्रीदेवी जयपुर के ऊपर दबाव और बढ़ चुका है. तो 39 रन चाहिए विजय के लिए. 39 more runs now they have to score for victory in remaining 15 deliveries. और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब श्रीदेवी जयपुर को इस मैच में विजय दिला सकते हैं. लगभग 2.5 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त रन बना रहे. 39 बचे हुए 15 गेंदों पर 2.5 रन प्रति गेंद के औसत से रन बना रहे. और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए तौसीफ जो कि एक और बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है श्रीदेवी जयपुर की ओर से सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाज यज्ञेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद. ये गेंद उछालना चाह चुके बेहतरीन गेंदबाजी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम यज्ञेश और उनके लिए ये श्रृंखला एक सफल श्रृंखला साबित होती हुई इस वक्त. और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंद का तो इस ओवर में 2 गेंदें अभी भी बाकी है और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज विघ्नेश तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तौसीफ के लिए ये गेंद. इस बार गेंद को उछालना चाह चुके एक बार फिर से और यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद की थी. इस धीमेपन को समझ नहीं पाया और गेंद टिप्पा खाने के बाद लगभग नीचे रहते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त. अगली गेंद के लिए तैयार विघ्नेश. ये गेंद चूके विकेट कीपर चूके लेकिन रन इस वक्त नहीं मिलेगा. तो 3 लगातार डॉट गेंदें 4 ओवर की समाप्ति. द प्रॉब्लम्स आर नाउ स्टिल कंटिन्यूइंग फॉर Sridevi Cricketers Jaipur. 16 runs they managed to score for losing 3 wickets after completion of 4 overs. 39 more runs they have to score for victory in remaining 2 overs and the required run rate is now gone up to exactly 19.50 runs per over. तो 2 ओवर का खेल अब बाकी और इस वक्त 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त 5वां ओवर प्रारंभ करते हुए और राजेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. तो जैसा कि हमने पहले भी फरमाया है सिर्फ चौके या छक्के ही अब
श्रीदेवी जप्पू को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और यहाँ पर पांचवा ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज रंजीत जो कि इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश के लिए 39 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज, एब्सोल्युटली मिरेकल बैटिंग रिक्वायर्ड फॉर श्रीदेवी जप्पू टू गेट बैक इनटू दिस मैच। और ओवर की पहली गेंद रंजीत दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार उछाला मिड विकेट पर, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी और डीप मिड विकेट पर गेंद को लपक लिया गया। इस वक्त राजेश ने गेंद को उछाला था, लेकिन काफी उम्दा, काफी ऊंचा, और गेंद हवा में डोलती हुई सीधे पहुंची डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 11 गेंदें बाकी, 39 रन और चाहिए विजय के लिए। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब श्रीदेवी क्रिकेटर्स को इस मैच में वापस ला सकती है। और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आते हुए नए बल्लेबाज प्रसाद। और जहां तक सवाल है प्रसाद का, तो प्रसाद इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज रंजीत की ओवर की अगली गेंद का। 11 गेंदें बाकी, 39 रन चाहिए। रंजीत दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद प्रसाद के लिए, गेंद को उछाला हवे में, फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड। एक और विकेट का पतन हो चुका है। गोल्डन डक के रूप में प्रसाद का विकेट यहां पर गिर चुका है पहली गेंद पर। और रंजीत इस ओवर में अपना दूसरा विकेट प्राप्त कर चुके हैं। 10 गेंदें बाकी, 39 रन यहां पर बन चुके हैं। और अब ऐसा कहना पड़ेगा श्रीदेवी जप्पू की पारी की नैया जो कि बीच मझधार में जूझती हुई और सही तट इस वक्त काफी दूर नजर आता हुआ। और यहाँ पर 10 गेंद पर 39 रन बनाने हैं, तो विजय की आशाएं इस वक्त काफी हद तक कम हो चुकी है उनके लिए। तो इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। रिजवान इस वक्त सामना करते हुए एक और बेहतर बल्लेबाज श्रीदेवी जप्पू की ओर से। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर। बेहतर फील्डिंग वहां पर, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस फॉर श्रीदेवी जप्पू। और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद। ये गेंद इस बार उछाला स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन फील्डर काफी पीछे डीप कवर पॉइंट पर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 18 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 8 balls left in their innings and 37 more runs now they have to score for victory. Is bad, swept away fine by Rizwan, but not more than a single. In fact, they're looking for the second and get it comfortably. वहाँ पर कुछ हद तक मिसफील्ड होती हुई फील्डर द्वारा 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। It's 20 for the loss of 6 wickets and 35 more runs now they have to score for victory in remaining 7 balls. और इस ओवर में अंतिम बार रंजीत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस, ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट फॉर अ रन। और ऐसे के साथ ओवर समाप्त हो चुका रंजीत का, सफल ओवर उनका। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम अवकाश। द लास्ट चांस इन front of the batsmen of Sridevi Jappu. 6 sixes almost required in remaining last 60 deliveries. That means 35 runs required in the last over. और ऐसा करना पड़ेगा। The last chance, अंतिम अवकाश इस वक्त श्रीदेवी जप्पू के सामने इस अंतिम ओवर में। और अगले 2 या 3 गेंदों में ऐसा कहना पड़ेगा श्रीदेवी जप्पू का भविष्य यहाँ पर निर्धार हो जाएगा। और मैच निर्धारित ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। अश्विन अंतिम ओवर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस वक्त कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। डॉट गेंद, 5 गेंदें 35 रन। लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका है इस वक्त श्रीदेवी जप्पू के लिए। अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते इन बचे हुए 5 गेंदों में। अश्विन अगली गेंद उछालना चाहा चूंकि, और इस बीच विकेट कीपर ने अपना काम विकेटों के पीछे किया तमाम। और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। एंड नाउ just फॉर्मेलिटीज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच।
35 runs required in remaining just 4 balls. बिल्कुल एक तरफा मैच और ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इस मैच में टोरपेडोस काना के खिलाड़ियों ने दिया, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में और फील्डिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया। फलस्वरूप इन तीनों डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन देने की बदौलत यहाँ पर उनकी टीम विजय के द्वार पर आकर इस वक्त रुक चुका है। और इस बीच अश्विन नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। संतोष नए बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद। शरण वहां पर फील्डर एकमात्र बल्लेबाज को मिलेगा। शरण का थ्रो पहुंचता हुआ स्ट्राइकर एंड पर। इट्स 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 wickets. Ashwin bowls. पैरों पर टकराई. Up goes the finger from umpire. One more wicket fallen. 21 for 7 now. Just 2 balls remaining and 34 more runs now they have to score for victory. तो 2 गेंदे 35 रन चाहिए। आशु का आगमन होता हुआ, आशु यानी अश्वित नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और 2 गेंदों का इस वक्त बचे हुए 2 गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। अश्विन अश्वित के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार चूंकि पैरों पर टकराई, अपील को नकार दिया अंपायर ने। लेग बाई के रूप में 1 रन ना, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 22 रनों पर। 22 for the loss of 7 wickets and the last ball of the match is now coming up. 33 required in last ball. Absolutely impossible task. That's it. Just a single and a comprehensive victory for Torpedoes Kana by 31 runs. They defeated Sridevi Cricketers Jappu by 31 runs, and with that victory, with a 31 runs comprehensive victory, they are through to the semi-final of this competition. And now the first semi-final of this tournament will be played between NM Mangalore versus Torpedoes Kana. One more exciting match is now coming up live exclusively right in front of you, and we'll be back right after the short break. तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच So man of the match of this match award goes to Yajnesh, who bowled brilliantly in this match, conceded just 4 runs in his 2 overs and capturing 1 wicket, and because of this fantastic bowling performance, he bagged the man of the match award consecutively second time in this tournament. I request Yajnesh of Torpedoes Corner, please come on to the dais and receive the man of the match prize from our organizer. तो फर्स्ट सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल मैच शुरू होगा एनएम मैंगलोर और टोरपेडोस काना के बीच में। एक और बेहतर मैच और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापसी करेंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब पहले सेमीफाइनल मैच, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
I request captain of both the teams, please report here for the toss. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾನೇ ಟೀಮಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾನೇ ಟೀಮಿಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request captain of NM Cricketers Mangalore as well as captain of Torpedoes Kana. Please report here immediately for the toss. ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. Captain of NM Mangalore as well as captain of Torpedoes Kana. ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಯಕ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I request captain of Torpedoes Khana, please report here. Torpedoes Khana, captain.
I request Imtiaz of Tarvados Khana, please report here immediately for the toss. I request Atif. Atif, please come here. So 6 overs game to be played in the 6 overs semi-final between two very good teams, NM Cricketers Mangalore versus Imtiaz. I request Ashraf of Tarvados Khana. The tossing ceremony is on between two very good captains, Imtiaz as well as Atif. Umpire Iqbal will go into complete the tossing ceremony. And a call from Atif, but the toss which is on by Imtiaz of Tarvados Khana. And wait and see what Tarvados Khana will going to decide here. Will they go into ball post or bat post? And it's going to be a big match and semi-final. The first semi-final of this prestigious YFC Trophy 2023, which is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor, Mangalore, in association with the Little Kingdom Phones, Bahrain. And we are into the semi-final of this prestigious tournament of the Mangalore Pole. And what a fantastic tournament they organized in this beautiful venue. After that, inaugural ceremony from Nazir Bajal and Ashraf Bajal, the corporator of City Corporation, Mangalore City Corporation, and along with him, of course, Jabbar, who has done a great job being the one of the backbone of this cricket tournament, done a whole hard work to make this possible, and this tournament is running very successfully. Tomorrow, the day number 2, and the match will be start exactly at 8:30 a.m. in the morning. I request all the teams, please be in a time. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ DTM ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ವರ್ಸಸ್ NPC ಬಜ್ಪೆ ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನೀವು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ NWC ಕರಾವಳಿ ಬಿತ್ತಪಾದೆ. And third match will be played between Young Friends MMR versus NFC Angaraguddi. The fourth match will be played between Nazar 9th Block versus team yet to be decided. So YFC Bajal Nanthoor Mangalore presenting this cricket tournament. We are into the semi-final. After winning the toss, Tarvados Khana captain elected to field first, and so that we are waiting for the opening batsmen of NM Cricketers Mangalore. It's going to be one more high voltage match, and of course the two teams definitely they got potential of coming to the final of this prestigious cricket tournament. The way that came into the big semi-final, it's not so easy. NM Cricketers Mangalore, the first match they defeated Jaguar Kudroli, and then the second match they defeated one more big team like Tamanna Adyar in the second match, and they are into the semi-final. And at the same time, coming back to the Tarvados Khana, they defeated one of the formidable team, Gori Young Boys, in the first round, and they defeated one more big team, STC Jaipur, in the second round in the quarter final.
and they are into the semi-final. That's what we are talking about. The comparison between the two teams. Torpedoes Khana defeated two very good teams, and they defeated the Gori Young Boys as well as Sridevi Jaipur. But NM Cricketers Mangalore, of course, Jaguar Kudroli, not that much of big competitor for NM Cricketers Mangalore in the first round. Even in the second round also, they played the low ranking teams, Tamanna Adyar. So, considering all this fact, it looks like it's the very good match between these two teams. Both the teams, NM Cricketers Mangalore as well as Torpedoes Khana, they got to ball to the opening. Is in Saigers and Riaz is in non-Saigers, and very successful opening pair for NM Cricketers Mangalore, and signal straight away came from umpire Iqbal, and our scorer ready to score the runs is Faisal as well as Jalil along with Razak of King Sports. The first ball right on the money, right on the target in the occasion. The appeal for something, but umpire says nothing. It's just an excitement rather than the confidence. It's all happening. The first ball itself that Torpedoes Khana would like to put some pressure onto the batsman to reduce the level of confidence of the batters. All things are happening in the field. The closing fielders try to put some pressure onto the umpires, having some appeal for something. Of course, maybe the stump out. But umpire Arif Jokate is confident enough to say that it's not out. So Sharan again, second time in this over. Right arm over the wicket was him, beautifully bowled. Again, look at the wicket keeping there from Ashraf. He's been outstanding behind the stump. Very impressive throughout the tournament behind the wicket. And from the bat, one who hit 1-6. And again, that wicket keeper behind the stump done a great job. Two deliveries to start with the dotted delivery. And NM Cricketers Mangalore yet to open the account in the scoreboards. And after getting two dotted deliveries, they might be a little bit going in a mind of the batter Azim. Azim just once again checking the field set. Checking the field set. Deep long on and deep long off for the two fielders in the deep. There's no fielder in the deep backward square because the power play is on. Just when he came into the undrummed cricket for young friend Surwa. He is such a young talented bowler, but once he's getting his confidence, he is one of the top bowler for young friend Surwa in the last 3-4 seasons. But in this particular season, he is representing for Torpedoes Khana. Bob, this time they're very confident. They caught behind, which is an appeal. Now umpire Iqbal will going to have a conversation with the squad umpire. Maybe the conversation, Gopi, whether the catch is taken cleanly or not. If the umpires got evidence enough that batsman nicked the bat, then the second question is raising for the main umpire is that whether the wicketkeeper taken that one very neatly or not, whether the ball is grounded before the wicketkeeper taking a catch. That may be the main the decision. Now they're asking for third umpire, and it's I think Gopi asking for third umpire for the caught behind. It might be a little difficult problem for the third umpire to decide, because the technical issue is definitely coming into picture, because you ultra edge which is not provided for this particular of course in this tournament or all the tournament. Of course you are seeing in the South Canada district, it's a high level. When you're going to the international cricket, you can get some ultra edges even, but here you can see that umpire asking for what. The question raising umpire is what asking for what, whether they're asking for the bat involved, the bat ball, or it is the wicket keeper is taken the catch neatly or not. Now umpire Iqbal is walking himself towards third umpire. That's a big reason, Gopi. I think umpire says of course the bat is involved, but you need to see that whether the catch is taken cleanly or not. And I think even for the square leg umpire, sometimes it's difficult to see when wicketkeeper coming right in front of him, and very difficult for square leg umpire to see whether the catch is taken cleanly or not. But anything else, anything, Gopi, in the last 3-4 years, these live telecast channels did a great job for cricket, because of fair cricket is very important, and out which is a call, that means the catch is which is taken very neatly by the wicketkeeper behind the stump Ashraf, and the first wicket is back into pavilion of NM Cricketers Mangalore. So
wicket of Riaz Gopi, it's definitely going to be a huge wicket, isn't it? But I think it's the right decision. It's a very good umpiring there from Iqbal because he know exactly the ball is got involved the bat, the nick from the bat, but you need to see whether the catch is taken neatly or not. And once again, Gopi, the technical, the point is really helping some fair decision for cricket. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर गेंद सीमा रेखा के गेंद बल्ले का बाहरी किनारे पर टकरा चुकी थी जरूर, लेकिन देखने वाली बात ये थी जैसा कि आपने फरमाया, गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचने से पहले जमीन पर टकरा चुकी है नहीं, जमीन पर टिप्पा खा चुकी है नहीं। तो यहाँ पर तकनीकी तौर पर एक बेहतरीन कैमरा वर्क यहाँ पर दिखाते हुए किंग स्पोर्ट्स के सदस्य, और यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर सही तरीके से इसे आउट घोषित किया, और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका। रियाज का विकेट की गिरना सतीश निस्संदेह यहाँ पर एनएम क्रिकेटर्स के लिए कुछ हद तक खतरा, परेशानियों को बढ़ा सकता है। Exactly, Gopi. The wicket of Riaz definitely going to be one of the big blow for NM Cricketers Mangalore. But they got some good batting department. Like after dismissal of Riaz, the man came into middle is one more fantastic striker of the ball, Asif Hadur, and here is the next one outside the line of off stump. It's going to be a wide. Sharan little bit drifting from his line, not really getting the line what he's looking for. Far away outside the line of off stump, and one more addition to total with the addition of that single scored numbers on to 3 on the board for the loss of the wicket of Riaz. Again Sharan bowling with a short run up, right arm over the wicket balls. Jisam tries that one, but protection has been given in the wideish long off region, almost in the extra cover region, deep extra cover region. So batsmen have to settle for the single for that. Good over there from Sharan, outstanding over after completion of over number first. It's a 4 for the loss of 1 wicket, and go be good start, isn't it? After winning the toss, elected to field first. Starboarders corner knows that they're playing against one of the top team, especially the team has got a very good record in this particular ground, so that they need to restrict the team score under 30 to 35 runs. I think it's first the steps which is they won, bowling that fantastic first over of the power play, and they picked the wicket of Riaz. निस्संदेह सतीश एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी गेंदबाजी में जो शरण ने इस वक्त दी है। सिर्फ 4 रन उन्होंने पहले ओवर में प्रदान किए, एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया रियाज का, और खासकर एनएम क्रिकेटर्स का जहाँ तक सवाल है, ये मैदान उनके लिए, ये ग्राउंड उनके लिए लकी माना जाता है। यहाँ पर उन्होंने पिछले साल भी WFC ट्रॉफी का खिताब अर्जित किया, तो चंद दिन पहले खेले गए नेत्रावती ट्रॉफी में भी वो विजय रहे थे। तो यहाँ पर उनके विनिंग स्ट्रीक को अगर तोड़ना है तो टॉर्पेडोज काना के गेंदबाजों को एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा, और उसके बाद उनके बल्लेबाजों को भी एक अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी में देना होगा। तो यहाँ पर पहला ओवर अंडर प्रेशर, अंडर पावर प्ले, ये ओवर बेहतर शरण इस वक्त फेंक चुके हैं। और जहाँ तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, इस वक्त एक साझेदारी होनी चाहिए, उनके बल्लेबाजी में गहराई डेप्थनेस है, और उस डेप्थनेस के बदौलत वो अगर एक बेहतर साझेदारी निभाते तो एनएम क्रिकेटर्स एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है। Absolutely, Gopi. They got a potential of bouncing back. And but here is Yadnesh, what a tournament he's having, isn't it? Consecutive 2 times he becomes a man of the match for only because of his the bowling performance. Now looks like he's got a little bit of hamstring injury. The muscles catch what we are talking about. It's all happening. Quite understandable, Gopi, because playing in other ground, playing in this particular cricket ground is a different experience, isn't it? It's not so easy. Of course, now it's a 5 o'clock. It's a condition is so good, but from 10 or 11 o'clock to 3:30 to 4, I think it's going to be one of the horrible condition, especially in the month of February. It's a very hot here and not so easy to maintain your fitness level, and especially for the bowlers who are bowling 2 hours continuously in this particular tournament. Again, Yadnesh left arm around the wicket, he bowls out and driven that one nicely, no chance. Look at the ball is rocketing towards the fence, isn't it? Absolutely terrific shot. Absolutely imperious cover drive there from Asif. What a fantastic stroke, isn't it? Little bit outside the line of off time, with his offer there by the bowler Yadnesh, and batsman. Even I am searching the ball, Gopi, and I don't know where the ball is went. Because of when the moment the ball left the bat, the ball went like a tracer bullet, and no chance at all for the fielder at long off fielder. Of course, long off which is situated wideish long off, but that fielder is just watching the ball going towards a deep cow point boundary for 4 runs. Glorious shot there from the little bit correction from Azim. So with that boundary score numbers on to 8 on the board
without for the loss of 1 wicket. Azim now he looks very confident. The 2 feet, 3 fielders. Look at the 3 fielders very close together. Looks like three friends. And this time again, once again, looks like going to a boundary. Back-to-back boundary. Yajnesh been punished. The man of the match in the last 2 matches for his outstanding bowling performance. Once in the first ball itself, looks like he's in trouble. His width is offered, and the batsman capitalized like that on Azim. Beautiful shot again. Total 2 different stroke. Even the ball is went in a almost similar area, Gopi, but 2 different shot. One which is played along the ground, the bullet stroke. The next one is exquisite, lofted drive towards the wideish extra cover region, log off region, almost in extra cover region. The magnificent strike there from Azim, and score jumps into 12 on the board. 12 for the loss of 1 wicket. Back-to-back 2 boundaries. And now wait and see what Yajnesh will going to do here. He's got a potential of coming back. So maybe that is a little bit struggling as far as hamstring injury. And wait and see how we'll going to come back here. But Azim is looking very dangerous. 2 magnificent boundaries. This time again, that was a width is offered. Looks like going to be a 3rd boundary. The way that he's trying to hit the ball, seeing that the cover point fielder, the longer fielder coming a little bit wider towards extra cover region. He wanted to get over the top of the mid-off fielder, but he didn't got enough bat onto that. He got outside edge of the bat, and one more single which is added to total. With that single score numbers on to 13 on the board for the loss of 1 wicket in the number 2nd in progress. Good comeback here by NM Cricketers Mangalore, just like the Gopis mentioned about after that slow start. You rightly said that Gopi, the potential has got NM Cricketers Mangalore. These 2 batsmen can come back in the 2nd over, and they came back very strongly as well by hitting 2 boundaries and consecutive boundaries in that over. Now different field set for the different kind of the batsman. Square leg is situated, deep long on is there as next one outside the line of off stump, beautifully bowled. That time Asif Adur wanted to try the ball, the vacant area. There is no fielder protection is given in the offside region. That's why we wanted to play that shot in that area. Misses it completely after completed of over number. Of course, the second over is in progress. Looks like is Yajnesh little bit struggling there. And just 1 delivery remaining. You need to survive, and you need to survive that 1 over. But it's going to be the big drawback here for Torpedo's corner, because if you can't able to bowl a 2nd over, and it's going to be the 1 over. What bowlers need to see who can bowl that 2nd over, 2 overs in the place of Yajnesh. Left arm balls, beautifully ball, perfect one. Wicketkeeper behind the stump fails to collect ball. Direct it. Umpire asking for the 3rd umpire. Umpire asking for the 3rd umpire. If it is going to be out, it's going to be disaster, because Azim is looking so good in the middle. After hitting 2 boundaries, looks like he's in a man. He's in a terrific touch. But here is a directed Gopi, and it's definitely the heartbeat of supporters of NM Cricketers Mangalore is going up, because it doesn't want to lose this man who is looking pretty good. Will it going to be out or not? But so far, Gopi, good comeback in this particular over especially by Azim, by hitting 2 boundaries against Yajnesh. Yajnesh looking not that much of 100% fit, is a hamstring injury. But anyhow, Gopi, it's a good comeback by NM Cricketers Mangalore in the 2nd over. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कमबैक करते हुए 2 चौके आजिम ने लगाई इस ओवर में, लेकिन अंतिम गेंद पर जो अभी यहाँ पर रनआउट के लिए 3य अंपायर के लिए मांग की गई है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर इस गेंद पर आजिम का विकेट गिरता है, और यहाँ पर विकेट गिर चुका है आजिम का, तो निस्संदेह आजिम जो कि एक बेहतर लय प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे थे, तो यहां पर उनका विकेट गिर चुका है, और इनका विकेट गिर जाने के बाद अब कुछ हद तक दबाव एनएम बैंगलोर के ऊपर दिखाई देता है। और सतीश, निस्संदेह जहां तक विघ्नेश का सवाल है, पिछले 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने अर्जित किया था, लेकिन यहां पर आजिम जो कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, वो खासकर पावर प्ले का फायदा उठाते हैं, और यहां पर विघ्नेश ने जो गेंदबाजी की, उस गेंदबाजी में कुछ गलत नहीं था, लेकिन आजिम का जो फुटवर्क है एक्सक्विजिट, तो इस वजह से वो 2 चौका लगा चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवशात उनका विकेट यहां पर गिर चुका है इस ओवर के अंतिम गेंद पर। और जहां तक सवाल है आजिम का विकेट गिर जाने के बाद, अब ये एक सही वक्त है इस वक्त बाउंस बैक करने का टॉर्पेडोज खाना के गेंदबाजों को, और खासकर बाउंस बैक करने के लिए ही इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है उनके ट्रम्प कार्ड गेंदबाज अश्विन के हाथों में।
Absolutely, Gopi. It's a good contest because when Ashwin came into ball and Azhar came into bat, you remember or not in the Netravati Trophy, the last the 3 weeks back is played when the run which is required for a team NM Cricketers Mangalore, and everyone remember that stroke which is played by Azhar against Ashwin. The switch it. He played towards a deep backward square leg and one deep long on region, magnificent struck towards a deep long on for a six, changing the complexion of the match. Now it's going to be one more good contest between these two teams, these two players, those who are played for the same team in the last 3-4 seasons. And now Ashwin bowling, right arm over the wicket balls to first Asif. Asif this time wide, try to guide that one down the third man region or a point region, misses it completely, and there is no chance at all for any run. So Ashwin, wait and see, because after that expensive over, the second over, wait and see how Ashwin will going to bring his Torpedoes Khana to back into track, and but not a huge run. So in fact, if we conceded 2 boundaries in that over, but still it's a 13, which is a total score on the board, not a huge one. This time, he lofted hands only and he got to distance. Oh, magnificent struck. Just look at, I want to see that, Gopi. The first ball, which is a dot ball, and immediately after dot ball, Azhar came into Asif Adur and said something. Maybe the technique. You don't do that. You play your natural game. Why you are doing that? You don't have good potential. And immediately very next ball, look at the way that Asif hit that one. Down to the mid-wicket boundary for a 6. Here he is again. Ashwin bowls. Again, this time Mr. Ashwin knows that. Ashwin knows that you can't bowl that line to Asif. Good comeback here by Ashwin. But what a tremendous struck that one there from Asif. Little bit shuffled across the line of delivery. Like a cutter, but you know exactly. Once again, Gopi and Azhar came into Asif. Will it going to be a 6 for the next ball? It's going to be a $1 million question out here is that will it going to be a 6 or a wicket here for Ashwin? And here is again Ashwin, right arm over the wicket, balls Asif beautifully balled, equally well played by Asif. Once again just steering it down the third man region for an easy single. With that single score, now moves on to 20 on the board, 20 for the loss of 1 wicket, 2 wickets in fact. And Azim is a man is back into the previous over, and one more wicket is back into pavilion is Riaz in the form of caught behind the wicket. Ashwin right arm over the wicket. This time Azhar continuing the stroke what he did in the previous match tournament, but this time he will going to get a single for that. Not really getting that one from the middle of the bat. No, Azhar knows that he just mistimed that one. And with that single score, now moves on to 21 on the board for the loss of 2 wickets. Ashwin, right arm over the wicket, beautifully balled, but this time Ashraf behind the wicket, fails to collect the ball, chance of run out in the non-strikers, and again they fails to collect the ball. By call by umpire, 1 more over completed. Ashwin not happy with himself, once again he's been punished by the batsmen of NM Cricketers Mangalore after completion of over number 3. It's a 22 on the board. So what a fantastic tournament match is going on, Gopi, and not only here we can see that the jam-packed stadium out here, but even in the live telecast also the more than 1.5k viewers enjoying the game of cricket. That shows the popularity of underarm cricket. That shows the popularity of these two teams, NM Cricketers Mangalore as Torpedoes Khana. They know exactly, the crowds knows exactly this is going to be one of the best match they're going to witness, and so far is the equal battle is on. But I think 2-3 overs which is belongs to NM Cricketers Mangalore, they got to run what they really wanted. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया मैदान पर दर्शक भर चुके हैं, लेकिन इस मैदान में दर्शक भरने के बावजूद तो 1.5k व्यूवर्स यूट्यूब पर इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण इस वक्त देख रहे हैं, और ये बात ये दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट मंगलूर में कितनी जनप्रियता रखता है। खासकर मंगलूर के 2 प्रतिष्ठित टीमें टॉर्पेडोज खाना और एनएम मैंगलोर इस सेमीफाइनल मैच में भिड़ रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों टीमों के समर्थक, सपोर्टर्स और हजारों दर्शक इस श्रृंखला का इस मैच का मुआयना करते हुए, निस्संदेह ये मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। हालांकि बराबर का टक्कर 3 ओवर में हमें देखने को मिला, 22 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर एनएम मैंगलोर का, और चौथा ओवर उनकी पारी में इस वक्त शुरू होता हुआ पहली गेंद लेकर तैयार, इस बार सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और इसी के साथ आसिफ का विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, he just wanted to play that one too early and the ball came quite lately, and because of that no contact between the bat and ball correctly, and at last he's got his stoppage and wicket keeper behind the stumps made no mistake.
तो यहाँ पर आसिफ का विकेट गिर चुका है। तो आसिफ अपना कदम धीरे धीरे जमा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका विकेट गिर चुका है। 8 रन उन्होंने बनाए एक छक्के की मदद से, और तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है 22 रनों के ऊपर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर एनएम मैंगलोर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। रंजीत गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं। अब नए बल्लेबाज नंबर 5 बल्लेबाज एनएम मैंगलोर की ओर से एक और प्रमुख बल्लेबाज सादिक का आगमन इस वक्त होता हुआ, और उन्होंने कुछ हंसकर इस वक्त बातचीत की। जो अकरम जो फील्डर थे वहां पर पिच के पास कुछ हंसी मजाक करने के बाद अपने स्वस्थान पर इस वक्त जाते हुए क्रीज पर स्ट्राइकर एंड पर, और वो इस वक्त सामना करेंगे रंजीत की गेंदों का। और रंजीत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दर्शक काफी दिलचस्पी के साथ इस मैच का मुआयना करते हुए मैदान पर लगभग भर चुके हैं इस वक्त। और निस्संदेह एक बेहतरीन मैच इस वाईएफसी सीजन 2 वाईएफसी ट्रॉफी सीजन 2 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हजारों दर्शक इस मैच का मुआयना यूट्यूब पर करते हुए, जो कि इस वक्त किंग स्पोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है यूट्यूब पर। तो एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, और एक बेहतरीन प्रेस्टिजियस क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई इस ढलते हुए शाम में। और इस बीच रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद सादिक के लिए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और आखिरकार गेंद को जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बैट ऑफ दैट द लास्ट मोमेंट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अजहर बैक ऑन स्ट्राइक, और जैसे ही अजहर स्ट्राइक पर आए इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट किया जा रहा है। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर को तैनात किया जा रहा है। एक फील्डर इस वक्त जाते हुए गली क्षेत्र पर, शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र पर, और कुल मिलाकर काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त रंजीत तैयार। अजहर इस वक्त सामना करते हुए, रंजीत की ये गेंद अजहर के लिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद तक पहुंचे। गेंद को इस वक्त खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाया अजहर के लिए खतरा इस वक्त, लेकिन निशाना चूक चुका है और एक और रन यहां पर मिलेगा। तीसरा रन भी पूर्ण कर चुके हैं। पहला रन विकेट कीपर के आगे गेंद टिप्पा खाकर उनके सिर के ऊपर से निकले थे। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइक लाइन पर विकेटों पर निशाना दागा था फील्डर ने, लेकिन उनका निशाना चूका, और जब तक गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का। तो रन से इस वक्त चाहिए एनएम मैंगलोर को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और 26 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त रंजीत तक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सादिक के इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रंजीत दाहिने हाथ ओवर द विकेट सादिक के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा। अंतिम क्षण में गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और 22 के रूप में ये रन यहाँ पर जुड़ चुका है। 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 in progress. What a fantastic first semi-final match of this tournament is now progressing here. The equal battle is now continuing here to qualify for the grand finale of this competition. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो इस वक्त रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया है, ये जानते हुए कि अजहर रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और इस बीच ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया अपने घुटनों के बल बैठते हुए। अंतिम क्षण में थोड़े से सफल होते हुए शॉट स्कोर की दिशा में 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। It's 28 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. और रंजीत इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सादिक इस वक्त सामना करते हुए रंजीत की गेंदों का दाहिना तो ओवर द विकेट। बेहतर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को उछालना चाहा सादिक ने, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को वो उछाल नहीं पाए। मैं समझता हूं उनके हाथों में कुछ हद तक इस वक्त चोट आई है, कुछ हद तक दर्द महसूस करते उन्होंने तुरंत अपना बल्ला बैट हाथ से फेंक दिया जमीन पर, और मैं समझता हूं उनके कुछ उंगलियों में शायद अंगूठे में कुछ हद तक वो दर्द इस वक्त महसूस करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो रंजीत इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी अब तक वो कर चुके हैं। हालांकि इस ओवर में एक गेंद अभी भी बाकी है, और 5 गेंदों में एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक उन्होंने दिया है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, माफ कीजिए,
ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बन चुके हैं। अभी भी बराबर का संघर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs फॉर NM Mangalore after being losing the toss and put it to bat by Torpedoes Kana in the first semi-final match of YFC Trophy 2023 Season 2 in this beautiful Bajal Nanthoor ground, and this tournament is proudly organized by YFC Bajal Nanthoor Mangalore in association with the Little Kingdom Phones Bahrain के सहयोग से इस श्रृंखला का आयोजन इस वक्त किया गया है। जनाब जब्बर इनके सारथ्य में ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, और इस बीच कुछ हद तक अपने उंगलियों पर इलाज करवाने के बाद, स्प्रे छिड़कने के बाद एक बार फिर से सादिक अपने स्वस्थान पर लौटते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और यहाँ पर सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अजहर, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज शरण जो कि अपना दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए। और जहाँ तक चरण का सवाल है, अपना पहला ओवर उन्होंने बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया था, और देखना यह कि अपने दूसरे ओवर में उस पहले ओवर के सफलता के सिलसिले को वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं। ओवर की पहली गेंद दाहिना तो ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर। कुल मिलाकर ये 5वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और अपनी अगली गेंद लेकर शरण इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट अजहर के लिए, और अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शरण की गेंद को रिवर्स इस बार स्वीप किया, सीधे पहुंची गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर अजहर का गिर चुका है। और ऐसा कहना पड़ेगा दुविधा में पड़ गए थे अंतिम क्षण में कि गेंद को रिवर्स शॉट खेला जाए या फिर स्वीप किया जाए, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने सोचा कि गेंद को स्वीप किया जाए, पैडल स्वीप किया जाए घुटनों के बल बैठते हुए, लेकिन गेंद कुछ हद तक ज्यादा उछाल लेते हुए और टॉपेज पर टकराई और आसानी के साथ शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में लपक ले गई, और इसी के साथ अजहर का विकेट यहां पर गिर चुका है। 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस, एंड अजहर इज नाउ डिपार्टिंग। उनका स्थान ग्रहण करते हुए एक और प्रमुख बल्लेबाज आतिफ का आगमन यहाँ पर हो चुका है, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए, और सादिक उनकी ओर कुछ बातचीत करने के लिए अब दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए बल्लेबाजी की रणनीति के बारे में, और इस वक्त बातचीत के बाद दोनों बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और आतिफ अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार, जबकि गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शरण फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ के लिए शरण की ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है बल्ले और गेंद के बीच में, और हर रन के लिए इस वक्त कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है हर गेंद पर। तो इस बीच शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सादिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट शरण की गेंद सादिक के लिए, यह गेंद सादिक के लिए, गेंद को ड्राइव करना चाहा, चूंकि पूरी तरह गेंद लगभग जमीन के सहारे आती हुई गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, मच स्ट्रेटर लाइन, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। 29 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और एक बेहतर ओवर शरण का अब तक साबित हो चुका। पहले ओवर के सफलता के सिलसिले को इस दूसरे ओवर में भी वो आगे बढ़ाते नजर आते हैं। इस वक्त अब तक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वो दे चुके हैं, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से सादिक के लिए, यह गेंद इस बार सादिक के लिए बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम शरण। और सादिक जैसे बल्लेबाज को खामोश रखना उतना आसान नहीं है, खासकर डेथ ओवर्स में, और यहाँ पर शरण बिल्कुल सतर्क लेंथ और लाइन के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। 2-3 गेंदें इस वक्त सादिक को डॉट डाली लगातार, और निस्संदेह इस वक्त अब कुछ हद तक दबाव बल्लेबाज सादिक
सादिक के ऊपर। इस वक्त आतिफ कुछ सादिक की ओर बढ़े, स्ट्राइकर एंड की ओर। कुछ उन्होंने कहा कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए चरण की गेंदों में। और इस वक्त शरण अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। सादिक इस वक्त सामना करते हुए शरण की गेंदों का 5 से 6 कदम उनका रन अप दाहिने हाथ ओवर द विकेट। 3 से 4 बार जमीन पर गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद अंपायर को क्रॉस करते हुए यह गेंद इस बार सादिक के लिए एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहा। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे आई, बल्ले का भीतरी किनारा टकराया, पैरों पर टकराई, शॉट पॉइंट पर गेंद पहुंच चुकी है। 1 रन का इजाफा, 29 रन, माफ कीजिए 30 रन यहाँ पर बन चुके हैं। 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 5 overs completed, it's 30 for the loss of 4 wicket। और इस ओवर में कुल मिलाकर शरण ने प्रदान किए सिर्फ 2 रन, यानी पहले ओवर में 4 रन उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया। दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया। और कुल मिलाकर उनका गेंदबाजी का विश्लेषण 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 6 रन और 2 विकेट। तो 6 ओवर के फॉर्मेट में इससे बेहतर गेंदबाजी का विश्लेषण और क्या हो सकता है। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 6 रन, 2 विकेट। 2 overs no maiden, 6 runs and 2 wicket। फैंटास्टिक स्पेल came to an end from शरण। और यहाँ पर अंतिम ओवर का खेल अब बाकी एनएम मैंगलोर की पारी में। गेंदबाज रंजीत अपना दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ एनएम मैंगलोर की बारी में। स्कोर रुक चुका है 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। और टीम के कप्तान इम्तियाज इस वक्त कुछ समझाते हुए यहाँ पर गेंदबाज रंजीत को और खासकर स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार सादिक का, जो कि पिछले ओवर में कुछ हद तक स्ट्रगल कर चुके हैं शरण की गेंदों पर। और यहाँ पर देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर रंजीत दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद सादिक के लिए, गेंद को उछाला नहीं, गेंद को मिड ऑफ द कलेक्शन नहीं। सादिक इस बार अपनी पूरी आस इस वक्त छोड़ चुके थे, हालांकि उनके पैरों पर भी कुछ यहाँ पर वो दर्द महसूस करते हैं। शायद मेरे ख्याल से उनका बल्ला जो कि पैर पर टकराया था दौड़ते वक्त, और आखिरकार कुछ हद तक दर्द यहाँ पर महसूस करते हुए। पिछले ओवर में उन्होंने अपने अंगूठे में दर्द महसूस किया था और यहाँ पर उनके पैरों पर शायद कुछ हद तक चोट आई है और वो दर्द यहाँ पर महसूस करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 1 रन मिल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 5 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। जहां तक इस क्रिकेट श्रृंखला का सवाल है तो वाईएफसी ट्रॉफी सीजन 2 2023 इस मेगा श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ एक बेहतरीन माहौल इस मैदान पर छा चुका है। दर्शक मैदान पर लगभग यहां पर भर चुके हैं और ये श्रृंखला ऐसा कहना पड़ेगा एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई वाईएफसी बजाल नंतूर मैंगलोर ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है। लिटिल किंगडम फोन्स बहरीन इनके सहयोग से और कुल मिलाकर एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं जो किंग स्पोर्ट्स इस वक्त कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस श्रृंखला के मेन पिलर्स मुख्य सूत्रधारों का, तो उन मुख्य सूत्रधारों का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। नज़ीर बजाल, इनायत अली, एमके शौकत बजाल, मोइदीन बावा, इकरित, अशरफ बजाल, नवाज अली, प्राइड बिल्डर्स, जसबीरुद्दीन, शाबी खान और एचएस हनीफ जो कि इस श्रृंखला के सफलता के कारण करते हैं। और यहाँ पर उन सबको अभिवादन देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर सादिक के पैरों पर चोट आने की वजह से वो चलने के लिए इस वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और वो इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ियों की मदद से पेविलियन वापस लौटते हुए इंजर्ड चोटिल होने के बाद। और यहाँ पर देखना है कि बचे हुए 5 गेंदों का सामना कौन सा खिलाड़ी इस वक्त करता है। शायद मंसूर इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए स्ट्राइकर एंड पर और वो इस वक्त सामना करेंगे रंजीत के बचे हुए गेंदों का। और उन महानियों के साथ जो इस श्रृंखला के सफलता के कारण करते हैं एम ए हसन अब्बा और
मोनाका, इनको भी हम हार्दिक अभिवादन यहाँ पर करना चाहेंगे। और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो एक प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला वाईएफसी ट्रॉफी 2023 सीजन 2 एडिशन इस वक्त एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, और अब यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज रंजीत, जबकि गेंदबाजी सामना करने के लिए तैयार इस वक्त आतिफ। इस बार गेंद टॉप एज, रंजीत के हाथों में, फॉलो थ्रू में, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। रिवर्स शॉट खेलना चाहता लेकिन ठीक तरह से मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, टॉप एज पर गेंद टकराई, हवे में उछली और आसानी के साथ फॉलो थ्रू में लपक लिया गया स्वयं गेंदबाज द्वारा। तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है और 31 रनों पर अपना छठा विकेट यहां पर खो चुका है एनएम मैंगलोर। सिर्फ और सिर्फ 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, जस्ट 4 balls नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। शाम का वक्त 5:40 यहां पर बच चुके हैं। धूप की तीव्रता काफी हद तक कम हो चुकी है। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और धीरे धीरे इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होती हुई, और इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल मैच, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच यहाँ पर एक बेहतरीन प्रगति करते हुए बराबर का टक्कर इस वक्त जारी है 2 प्रतिष्ठित टीमों के बीच में, टॉरपेडोज कान्हा और एनएम मैंगलोर के बीच में, इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। तो इस बीच रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, नए बल्लेबाज फैजल का आगमन इस वक्त हो चुका है सामना करते हुए रंजीत की गेंदों का। ये गेंद फैजल के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्यूट, और रन 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 नहीं मिलेगा और विकेट यहां पर गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग, हालांकि फैजल रन नहीं लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मंसूर 2-3 कदम दौड़ आए हैं नॉन स्ट्राइकर रन पर, रन के लिए वो दौड़े लेकिन गेंद कहां पर गई थी वो ठीक तरह से जाने नहीं, और विकेट कीपर ने तुरंत गेंद पर झपकते हुए गेंद को विकेट पर लगा दिया, गिल्लियां बिल्स उड़ा दिए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है फैजल के रूप में। तो एक और विकेट गिर चुका है, 7वां विकेट, 31 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6th and the last in progress in their innings. नए बल्लेबाज, the new batsman, number 9 batsman is now comes out to the middle for NM Mangalore is मुजीब, और वो इस वक्त सामना करेंगे रंजीत की गेंदों का। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में रंजीत फेंक चुके हैं अब तक और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फैजल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रंजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फील्डिंग का मुआयना करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर ये गेंद बल्लेबाज के लिए, इस बार गेंद को साइड पर शफल होकर उछालना चाहा था, चूंकि ऑफ स्टंप उखड़कर गिरता हुआ, और इसी के साथ एक और विकेट रंजीत के खाते में जा चुका है। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, थोड़े से सफल होते हुए, लेकिन गेंद उनके काफी तेज रफ्तार के साथ उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे निकली, ऑफ स्टंप पर जा टकराए, ऑफ स्टंप उखड़कर गिरता हुआ, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ यह विकेट नंबर 7 यहां पर गिर चुका है। 7th विकेट, इनफैक्ट इट्स 8th विकेट, 7 विकेट गिर चुके हैं। सादिक जो कि रिटायर्ड हट होकर पेविलियन वापस लौट चुके थे, यानी कुल मिलाकर 7 विकेट गिर चुके हैं। अब 31 रन स्कोर बोर्ड पर इस वक्त दिखाई देता हुआ, स्कोर बुक पर दिखाई देता हुआ इस वक्त 31 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। तो इस वक्त जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 2 गेंदें इस वक्त बाकी है, जस्ट 2 balls नाउ लेफ्ट इन द इनिंग्स एंड नंबर 10 बैट्समैन इमरान इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज रंजीत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके लेग बाय के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और कुल स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 32 रनों पर और 7 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स।
अंतिम गेंद बाकी और रंजीत इस वक्त उस बचे हुए अंतिम गेंद को फेंकने के लिए तैयार। मंसूर इस वक्त सामना करते हुए और देखना यह है कि उनकी पारी की अंतिम गेंद पर मंसूर किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं। तो अभी भी कुछ समझाते हुए टीम के कप्तान इम्तियाज रंजीत को कि अगली अंतिम गेंद उनकी पारी की किस तरीके से उन्हें फेंकनी चाहिए। और रंजीत अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंसूर सामना करते हुए और पारी की अंतिम गेंद लेकर रंजीत इस वक्त तैयार। ये गेंद मंसूर के लिए बोल्ड आउट, उछालना चाहा क्योंकि विकेट नंबर 3 इस ओवर में प्राप्त कर चुके हैं रंजीत और बेहतरीन ओवर उनका यहां पर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर सिर्फ 2 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किया, उनमें से एक लेग बाई रन था, यानी सिर्फ 1 रन बल्ले से उन्होंने प्रदान किए और 3 विकेटें इस अंतिम ओवर में उन्होंने प्राप्त किया और उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों को 32 रनों पर रोक कर रखने में सफल टॉर्पेडोज काना के गेंदबाज। अब 33 रनों का लक्ष्य उनके सामने। 32 रन्स फॉर लूजिंग 8 विकेट्स स्कोर्ड बाय एनएम मैंगलोर against Torpedoes Kana. They set a victory target of 33 for Torpedoes Kana. 33 they have to score in the stipulated 36 still. That means in their stipulated 6 overs with the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. तो 33 रनों का लक्ष्य, रिक्वायर्ड रन रेट exactly 5.50 रन पर ओवर और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। तो उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे आज अंतिम बार मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब टॉर्पेडोज काना की पारी की शुरुआत यहां पर होगी। और अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi, and outstanding performance from Torpedoes Khan after winning the toss. Elected to field first. They're restricting the opposition for just 32 runs, and they set a target of 33 to win this match. So opening batters for Torpedoes Kana is walking towards the middle. Ashraf along with him Manjunath, and wait and see how Manjunath will going to get the runs here. So far in this tournament is a little bit disappointment, dismissal for him. 2 matches he's got run out without facing a single delivery. But I hope he will not going to continue that mistake in this the big match semi-final against NM Cricketers Mangalore. And NM Cricketers Mangalore, they need to justify the bowling department. I think they need to restrict the opposition team for 32 runs, not to get the 33 runs in the stipulated 6 overs. And one can't say anything in this cricket match because of NM Cricketers Mangalore. Maybe a little bit disappointed with that batting performance, but they can bounce back in the bowling department because they got some very good bowling department, especially the Mujib as came into the playing 11s of NM Cricketers Mangalore after missing 2 matches earlier stage. He backed very strongly for NM Cricketers Mangalore to strengthen the bowling department of
their team. Wait and see how Mujib will going to justify, and wait and see how well Torpedoes Khanna will going to justify the efforts of their bowlers. Of course, as far the bowling department is concerned, Ranjit is looking outstanding in this particular the match. Is bowled a fantastic 2 overs for his team, and because of that, they stopped the big score from the team. This time, lovely shot, beautifully driven there from Ashraf. What a fantastic stroke that one there from Ashraf. Quite effortlessly played, isn't it? The planning is executed in that equation there from Ashraf. You know exactly the fielder, where the fielder is situated. There is a deep long off, there is no deep long on. Once he clears the infield, then it's no chance at all for the fieldsman to take to stop the ball. And a good start there from Torpedoes Khanna, especially Ashraf, hitting the ball over the top, and he got the boundary for that. Positive start for Torpedoes Khanna, 4 without loss of any wicket through Ashraf. Mujib again, bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. This time inside our cricketing stroke. This time Khalid down at short mid off region. A little bit misfield, so that batsman grabbing the opportunity to pick the single. Before that, long off fielder will going to return the ball. Ample time for the batter to complete the single. With that single score, moves on to 5. This time it's not a run out. And Manjunath is safe in that occasion, because maybe the opportunity is created for the run out. If the Khalid is able to collect the ball, it's going to be one more disappointment for Manjunath there. But he's lucky. He's facing his first delivery, first time in this tournament. Bowling, here is Mujib. Right arm over the wicket. To Manjunath. Manjunath drives that one, but not quite able to get the placement right into occasion. Direct, it might be very close in that occasion there from and Manjunath. Something is there in the day of Sunday. Is something special for Manjunath today. Looks like is every time is a opportunity of run out which is created. The second time in this particular over, he survived from the run out. So here is again Mujib bowling away from us. Alright, I'm over the wicket, balls. Manjunath swept that one down to short, fine leg region. Now big cheer here for Manjunath. He got his first run. He got the first run from this tournament and from his bat. And big cheer coming from the spectators, quite understandable. It's all happening in the test match cricket when I think Rahul Dravid, when got his first run in test match after playing 48 dotted deliveries, then every crowds are cheering his first run. It's the same kind of cheer coming in this cricket ground as well when Manjunath got his first run. Here is again nicely driven down to long off region for a single. So each and every run is the supporters of Torpedoes Khanna really enjoying the game. One more single is added total. With that single scoreboard now moves on to 7 on the board. 7 for the loss of without loss of any wicket. Good start there from the opening batters. Now Ashraf is not happy with this bat. He wanted to change his bat, but altogether the NM Cricketers Mangalore, the team which has got the most number of followers, the fans, is not only here but even in the outside the overseas countries like in the Gulf countries and other regions. The NM Cricketers, as far as the followers and fans is concerned, the most number of followers for the NM Cricketers Mangalore. And even in this particular tournament also, the NM Cricketers Mangalore has got some good followers, good fans supporting them. But even in the Torpedoes Khanna, and it might be that the first appearance, if they are able to reach to the finals, is going to be a first time at the Torpedoes Khanna in the season to qualify for the finals in the prestigious tournaments. Here is again Mujib. Right arm over the wicket, bounce Manjunath. This time a lovely delivery, fast incoming delivery there from Mujib, but this time ball is hitting the leg of Manjunath. So leg by call by umpires. The first over completed of completion of over number first, and it's 8 on the board. 8 for the loss without loss of any wicket. Chasing 33 to qualify for the mega final of this prestigious cricket tournament. 8 runs means it's a good start, positive start there from Torpedoes Khanna. And Gopi, probably it's 8 runs is a good one, but most interestingly that Manjunath has got a run from his bat. बिल्कुल सतीश, मंजुनाथ अपना पहला रन बना चुके हैं और वो भी काफी जोखिम भरा रन था. तो यहाँ पर निस्संदेह जब कोई बल्लेबाज 2 या 3 बार शून्य पर आउट होने के बाद जब पहला रन बनाता है तो सहज रूप से दर्शक उनका अभिवादन करते हैं. इसका एक उदाहरण आपने दिया राहुल द्रविड़ का, तो एक उदाहरण अजीत अगरकर, शायद मुझे वो ईस्वी तो याद नहीं है, 1999, 2000 या 2003 या 2004 के ऑस्ट्रेलिया
का दौरा जब भारत ने किया था तो अजीत अगर का 3 या 4 बार शून्य पर आउट हुए थे और अपने 4 या 5वें पारी में उन्हें जब पहला रन लिया था तो सारे प्रेक्षक ने उनका अभिवादन किया था, तो उन्होंने अपना बल्ला भी उठाया था, बैट भी उठाया था यहाँ पर जश्न मनाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो यहाँ पर पहले ओवर के बाद 8 रन सतीश, एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी जो इस वक्त टॉर्पेडोज खाना ने की है। Absolutely, Gopi, is a perfect example you are just mentioning. I'm also remembering that the innings of Ajit Agarkar you're mentioning about is again a wide outside and leg stump. One more extra with that extra scoreboard numbers on to 8-9 on the board without loss of any wicket. And now there the umpire Riaz is just asking for umpire to give the third umpire decision. He's not happy with the decision of umpire. That's not a wide ball, but umpire is know exactly what really happened here, because of course not to shout to the umpires, because sometimes it's happening, isn't it? The body language is so important. Need to be cool and calm. Sometimes it's happening cricket is because all are the human being, isn't it, Gopi? Not purpose. Everyone not doing any mistake purposely, but it's not a mistake. But umpires always they're in a right position to give the decision, because maybe that thinking the ball is going a little bit extra deviation, so that ball missing that line, going to miss the line, then umpire Arif has got a good evidence to get to give that wide decision again. This time the batsman Manjunath wanted to play the reverse sweep, but he missed it completely from his bat, and there is no chance at all for any run. It's a good comeback here by Riaz, as he bowled a little bit outside and Wrexham, changing the line cleverly, seeing that Manjunath is going for the reverse sweep, and he is not really able to get the ball from the bat. This time tries that one again. They're going for the quick single, chance of run out, and Manjunath survives. Again, Manjunath survives. So many chances now here in this particular semi-final as well. The run-out opportunity which is created for NM Cricketers Mangalore to dismiss Manjunath. Manjunath, everybody knows his potential is a danger man. And as far as the underarm cricket is concerned, striking the ball is concerned, is a very good striker of the ball. Is once he hits the ball, he hits it very neatly and clean striker of the ball. And Manjunath taking his own time to settle down. So far, is batting on 2, and total score of team Torpedoes Khana is 9 on the board. Riaz again bowling away from us. Right arm over the wicket. Oh, extra quicker, but it's really he's trying for the extra quicker and trying by doing that one more 11 on the board. 11 on the board. One more single is added to total in the form of extra, and with that extra scoreboard is 11 without loss of any wicket in the over number second in progress. Here is again bowler bowls. Riaz bowls again. They're going for the quick single in the negation. Sensible batting here from Ashraf after hitting the boundary in the first over. You know exactly they got runs what they really wanted in the first over, but in the second over, know exactly they're placing Riaz. He's been one of the best bowler in the side of NM Cricketers Mangalore, so they're implementing the strategy of defensive frame of mind by pushing the ball here and there and rotating the strikes instead of looking for the big shot. This time again, Flum, absolutely Flum in front of wicket. As Manjunath trying to play the sweep shot, missing the line completely. This time it's not a run out. This time is a leg before wicket, Gopi. And our scorer is so happy to register that Manjunath LBW bowled Riaz, not run out. And all happening in cricket, isn't it? But Manjunath this time I think spent a little bit time in the middle and responsible for the partnership as well. It's a 12 on the board. Over number 2 is in progress. 2 deliveries remaining in this over. 2 balls remaining in this over. And already they got runs what they really wanted. 12 on the board. Imtiaz, captain walking towards the middle. So Riaz has got a breakthrough, very important breakthrough, wicket of Manjunath in the form of leg before wicket. Now Imtiaz is came into middle, and Manjunath is back into pavilion, and Imtiaz came into middle. And wait and see. It's a very good contest between these two very good players. Riaz is a very young emerging player, talented players of NM Cricketers Bangalore. Is a very good all-rounder, top all-rounder.
Now I request the fielding team play a little bit, make it faster, don't waste the time. And again, bowler bowling away from us. Right arm over the wicket to Imtiaz. Imtiaz just searching the field set and observing the field set, facing his first ball. Clever, absolutely clever there from Imtiaz. Just getting the ball, this going for the extra run, and this is not a good thinking from the fielder's point of view. Trying for the run out where there is no backup at all. When there is no backup and trying for the run out means you're doing a foolish thing. And the second run, because the NM cricketers Mangalore need to realize that they're not depending a big total. So when you're not dipping a big total, you need to restrict all these runs, isn't it? 2 runs, what could be certain single? 2 runs which is conceded. With that couple of runs scored, now moves on to 14 on the board. 14 on the board for the loss of 1 wicket. The wicket of Manjunath is back into pavilion. Riaz bowling away from us with a short run up. There is a backward point. There is a cover point. Short mid off. Deep long off is there. Short mid wicket. Silly mid on is there. Silly mid on and short mid on and short square leg. And there is a short mid wicket and deep wideish long on. Again, Imtiaz so clever. They're running hard between the wicket. Again that. Oh my goodness. This time back up. This time back up there from Danush. So that no question of second run. 2 overs completed. No problem whatsoever as far as Tarpados Kana is concerned. They got the runs what they really wanted. After completion of over number 2, it's 15 on the board for the loss of 1 wicket. And remaining 4 overs. They required another 18 runs to win this match. And Gopi 18 to require. 24 balls remaining in this innings of Tarpados Kana. Looks like they're in upper hand and they're in a driver's seat of winning this match, unless any miracle bowling, which is badly required for NM cricketers Mangalore if they wanted to back into this game. Absolutely, Satish. There is no doubt about that. इस वक्त 2 ओवर का खेल belongs to the batsmen of Torpedoes Kana. They managed to score 15 runs on the board, except they lost their 1 wicket in the face of Manjunath. लेकिन यहाँ पर बाउंस बैक करने का मौका जरूर है. 18 रन बनाने 24 गेंदों में. और जो डिपार्टमेंट शक्तिशाली डिपार्टमेंट है गेंदबाजी का, बल्लेबाजी की तरह एनएम मैंगलोर के पास वो शक्तिशाली गेंदबाजी का डिपार्टमेंट का अगर 4 ओवर में पहले 2 ओवर में कुछ खास असर नहीं कर पाए उनके गेंदबाज, लेकिन बचे हुए 4 ओवर में अपने सही तरीके से इसका प्रयोग वो करते हैं गेंदबाजी में, तो निस्संदेह इस मैच में वो वापसी कर सकते हैं. लेकिन इस वक्त तक था टॉर्पेडोज खाना का भारी लगता हुआ, लेकिन मैं कहूंगा सतीश बाउंस बैक करने का मौका जरूर है एनएम क्रिकेटर्स के गेंदबाजों को बचे हुए 4 ओवर में. Absolutely, Gopi. At the same time, I request to NM Cricketers Mangalore to make it pass. Already take 15 minutes to 12 to 13 minutes for the 2 overs. So I request Ate and NM Cricketers Mangalore to make it pass. That's 3 overs, 2 overs remaining, 2 overs completed, 4 overs remaining, 18 runs required for Tarpados Kana to qualify for the final. Atif, right arm over the wicket to Imtiaz. Imtiaz judging the ball very well, seeing the ball is going outside the line of leg stump, and rightly so, umpire has got no hesitation. Now, after that frustration from Riaz, now we can see that Atif is under pressure, a little bit under the frustration there, seeing that ball is maybe he's thought that it might be well within the reach, but the batsman know exactly that ball going to be a wide, so he's left the ball wide. Signal umpire, one more addition, and with that addition of that, the score now moves on to 16 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Atif, maybe he's trying for the slower one, the previous delivery, so that ball is got extra deviation, extra turn. Again, Atif balls, this time again Imtiaz pushing the ball, going for the single. The bails are off, but not from the ball, but it's from the hand of Atif in the negation, so that no question of run out there, but both the batters are completed a single. So with that single score, Namuzan to 17 on the board, and then they're chasing 33 to win this match. It's going to be a very interesting match. 15 to get, and they got another 22 deliveries to spare, 23 deliveries to spare. First one is a wide, second one is a single. And again, Atif back this bowling mark. Right arm over the wicket to Ashraf. So far, Ashraf is looking very cool and calm. He got a boundary, got a start from his bat in the first over. Then he's playing sensibly
And so far, this time he drives that one powerfully, but not really getting the placement right. Not quite intended. He wanted to drive the ball towards a deeper extra cover region, but ball went towards a mid-on region. In fact, there's a mistimed cricketing stroke there from Ashraf, putting a lot of power behind the stroke, but not really getting the timing behind the stroke and placement behind the stroke. Atif again, right arm over the wicket, bounced again, off stop there with the fielder, chance of run out in the strikers, and but time Atif couldn't manage to stop the single in that occasion because Imtiaz is so quick between the wickets. The running between the wicket is so impressive between these two teams, these two players, not missing a single opportunity here to get the runs, and with that single scored Namozan to 18 on the board for the loss of 2 wicket. What a crowd here, absolutely jam-packed stadium out here in this most beautiful cricket ground here in Shantinagar. And YFC Trophy 2023, which is 2023, proudly organized by YFC Bajal Nanthoor in association with the Little Kingdom Fawns Bahrain. So the battle is on for the place in the big final, and the job which is not yet over from both the teams. Batsmen of Tarpurkana, they're trying hard, battling hard for the victory. At the same time, NM cricketers, Mangalore bowlers, they're also trying their level best to get into this game. Again, Atif, item over the wicket, bounced Imtiaz, nicely flicks that one off his legs down to fine leg region. Atif is not impressed with himself. One more addition to total with the addition of that single scored Namuzan to 19 on the board. 19 for the loss of 2 wickets. Slowly and steadily, these two batters of Tarpurkana realizing that rotation of strike is so important, and keeping the wickets is so important, so they are playing as per the condition required for their team. Again, nicely driven between mid-on and the bowler towards a deep long on region, and with that single scored Namuzan to 20 on the board. So the target, which is a 33, 20 which is completed, that means another 13 more runs required for the victory, and they got 19 deliveries to spare. Atif again, right arm over the wicket, balls again, going for the quick single. It's been, oh my goodness, going to be very close. It's going to be very close if it is going to be directed. Now, after Sadiq is injured, and now it's a Imtiaz, looks like he's got a hamstring injury here, and because of that, looks like Imtiaz runs very quickly between the wickets. That's happening when you're putting a lot of pressure to get the quick singles. Running between the wicket is so important. Now Gopi, 3 overs completed. 3 overs complete after completion of over number 3. It's 21 on the board, and 12 runs required, Gopi. The 4 runs per over is the required run rate, and more than anything else, they got 8 wickets in hand, and beyond that, the 2 batters, Gopi, they are settled down in the middle, especially Ashraf and Imtiaz. The batsmen are in the middle. They settle down in the middle. Looks like Tarpurkana, they're looking in top. They're looking in top. Now, if they wanted to get a 12 runs, I don't think it's a big work is required, but a lot of hard work required from NM cricketers Mangalore if they wanted to win the match. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Tarpurkana ತಂಡದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ Tarpurkana. ಸೊ ಗೋಪಿ, 3 overs, 12 runs required, and Tarpurkana are looking in a top. And if NM cricketers Mangalore wanted to bounce back to this match, they need the wicket. They need to break this partnership. एग्जैक्टली सतीश, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. यहाँ पर साझेदारी तोड़ना, पार्टनरशिप तोड़ना बेहद जरूरी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर अशरफ और इम्तियाज जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि Tarpurkana इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन कम बैक करना है तो निस्संदेह यहाँ पर एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों को इस साझेदारी को, इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा. देखते हैं क्या होता है. नई ओवर की पहली गेंद इम्तियाज के लिए ऑन साइड पर उछाल लेता, और इस बार अगर नॉन स्ट्राइकर रन पर थ्रो करते तो निस्संदेह इम्तियाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंदबाज रियाज ने गेंद को फील्ड करने के बाद विकेटों पर स्ट्राइकर रन पर उन्होंने थ्रो किया, और इस वजह से 1 रन नासरनी के साथ यहां पर पूर्ण हो चुका है. तो 1 रन यहां पर मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर. इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट at the start of the 4th over. In fact, 17 balls to go in their innings, and 11 more runs they have to score for victory. Dot balls are badly required for the NM Mangalore's bowlers to get back into this match. और रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. सामना करते हुए इस वक्त अशरफ.
और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट्स। 9 से 10 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद रियाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची, वहां पर मंसूर मौजूद थे, हालांकि थोड़ी हद तक गेंद चूकी जरूर, लेकिन वापस गेंद उनके हाथों से छूटने के बाद फ्लेक्स पर टकराने के बाद उनके हाथों में आई और अपने दूसरे या तीसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया। इम्तियाज इस वक्त कुछ समझाते हुए जाकर अशरफ को कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए इन हालातों में, और इस वक्त कुल मिलाकर 16 गेंदें उनकी पारी में बाकी है। रन से चाहिए इस वक्त 10 विजय 11 विजय के लिए, 11 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 16 डिलीवरीज। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट, रियाज गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद चिप गया, इस बार मौका हो सकता है, जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करे एक टिप्पे के बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट, इस साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी इस वक्त बन चुका है एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों के लिए, जैसा कि हमने पहले फरमाया है। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इनटू द गैप, लेकिन फील्डर मौजूद, स्वीपर डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। टॉर्पेडोज काना के समर्थक इस वक्त तालियों के साथ, सीटियों के साथ अपनी टीम का मनोबल यहां पर बढ़ाते हुए, और उनके तालियों की और सीटियों की गूंज हमें यहां पर हमारे कानों को यहां पर सुनाई दे रही है कमेंटेटर बॉक्स पर। और कुल मिलाकर तख्ता हर गेंद के साथ टॉर्पेडोज काना का यहां पर भारी लगता हुआ, और एनएम क्रिकेटर्स को इस वक्त बाउंस बैक करने के लिए एक बेहतर गेंदबाजी की, एक घातक गेंदबाजी की इस वक्त सख्त जरूरत, और हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान एनएम मैंगलोर के फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, रियाज की गेंद का ये गेंद इम्तियाज के लिए हल्के से इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, और जहां तक सवाल है रनों का, डाइविंग लगाकर गेंद को उन्होंने रोका जरूर, लेकिन ठीक तरह से रोक नहीं पाए, गेंद उनके पैरों पर टकरा कर निकली थी, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 7 रन्स टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 13 deliveries, 13 balls left and 7 runs more they have to score for victory. Exquisite live telecast इस वक्त किंग स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है। किंग स्पोर्ट्स के सर्व सिब्बंदियों को हम इसका इस बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट के लिए सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से अभिवादन करते हैं। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना था, गेंद हवा में, लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए इस बीच अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेला था, और आखिरकार 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 27 अपने परिस्थिति के अनुगुण इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की जरूरत विजय के, जस्ट 6 मोर टू गेट इन रिमेनिंग 2 overs, 12 डिलीवरीज। दर्शकों से मैदान खचाखच इस वक्त भर चुका है, और निस्संदेह एक बेहतरीन सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता है, और सतीश इस ओवर में कुछ खास असर नहीं डाल पाए गेंदबाज एनएम मैंगलोर के, 6 रन 2 ओवर में बनाने हैं। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही एनएम मैंगलोर को इस मैच में वापस ला सकती है। Absolutely, Gopi. They frustrated the bowlers of NM cricketers Mangalore the way that Imtiaz and as well as Ashraf getting the runs. It's some kind of unorthodox cricketing strokes, isn't it? Just he wanted to rotate the strike, whether it's a bat involved or not, but they wanted a run. They're rotating the strike. They're really frustrated. Even they're putting all fielders inside the ring, but still they managed to pick the singles. Maybe the strategy from the captain of NM cricketers Mangalore to putting some fielders inside the ring so that batsmen go for the big shot, but not happening here. That's not happening here, and they're sensible batting by the two batsmen. बिल्कुल, और इस बार देखिए सीधा दबाव फील्डर के ऊपर नजर आता हुआ, वहां पर फील्डिंग कर सकते थे फील्डर सीलिंग डाउन पर, लेकिन गेंद को फील्ड करने में सफल, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। और हालांकि स्ट्रोक्स काफी विचित्र तरीके से इस वक्त खेल रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि उनके लिए रन्स बन रहे हैं, और खासकर ऐसे स्ट्रोक्स, ऐसे खेल आप खेलते हैं हर गेंद पर सेंसिबल क्रिकेट के रूप में, तो ऑटोमेटिकली अपने आप फील्डिंग बिखर जाता है, स्पॉइल हो जाता है। यहां पर रक्षात्मक तरीके का खेल, आतिफ का थ्रो समसो पर, और इम्तियाज की पारी पर पर्दा गिर चुका है। बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को ढकेला था, थोड़ा सा वाइड, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद पर तेजी के साथ झपके गेंदबाज आतिफ गेंद को तुरंत फील्ड करते हुए उन्होंने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर पर, उनका थ्रो बिल्कुल सही निशाने पर बैठता हुआ, और यहां पर विकेट गिर चुका है इम्तियाज की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है, और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है। मेरे ख्याल से करीबन 23 या 24 रनों की साझेदारी के बाद यह साझेदारी यहां पर टूट चुकी है, और 28 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है टॉर्पेडोज काना। अब उनका स्थान ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में अश्विन को इस वक्त
बल्लेबाजी पर भेजा गया है अश्विन कुमार, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 5 रन चाहिए विजय के लिए, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, एक बार शॉट मिड विकेट पर, एक बार फिर से फील्डर चूके वहां पर गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्लोली एंड स्टडीली टॉर्पेडोज काना आर हेडिंग टुवर्ड्स टू देयर विक्ट्री। और इस बीच डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त जरूरत जल्द से जल्द इस वक्त एनएम क्रिकेटर्स को इस मैच में कम बैक करने के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए हर गेंद के साथ एनएम मैंगलोर के कप्तान, और इस बीच आतिफ तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। यह गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा लेकर जो बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ टॉर्पेडोज काना entered into the grand finale of this competition, defeating NM Mangalore by 8 wickets. और निस्संदेह इस ऋतु में, इस सीजन में पहली बार किसी श्रृंखला में टॉर्पेडोज काना मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है, तो निस्संदेह बेहतरीन प्रदर्शन टॉर्पेडोज काना का इस श्रृंखला में। क्यों सतीश? Absolutely, Gopi. It's outstanding performance from Torpedoes Kana. They deserve they were there in the finals because of they managed to defeat one of the favorite of winning this tournament, NM Cricketers Mangalore, the defending champion NM Cricketers Mangalore, out of the tournament because of Torpedoes Kana really dominating in all departments, fielding, batting, and even in the bowling departments. Deserve the victory. They deserve the place in the big final. Congratulations for Torpedoes Kana, and Ashraf, who is the one who played a very good innings for his team, came as opener for the side, and along with Imtiaz, the captain of the side, he played a captain's knock, and altogether Ranjit is bowled magnificently in this particular match, and they won the match, and man of the match, which is definitely goes to Ranjit of Torpedoes Kana for his outstanding bowling performance. He is the one who put a break on the run rate of NM Cricketers Mangalore with his outstanding bowling spell of 2 overs. 2 overs, no maiden, 7 runs and 4 wickets. Absolutely fantastic bowling figure here for Ranjit. That's a match-winning performance. And that's it for the day number 1 of this prestigious cricket tournament. And I would like to give special thanks to the dignitaries who are really behind this cricket tournament. Nazir Bajal, Inayat Ali, MK Shaukat Bajal, Moidin Bawa, and Ikrit, Ashraf Bajal, Nawaz Ali, Fried Builder, Jasbiruddin, Shabi Khan, HS, Anif, BK, Anish Prasad, and respected JR Lobo. Now it's a time for the man of the match, and I request Mr. Ranjit to collect your man of the match. I request organizer, please present the man of the match award to Ranjit for his outstanding bowling performance with the 2 overs 7 runs and picked up 4 valuable wickets. Commentary box, thank you very much, and special thanks to the spectators, those who came here to watch live of this cricket tournament, and you are the one responsible for the success of the day number 1. Thank you very much, each and everyone, the special spectators, and thanks to the spectators, those who are watched in a live telecast from YouTube channel King Sports, and I at the same time I pray God for the speed recovery of Sadiq of NM Cricketers Mangalore. He's been injured, and I hope he will going to bounce back very soon, but I think he's feeling a lot of pain, but understandable because it's an injured leg. Already he has got injuries in his leg, but as the same leg he's got again the injuries here, and I hope he will going to come back strongly in upcoming tournaments. So till then we are saying goodbye, and have a nice hours of the day. Thank you very much.